Now it's not like that. If you want to achieve 1 BT and we want to face the private players in the commercial mining also, you have to improve the efficiencies, both on departmental side, on early bringing of MDOs, early bringing of the mines to its full potential and capacity. Once again, I welcome all the participants to the workshop and enjoy for the next 2 days. You can have any doubts you can clarify. I have requested my all 3 AFMs just now to join within an hour. So in future, if any workshops, I think finance and area SO minings are deputy GM, medicinal GMs who are handling, they also should be a part of these workshops in order to understand the subject, and there will be some clarifications needed in any contract. It cannot be once it is book print is given, you cannot in total you cannot adopt. Definitely clarifications are needed, and few officers, whether from CMPDL and other organizations, NTPC, even Neyveli is also doing in Talabira, similarly West Bengal, other. So it is an exchange of ideas. If you can bring, it can solve in less time, so that we can operate it more successfully. Thank you. Once again, I welcome and thank all the subsidiaries who have participated actively, and we will hear our chairman sir also in a short span of time. थैंक यू सो मच सर. अभी हमारे बीच हमारे साथ मंच पे हमें ज्वाइन किया है हमारे रेस्पेक्टेड CVO CCL श्री सुमित कुमार सिन्हा सर ने. हम तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट मिस श्वेता टू काइंडली फेलिसिटेट हिम विद अ बुके. सर, आपका प्रेमपूर्ण अभिनंदन. This workshop has been jointly hosted by CMPDIL and CCL, and this session will be incomplete without the address of Chairman cum Managing Director CMPDIL, Sri Manoj Kumar sir. He is someone who does not need any introduction to this gathering, but it is both worth mentioning that he has had an extremely decorated career. So let's welcome Sri Manoj Kumar sir for the welcome address. Namaskar, good morning to all. Respected Chairman sir and DTCL going to join through VC shortly. Dignitaries on the dais, CMD, CCL Prasad Sahab, Sinha Sahab, RB Prasad Sahab, Mishra Sahab, of the dais, Reddy Sahab, Rana Sahab, Sanjeev Singh Sahab, all distinguished guests. At the outset, I also want to welcome you all the participants in this 2 days workshop on MDO. The purpose of this workshop is to give insights to our Coal India executives about the existing model document. At the same time, through experience sharing of the mine operators, we will come to know about the constraint associated in execution of these documents, starting from the bidding stage to its execution at the mine level. With a number of mines to be operationalized through this MDO in near future, knowledge of the model document is required at all levels for its execution. Presently, 4 types of approved model documents are there. Model document for open cast mine, underground mines, discontinued mines, and partially explored mines. A 5th one is under formulation, that is on revenue sharing, for greenfield on revenue sharing basis. It is also under formulation. Out of all these 4 approved documents, 3 are on this one-time per ton basis, and on the one is on the percentage of revenue sharing basis. And all these documents are based on the one Niti Aayog circulated guidelines standard format called Model Concessionaire for Public Participation Projects. All our documents are based on this document. The documents cover several aspects starting from bidding, its award methodology, responsibilities of both authority and mine operator,
delivery and sale of coal till mine closure. The document also holistically cover other aspects like payment, taxes, termination, force majeure and penalty clauses. This workshop will give a platform for interaction between model document authors, executors, MDOs and facilitators. Till now, 4 open cast projects have already been awarded through MDO mode, that is Siarmal OC, Subhadra OC of Mahanadi Coalfields Limited, Kotre Basantpur, Chandragupta as already told from Central Coalfield Limited. 2 underground projects are also have been awarded through MDO mode, that is Piparwar UG of Central Coalfield and Ketki UG of Southeastern Coalfield Limited. All these 6 mines will contribute about 97 million ton to our production figures. As far as the model document of discontinued mines on revenue sharing basis is concerned, the response received from the MDOs in first tranche of tenders for discontinued mines are quite encouraging. We have received 11 mines out of 20 mines with a success rate of more than 50%. If the discontinued mines will start again contributing to our production numbers, this will be a story of liability to leverage. Mine dossiers are also being prepared for second tranche MDO tenders for discontinued mines. To keep the documents updated and to meet the genuine demands of the stakeholders, the documents are continuously amended and upgraded by CMPDI. CMPDI has its own dedicated team for continuous monitoring of these documents. I truly acknowledge the efforts of CCL to take such initiative to organize this kind of workshop, which will cover all these aspects through knowledge sharing and participatory discussion. I wish all the success for this workshop. Thank you. The chief guest of this workshop, Shri Pramod Agarwal sir, Chairman, Coal India, will be connecting any moment with us. Good morning, sir. Are we audible? Good morning, sir. Prasad sir, are you there?
Good morning, sir. Today, Good morning. today CCL in association with CMPDL is conducting a 2-day workshop on MDO contracts, and we are extremely grateful to you for joining us today. And the audience is eagerly waiting to hear your views on this workshop. Over to you, sir. Hello. नमस्कार प्रसाद साहब, आर यू देयर? 10 बजे स्काई प्रैक्टिस भेजा एसएससीएल ने। आई एम अनेबल टू। नहीं सर, यहाँ से करेंगे डीटी से। Sir, we have on dais Shri Manoj Kumar sir, CMD, CMPDL. Sir, you are audible, sir. You can start. You can start, sir. You are audible. Okay, thank you. Respected Sri PM Prasad, CMD of CCL, respected CMPDL, CMD Sri Manoj Kumar, और सभी उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं पर्सनली उपस्थित नहीं हो पाया। यद्यपि साथ साहब से चर्चा करके डेट इसी तरह से फिक्स की गई थी कि उस दिन मेरा रांची आना संभव हो सके, लेकिन कई अन्य व्यवस्थाएं अचानक आने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया। इसका मुझे खेद भी है और मुझे लगता है ये पर्सनल लॉस भी है, क्योंकि एमडीओ जो कंसेप्ट है इसको सीआईएल में मेरे ही कार्यकाल में इतने महत्व दिया गया और इसको आगे बढ़ाया गया, एंड इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मैं इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। एमडीओ का कंसेप्ट कई तरह से हम लोगों ने शुरू किया। पहले हम लोगों ने ओपन कास्ट माइन के लिए एमडीओ का डॉक्यूमेंट बनाया, फिर अंडरग्राउंड माइंस के लिए बनाया, और फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर पहले हम लोगों ने बंद माइंस को भी एक फिक्स रेट पर देने का प्रोग्राम बनाया, किंतु वो सफल नहीं हो पाया। कई लोगों से सुझाव आया कि इसको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बनाया जाए तो शायद इसका लाभ ज्यादा होगा, तो इसको हम लोगों ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बनाया, और लगभग 30 माइंस पिछली बार हम लोगों ने ऑक्शन की। 14 माइंस हम लोगों ने पुनः आइडेंटिफाई की है जिनको ऑक्शन किया जाना है। जो एमडीओ का ओपन कास्ट का और अंडरग्राउंड माइंस का प्रोजेक्ट था, जिसमें कि हम लोगों ने 15 माइंस आइडेंटिफाई की थी, उसमें 6 का हम लोगों ने एलओए जारी कर दिया है, और हर एक पर कुछ प्रारंभिक तैयारी का कार्य चल रहा है। और इन माइंस के द्वारा अगले 1-2 वर्षों में या 3 वर्षों में लगभग 100 मिलियन टन कोयला अतिरिक्त रूप से उत्पादन किया जा सकता है। 2-3 प्रोजेक्ट्स और भी लाइन में हैं, मदन नगर और पेलमा, जिनको अवार्ड करने से पुनः लगभग 25-30 मिलियन टन का अवार्ड हो जाएगा। हम लोगों के द्वारा बलभद्र और संगमित्रा, इनको भी टेंडर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी प्रयास हैं, लगभग हर एक पर नए नए विचार आते हैं, नए नए सुझाव आते हैं, और इन सब प्रयासों को और सफल बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एमडीओ डॉक्यूमेंट जब आरंभ में बनाया गया था तब भी सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा की गई थी, और उसके आधार पर उसमें काफी परिवर्तन किया गया। लेकिन जब पहला टेंडर स्वीकृत हुआ, शायद कोटरे बसंतपुर का ही टेंडर था जो पहली बार स्वीकृत हुआ, या सियारमल्स, इन दोनों में, उसके पश्चात कई सुझाव और आए, उनको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया, और इनकॉर्पोरेट करने से कई तरह से लोग और पार्टिसिपेशन बढ़ा और हम लोगों को इसका लाभ मिला। और ये चर्चाएं हम लोगों की लगातार आप लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ होती रही हैं, और उसके क्रम में हम लोग कई सुधार करते गए। लेकिन एक सुझाव आया कि हम लोगों को एक बार व्यापक रूप से चर्चा करनी चाहिए, एक लंबी चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि सभी लोग अपना सुझाव ठीक से दे सकें और उस पर कंपनी द्वारा विचार करके आवश्यक निर्णय लिया जा सके। मेरा आप लोगों को आश्वासन है कि इस कॉन्क्लेव में जो भी विचार आएंगे, जो भी सुझाव आएंगे, उनको हम लोग व्यक्तिगत रूप से देखेंगे, और इस पर व्यापक रूप से चर्चा करने के पश्चात जो भी उपयुक्त निर्णय होगा वो जरूर करेंगे। लेकिन यह आप लोगों को आशान्वित करते हैं कि
अधिक से अधिक सुझाव स्वीकार करने का हमारा प्रयास होगा ताकि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ सके और लोगों की रुचि बढ़ सके। कुछ साल पहले ऐसा लगने लगा था कि कोल की आवश्यकताएं शायद अब सीमित होती जाएंगी और कोल की आवश्यकता शायद समाज को नहीं पड़ेगी, लेकिन अब यह इस तरह की विचारधारा बदल चुकी है। आज के दिन यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगले 20-25 सालों में कोल की आवश्यकता इस देश में बढ़ती जाएगी और इसकी पूर्ति करने के लिए जितने अधिक प्रयास किए जा सके वो कम रहेंगे। बंद माइंस को शुरू करने का एक विचार जो है और इसमें जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य और भी है, ताकि जो उच्च श्रेणी का कोयला है जिसको कि हम लोग मुख्यतः अभी आयातित करते हैं, उस आयातित कोयले की कीमत बाजार में बहुत फ्लक्चुएट होती है और इसकी एक सिक्योरिटी प्रदान करना अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और उसी को ध्यान में रखकर हम लोग वो माइंस जो हमारे लिए लाभान्वित नहीं है या जिन माइंस को लाभ की दृष्टि से पहले बंद कर दिया गया था लेकिन जिनमें यह पाया गया है कि कोयले की उपलब्धता अभी भी है, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से उसको चालू किया जा सके और इसको चालू किए जाने से यह उच्च श्रेणी का कोयला देश को प्राप्त हो पाएगा। इसमें कई माइंस, कोकिंग कोल माइंस भी है। जब भी विश्व में दाम बढ़ता है तो कोकिंग कोल का दाम सबसे पहले बढ़ता है और स्टील इंडस्ट्री हमारी क्राइसिस में आ जाती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने एक कॉन्क्लेव आयोजित किया है और इसका एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप भी इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। मेरा आग्रह है कि आपके जो भी सुझाव हैं उन्हें खुलकर व्यक्त करें और मेरा आयोजनकर्ताओं से भी आग्रह रहेगा कि जो भी सुझाव आए, चाहे आपको कैसे भी लगे, उन सुझावों को सूचीबद्ध जरूर कीजिए ताकि हम लोग सब उस पर बाद में चर्चा कर सकें और इस पर उपयुक्त निर्णय ले सकें। अंत में पुनः मैं खेद व्यक्त करता हूं कि मैं इस कार्यक्रम में व्यक्तिशः उपस्थित नहीं हो सका और आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस कॉन्क्लेव में आप सबका सीआईएल की ओर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. We are extremely grateful to you for joining us today on this occasion. Today, we also have the respected Dr. B. Veera Reddy, sir, Director Technical CIL, who has joined us through VC, and he'll be addressing the audience today and sharing his views on this workshop. Sir, over to you, sir. Hello. Yes, sir, you're audible. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Sir, you're audible. Okay. Can I start? Yes, sir, please, sir. Yeah. Respected Chairman, sir, Coal India, Sri Prasad sir, CMD CCL, and other dignitaries on the dais, and all participants present physically and also connected virtually. Good morning to all. You are all aware that now last year the OB outsourced component was 80% and coal was 60%. Now, so most of the works are outsourced. You know the importance of contract management. The success of Coal India lies in successful implementation of contract management. And Coal India thinks that the contractors and all that they are the part of the family, and without them, it is not possible to go forward also. So accordingly, so many stakeholders meetings were held at headquarter level, and their suggestions are taken. They are incorporated already, and it is a continuous process. Initially, Coal India started this outsourcing with the risk and sharing concept in underground mining, where these continuous miners and all, once they are established successfully in risk and sharing concept, then this outsourcing model also for last 10 years in underground also it is a established model. And in OB, outsourcing is there for quite long time. And now MDO model also we started 3 to 4 years back, and revenue sharing model also we started 6 months back. So it is a continuous process,
The process and improvement is every time it is getting refined and evolved into a efficient method by taking feedback from all the stakeholders. Because CCL is ahead of other subsidiary companies in MDOs. In first phase, we have identified 15 MDO projects. Out of that, 6 have been awarded. Out of 6, 3 are from CCL. That Piparwar Underground Mine, Chandragupta and Kotre Basantapur. So remaining 3 are 2 in MCL, 1 in SCCL. And in phase 2 also, we have identified 19 MDO projects. And also, we have about 250 closed mines, mostly underground mines. After nationalization, I think about 250 mines have been closed and they are all there. And we want to offer wherever the reserves are more and to reopen them wherever technical feasibility is there. We want to offer them in revenue sharing model. So huge opportunity is there for MDO projects and this revenue sharing model. Underground mines, open cast mines, mixed mines in all the subsidiary companies. So that way, ministry advised CCL to organize this MDO workshop because they are ahead of others and they know the problems involving all the subsidiary companies and even contractors to take this feedback and all, so that further amendments can be done, which will again help in coal industry and also all the contractors. So it will be sustainable only when it is beneficial to the both the parties. That way, Coal India top management is also looking into and considering all the amendments or good suggestions which are beneficial to both of them. Already many of them have been incorporated in MDO document, in revenue sharing document, in outsourcing also. Many courageous steps have been taken in the interest of company and industry. So that way, Coal India is always open and to consider any genuine suggestion coming in the process of this MDO workshop. So with this, I conclude and thank the organizers for giving me this opportunity, and definitely we will have a number of takeaways from this MDO workshop which will be beneficial to the coal industry. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing your views on the MDO contracts. We are extremely grateful to Chairman sir and DTCL sir for joining us on this occasion and gracing us with your presence. We are extremely grateful, sir. With this, we are towards the end of the inaugural session, and I would like to request everyone to break for the refreshments. And it is to mention that on the right side of the audience we have it reserved for the delegates, and the left side of the audience is reserved for CCL employees. And we have an extremely exciting session post tea, so please do come and join us for the session. Thank you all. Thank you, everyone. I request all of you to please join us again after 15 minutes back, because we have got tight schedule, so we'll start on time. Thank you very much.
be addressed at the last. So thank you very much for your attention. I now request Pooja to take the session and have our dignitaries for the address. Thank you. Thank you, sir. Shri Anandji Prasad, sir, Project Advisor, Ministry of Coal, has just joined us. So I would request our CMD, sir, Shri Prem Prasad, sir, to please welcome him with a shawl, shriffle and a bouquet. With a huge round of applause, please welcome Anandi Prasad, sir. Thank you, sir. Moving ahead with the technical sessions. For the first session on evolution of tenders and contracts on MDO basis, with huge round of applause, I would like to invite Shri Anil Kumar Rana, sir, Senior Advisor to CMD, CMPDI and Ex-Director, CMPDI. Sir, Shri Rana, sir, graduated in 1985 from IIT BHU and is a holder of First Class Certificate of Competency under Indian Mines Act. He also possesses a degree in law and diploma in business finance. He was General Manager CBM before assuming the office of Director Technical, where he initialized the process of operationalization of CBM blocks of CIL. He has been awarded as the Best General Manager of CMPDI by CIL on the occasion of Coal India Foundation Day Awards 2018 and has assumed the office of Director Technical Planning and Design CMPDI from 1st of August 2019. The stage is now yours, sir. Good morning. Good morning, and with the presence of Chairman Coal India, Director Technical Coal India, maybe through VC or later on they will be going through the proceedings. CMD CCL Prasad Sahab, CMD CMPDI Manoj Kumar Sahab, Shri Anandji Prasad, Advisor Project MOC, Shri Reddy Sahab, and friends. This is a introduction of how this whole MDO tender document evolved. Actually, it took almost 10 years. So it has gone through proverbial roller coaster ride, and number of times it has gone to board, it has been approved, then it has been shelved, then it has been revived. So this document has gone through a long process, and perhaps in Coal India, I can say that this is the most debated tender document, and rightly so, because this is a bit different from normal tenders which we usually handle. The real point is it's a very long term. It's just like having a long term relationship where this getting out of this relationship will be a very big embarrassment as well as financial loss to both the parties. So once we enter into this agreement, the exit routes are literally not there. So when means companies, Coal India companies and private entities, when they enter into this agreement, this is a very important point to remember. Now what we can see that we have got a number of MDO documents evolved in time.
Some have taken years, some have taken months, and so this model MDO document for OC and UG, and fortunately already work have awarded for both these important activity of Coal India. And the last one is for discontinued mine revenue sharing. It was a bit different concept. And work are likely because bidders are there, and I hope that works will be awarded for this also. As far as remaining two are concerned, this mining charge per ton basis and partially explored, tenders have been floated for this partially explored, but the response was not there. So we continued with the rest of the three successful documents. We can go to next slide, please. So these are the timelines. So these timelines will say that it's not that where we reached, we just reached by means it has taken a very long time. This started, I am talking of this recent document, and in the few, how the real means when the starting point, we will discuss it in the subsequent slide. So this is the timeline. It started in formally started in January 2020, and then it has taken several OC mines. Then February 2020, then October 2020, and this timeline, if you go through it, you will see that once the document in place, it has not taken much time, and for that I would say that management of Coal India, especially our chairman, he has taken it with literally a missionary zeal. Whenever some changes or whenever document is there and it has gone through all due diligence process, there I don't think any time is wasted, and approval from the board, and once approval from the board is there, then Coal India FD is empowered to make further minor changes. So with this process, whatever initial time it has taken, but later on the decision taking was very fast. And one of the reason why we can say now today that 97.5 million ton of coal contracts are in place, the very active and supportive role from Chairman Coal India was there. Otherwise, any new thing, and especially the environment normally is not very conducive to change, because once we have got some system in place, we becomes comfortable with that, and it becomes comfort zone. And to get out of that comfort zone and to do something new takes a lot of effort and a lot of support and a lot of conviction. Unless you are sure that whatever you are doing is in the interest of company and you are sure that it is going to help, only then such things takes place. Fortunately, it have taken place very fast. And presently, we have got tender documents in place. Literally, whatever situation is there, we can find one document which is applicable to that particular case. Next, please. This concept is, of course, mine developer and operator. In this surrounding areas, if we grow with us, then it will be a fruitful thing. A lot has to be contributed from this coal industry, Coal India in particular, as we being plus 83-84% coal production. Perhaps so, some technical snag we will take all the possible steps, and we will ensure that. So let us come to this concept of mine developer and operator. In this developer word is important because all the infrastructure is also to be developed by the mine operator. This mine operators we were having, because in some cases these hiring of equipment, this long time, I think up to 7 years or 5 years, that's quite long time. So mine operators we were having, but now in this document we are having mine developer and operator. So the infrastructure development part has been shifted on the, I should say, strong shoulders of our
bidders, contractors. They have got a lot more flexibility than we have in executing some of the tasks. So they have to construct all the infrastructure and permits and clearances. Of course, application will be done by us, but finally the lag work, in which sometimes we lag, this has been shifted to them. And of course, removal of overburden, it is there, it is an important activity, and extraction of coal and delivery. So this is in nutshell what we suppose our mine developer come operator to do. There were some issues in that. Before I move forward, I think if I cross the time limit, I think someone should just remind me if I am going too slow. So the issue was that if you give a mine operator 5 years time or 7 years time, perhaps they are not inclined to take the latest technology because initial investment are. If you give the mine for 25 years or 20 years, then definitely they will choose the best technology, latest technology, and it will be beneficial to them as well as beneficial to the project. These are some of the reason. If we increase the production, of course, import will come down. Next, please. These are the statistics which proves that our import is coming down. One of the major reason is whatever market we are seeing internationally, the coal prices, those are simply exceptionally high, and some mandatory coal import because of last year's power crisis. These companies were mandated that they should import coal, and I think 2.5 or 3 million ton of the coal was lying at the port, and the parties which initially were instrumental for importing this coal refused to take that coal on the on the plea that it is 3 to 4 times more costly than Indian coal. So whatever coal we are producing, one of the reason this company has come a long way to this point is whatever coal production we are producing, at which cost we are selling, it is almost next to impossible to do internationally. So this is a great strength of Coal India, and these models which we are using for different, whether outsourcing, our manpower cost is high, so this outsourcing and large scale outsourcing and increasing their ambit of activity in the MDO will continue to go. Now this is the real history. Actually it is started around 2012, so it's almost a decade in this document, and it was initiated at the government insistence, and planning commission, the then planning commission was steering it. So we were associated from CMPDI, and we had lot of meetings, and you may have heard the name PPP, Public-Private Partnership. So the original document was for development of port, development of road projects, and I can say that it has been modified from the PPP document of Planning Commission that was applicable for roads. So from roads to mine, it was a long journey, and lot of obstacles were there. But finally, when the first time it was approved in 2014, and initially, because I was associated all through as a matter of chance till date, so initially there was lot of reluctance in Ministry of Coal also to accept this document. Not only Coal India, there was lot of reluctance in Coal India as well as Ministry of Coal to accept this document as a model document for production of coal. So you can say that from 2014 to start, we've gone up to 2020 when new chairman came, and again
I thinking was there, although it was approved from the board, but was never implemented. And then escalation clause, there were some issues. It was given to ISI, that is Statistical Institute. It is not other ISI. So they have given a formula. Nothing new was there, because at the end of the formula they wrote that whatever we have given is to be decided on mine-to-mine basis. So once escalation clause, the weightage are mine-to-mine basis. So that 1.5 years, I think it took almost 1 year to give that formula. But finally, the escalation formula remain same. Then again, when the things restarted in 2018, and some changes in the general tendering process has taken place. So those are to be implemented. So this reverse bidding, the GST was there, and then whatever ISI recommendations, those were incorporated. Then again, during chairman's visit in 2019, again it was decided, let us take a new input from the stakeholders. So we have again gone through all the process of taking input from the stakeholders, and after that, whatever suggestion we could incorporate, those were incorporated. Next, please. This committee of FDs were constituted, and this was reviewed at the FDs level. So the journey actually restarted in 2018. Whatever was already approved, but because of the reluctance in Coal India, and that was obviously, there were some issues. Actually, the pressure was there to adopt the PPP document almost in totality, because Planning Commission, I would like to mention name of Shri Haldia Sahab, who was advisor to Shri Montek Singh Ahluwalia. He was taking these meetings, and our chairman at that time was Mr. Narsingh Rao. So number of meetings were taken in Coal India also. But the gap was so much that management of Coal India was not convinced. Initially, we were also not convinced that it should be used for coal mining. But if you see the today's document and from where we started, PPP document, I think it has almost totally overhauled. Next, please. Again, some changes were the committee, it has gone, and legal vetting, I should say, those who have gone through this document, this document has got a very legal type of writing. Normally, whatever our documents are there, those are contract management manual or our purchase manual or civil engineering manual. In that, the language is very much near to what engineers understand. But in this document, I should say, because of the legacy, because we adopted from a document that was literally written by lawyers, not by the users. So the legacy is still there. You will find that sometimes the language they have used is quite difficult to understand. Some part have been simplified, but because of the structure, this document is very structured document. And if you change one thing at one place, it becomes difficult to see its consequences on other clauses. So in that case, we have retained, because if you change the total document, the whole idea of the concept would have been lost in the process. So we have to retain some of the complex clauses also. But my request, anyone who is present here and who are supposed to implement it or supposed to understand it or supposed to revise it, patiently, if we go through this document once or twice,
I think it is the most structured tender document I have ever seen. So that with that advantage, I think we can live with some of the complex legal languages which we have to understand only once. If once we understood, then rest of the works becomes easy. So finally, the OpenCast document was approved by CIL board in February 2020. And if it is approved in February 2020, and today we are able to award in 22, we can say that work has been awarded for mines with PRC more than 80 million ton or 85 million ton. I think it's a great achievement from I think every one of us who are involved are, these applause are for them. They have taken lot of pain for it. Management has given lot of support for it. And one more thing, this involvement of planning commission was not only in the first phase, even in the second phase, this document gained so much importance that again this Niti Aayog was involved by Ministry of Coal, and there were discussion with Niti Aayog so that the basic concept of public-private partnership is retained in the document. Finally, it was cleared from them, and then only it has reached this stage. Next, please. Some of the scope of work which are important because this obtaining of physical possession, this is a very difficult task. Even if you have made all the notification and everything is in place, taking physical possession is a tough task. Every means practicing mining engineer who are working in field, and when they acquire land, they understand. So it involves some of the things which perhaps doing through departmental or through company resources may not be possible. And then of course they have to help us in lot of permits will be in our name. And here a bit of difference when we say this revenue sharing model, a lot of more responsibility are shifted to the MDO. But no, in normal underground and open cast MDO, it's not there. Then of course this development, in this case one important point which again it has gone through several debates. In this case the project report is of the company. Whatever we are asking the MDO to implement, the blueprint of it, or at least boundary line of that, is already given in the project report, approved project report, or approved mining plan we can say. And within that boundary line, this MDO has to operate. As far as flexibility is concerned, of course, no mine can run as planned, so there will be some changes. So there is some flexibility given to the mine operator where they can make changes. And especially our means CVO is here. So one thing, normally that any change in the working or any change after tender has been awarded is not taken lightly. This is a very means ingrained concept in us. But in this document, we have to understand that if a mine has to run for 25 years, unless we give flexibility, and those flexibility are seen as a natural part of the document, and if we try to stick whatever project report is saying, I think no mine can run like that. So we should understand that whatever has been given, there will be some changes during the course of time when ground situation changes. So this document provides for those flexibility. So those should be taken that it is part of the contract. It is not something outside the contract. It should not always be seen as if it is helping the MDO, or MDO should not think that it is helping the company, because when any such major change takes place,
there is one chapter in this, whole chapter is dedicated, in which when major change is going to take place, how to address that. If we go through that, those clauses, I think we will understand that changes, although we have taken only one single bid for cost per ton, which we are paying to the MDO, but adjustment are there, OB adjustment is there, and number of adjustment which are permissible and which are part, means this is those are not exception, those are actual part of the document. Next please. So this is the literally every work is other than statutory manpower, every work is to be done by the MDO. And even mine closure, progressive mine closure is part of the MDO, and final mine closure, if it is taking place within the contract period, definitely it will be the. Then authority, this word authority itself, it is not of the normal nomenclature which we are using for the Coal India standard. Everywhere we have used the word company. But as because of the legacy and there were some issues, finally we adopted it, because government used this word when they go for tenders, the authority, and we objected that as such we are not authority, we are just one part of the contract, one party one and party two. We are one party and contractor is another party. So we are, but anyway, we retained this word, but I assure the representative of MDO, there is nothing authority, it's just like any other contract. Because of the legacy, we retain this word. So the idea is not to show authority, it is just like any other contract in which there are two parties. So one party is company and another party is MDO. Of course, employment we are supposed to give, and reimbursement of direct and document R&R cost, statutory cost, land cost, and if final mine closure, if occurs after the time period for which contract is there, we have to do it. Next. This discontinued, I think, when this matter will be taken, because my job is to give just a, in the lighter vein, when this topic is given to me, so we can say this history of the MDO document. So for a retired person, I think this is very apt. Those who are history should tell the history of the document. So this is the impression I got. Anyway, so when we will come to this revenue sharing, it was a major deviation from the normal contract agreement. When it will be discussed in detail, then we will cover these. The whole idea is, in this, mine is offered as it where it is basis. There is no project report for that, and we have given lot of flexibility. There will not be any manpower from the Coal India side. It will be discussed in detail. Next, please. So we are giving technical and financial parameters because we want more participation. And in this revenue sharing will be, it will be whatever coal is produced, it will be auctioned on a platform told by the company in a transparent way, so that whatever revenue is coming, that revenue is known to everyone because it is on the site. There is nothing hidden in it. And whatever part of the revenue company is going to get, they will get this. This is a, I should say, it's a success story. If we approve a document and we award a work of, say, 85 plus, or say almost 100 million, 97.5 total. If we award a work of this magnitude within, say, 2 years' time, I think it's a great success. And I should again especially mention that you can see that CCL is at the forefront, and able guidance of CMD CCL in this regard is worth commending, that he has taken initiative, especially the Kotre Basantpur Pachmo
it has gone through quite ups and downs because it was I think first or second to be signed, and definitely first in CCL. And Shri Prasad Saab, he has taken a lot of pain, and because of that, CCL has awarded maximum number of LOAs as far as MDO document is concerned. Next, please. This is a discontinued mine. I'm not giving more time to this because it will be talked separately, and when this matter will come, we will go into details. But this is a again I should say this has been a long journey, but it's a journey worth its pain because ultimately Coal India is going to gain lot of from it, and our production it is ensured for next say 25 years. So whatever pain we are taking in 1 year or two, it is going us fruits for next 25 years. So with these words, I think the histories and evolution of document is clear. Thank you very much for listening me. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Now I would request Shri R.R. Srivastav, sir, GM CMC, to please felicitate Shri A.K. Rana with a token of appreciation for sparing his valuable time for us. With respect to the technical session which just had, if anybody has any queries or any questions, we are open for a discussion. Please, sir. Any query, and I think the queries, if those are related to, because whatever I told is just evolution part, means how it evolved. Rest of the details, respective speakers when they will deal the subject. So any query regarding it is welcome. I think, yes, some. Estimated cost per ton means you want that it should be mining charge per ton, whatever we calculate, actually we calculate on the basis of departmental. We can actually we can calculate the charge based on departmental expenditure only. So basically it is our cost, and whatever we are costing is your cost, means bidder's cost. So our cost, because of our high manpower and everything, will not be that relevant, I think. And other than that, in this particular case, the importance is total expenditure, because this is whatever the key is, not cost per ton. Cost per ton is subsequent. It is calculated subsequent on the cash flow. What we are giving is whatever is our estimated project cost, because that is the money a bidder is supposed to spend, and again that is our estimate. So your estimate will definitely be different from there, because if you invest the same amount, you put the same manpower and you pay the same manpower, then I don't think any gain to anyone is going to happen.
So the cost per ton is derived cost, and the main cost is this capital, because it will run into 2000 crore or maybe more in some projects. That we are estimating and we are giving with the document. And again, I say, because the topic was how it was evolved. So these details definitely someone will be, because I am involved, so I am able to answer it. But I think these are finer, means these can be part of the discussion. But anyway, any other question? Sir, as per recent change, जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसमें पार्टिसिपेशन था आइदर इन सोल मोड और कंसोर्शियम मोड. रिसेंट जो चेंज हुआ है उसमें जेवी कंपनी का आया है, तो वो स्टील सोल मोड और कंसोर्शियम मोड दोनों है और इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय जेवी कंपनी. ये अगेन मैं ठीक है, इट कैन बी आंसर्ड. इसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट जो है ना रेवेन्यू शेयरिंग वाला है, ये डिटेल में डिस्कस होगा. अगर मैं सारे सवाल अभी ले लूँगा तो उससे क्या होगा कि आगे फिर डिस्कस करने के लिए नहीं बचेगा. तो मेरे ख्याल से ये जो कंसर्न सेशन है, एंड आई विल बी देयर इफ आई हैव टू आंसर, आई विल आंसर. Otherwise, all the questions are taken in the very first session, and my was introductory, how it evolved, how we reached where we are. So I think we are clear about it. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir, for sharing your expertise and knowledge with us. Moving ahead. Knowledge is the experience combined with ability. Knowledge is the power to empower. With these words, I would like to introduce our next speaker. A dynamic personality, a learned individual and a far-sighted administrator, under whose able mentorship, CMPDI has always been able to stand out time and again. I take the privilege to welcome on stage Shri Anandji Prasad, Project Advisor, Ministry of Coal, for his session on MDO Contract Management, the salient points. With a huge round of applause, please welcome sir. Shri Anandi Prasad has graduated in 1989 from IIT Kharagpur and has worked in CMPDI in various capacities, with last posting as General Manager Underground in CMPDI. And now he is working as a Project Advisor in Ministry of Coal since June 2021. Thank you, sir. The stage is now yours, sir. Slight correction in joining time. Actually, it is July 21. Very good afternoon to you, to all of you. CMD CCL, CMD CMPDI, Shri A.K. Rana, other dignitaries from coal companies as well as outside coal companies, all the participants from Coal India and coal subsidiaries. The topic which has been given is salient points of, it is not MCA, it is RFB also partly, which it is being covered. Before I commence describing about the salient points, I would like to mention briefly about the background and slightly elaborate about the things which happened in the past also. As pointed out by Shri A.K. Rana, that since he has been involved since the formulation of the document as it commenced from the erstwhile Niti Aayog body, that was Planning Commission. It started everything in 2013, and the things started rolling out in 2018, where subsequent updation of the documents were made. But actual approval took place in 2019 and for the open cast documents. But long time elapsed in between. बहुत सारा समय निकल गया इसमें. Actually इस बीच में
इतना हेजिटेशन था कोल इंडिया में और सब्सिडरी में कि बाकी कंपनियों ने इस डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट करके बहुत आगे निकल गए। इनफैक्ट मैं देखिए बहुत सारे कंपनियां जैसे राजस्थान RRVNL है, NTPC है, दे हैव टेकन द लीड एंड गॉन अहेड with the MDO model. And although Coal India has adopted this document and almost 6 mines, 6 coal mines have been assigned, but we are still way to go. More than 70 blocks are still to be projectized and developed. And there are several mines which are discontinued, needs to be taken up. And the efforts are being taken up, initiatives are being taken up by ministry to streamline all the processes, keeping in view the demand of the coal and the requirements of the industry also. It is sought that private sector participation will be invited, but there is a lot of resistance from within. In fact, when we started finalizing the document, we wanted to have feedback from all the subsidiaries. At the director level, we got some, but still the level of participation which was required was not there. And still, although I can see the number of participants are here, but I would request all of you to go through the document intimately, analyze each of the aspects. The document is very open, very flexible, and you can make your suggestions, you can put forward, you can discuss with your directors and CMDs and take the things forward. In fact, I would like to mention here that I got a little assistance from CCL. 2 persons to name here is Mr. Girish Rathore and Mr. Abhijit from Finance Department. They gave immense feedback, which based on which some major modifications were made in the document as well. And I would like to mention that even recently, even HCL, Hindustan Copper Limited, has taken the document and they have floated and they are successful with this tender. So I would invite all of you to come go through the tender document and please go through it very in detail. The framework is flexible. If you have any suggestion, if you want some change, you discuss with your bosses, you bring it forward, take it to CMPDI. And once it goes to once it is accepted, it will be taken up and the modification will be done. And rest assured, because the coal industry, you are the operators, you have very wide experience, बहुत बड़ा experience है, बहुत exhaustive experience आपके पास है. आपका input हमारे document को बहुत सुधार देगा या improve कर देगा. तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग अगर इस में शिरकत करें, और मैं तो थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन दूंगा, वो भी सेलेंट फीचर्स दूंगा, बट आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए इस डिस्कशन में. ये डॉक्यूमेंट कोल इंडिया के पोर्टल पे अवेलेबल है. तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये है कि अच्छे से इसको स्टडी कीजिए. स्टडी करके कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड and put your suggestions, even if you want some major change in the framework also, because document we feel is very structured, is very completely structured, and it needs to be customized as per the requirement of the project, which is given in the model contract agreement. Even for the RFB, request for bid, the bidding process, if you have certain thing, a suggestion in your mind, you can suggest that. Secondly, there are initially 15 mines were identified. We are still at 6, a long way to go. 5-year vision में ये envisage किया गया था कि 15 प्रोजेक्ट हम लोग अवॉर्ड करेंगे. ऑल्दो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बट अभी 15 भी नहीं पहुंच पाए हैं, और हम लोग अभी तक माइन चेंज भी कर रहे हैं. बस 15 की लिस्ट में माइन भी चेंज कर रहे हैं. कुछ बॉटलनेक है इसमें, जो कि आप लोगों के पहल से ही शायद इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है. मंत्रालय की पहल से हमने एक रेवेन्यू शेयर मॉडल का, जहां पर कि कोल को ऑक्शन किया जा सकता है, ये हमने इनिशिएटिव लिया था, जो कि डिसकंटिन्यूड माइन में लिया गया है. और अगर कोई ब्लॉक जिसमें कि आप ये फ्रीडम देना चाहते हैं बिडर को टू सेलेक्ट द टेक्नोलॉजी, इवन दैट डॉक्यूमेंट कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड वी कैन अडॉप्ट द रेवेन्यू शेयर मॉडल फॉर दैट ऑल्सो. The blocks which are still to be developed can also be taken up on the revenue model if you wish, if anybody wishes. Yeah,
इनफैक्ट विश क्या, ये तो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा अगर we have already asked CMPD and CIL to formulate this 5-year strategy plan for developing all the blocks and mines which are existing in the command area of CIL, where reserves exist and where exploration has not been completed, needs to be formulated has to be taken up within the period of 5 years. So please come up, please go through the documents, and if you have suggestions, you can mail me also directly, and we will take up the issue on this, on the policy front. To continue further, salient features of the RFB and MCA, the bidding documents, they are basically comprises of 2 documents, that is RFB, request for bid, and model contract agreement. Separate documents have been formulated for open cast, underground, partially explored blocks. 2 mines were identified in ECL, that is Brahmani Chichropat Simbal and Amarkonda Murga Dangal. However, it did not materialize. Subsequently, discontinued mines were identified. 20 mines have been floated, and more are yet to come. In fact, there are recently a discussion was held at ministry. We were discussing about that. A combination model does not exist. In fact, in discontinued mines, we have given the option to the bidder about the choice of the technology. But if in case we have a mixed mine, we do not have a document which covers both open cast and underground. That needs to be looked into. Moving on further, the eligibility and qualification criteria comprises of technical capacity and the financial capacity. In general, the 50% of the annual excavation or extraction quantity or a threshold has been fixed for open cast underground. That remains the technical capacity, that is the qualification criteria. And 2 parameters have been taken as a determination of the financial capacity of the bidders, that is net worth and total income. Earlier it was that the turnover, but the term has been changed to total income. For discontinued mines, there is no technical capacity as of now, and in case of consortium, each bidder has to contribute towards the qualification requirements, either in the financial capacity or the technical capacity. For MDO, OC and underground, the approved project report, as mentioned earlier, becomes the Bible and becomes the base document for customization of the document as well as the execution, implementation of the report. It becomes a mining plan. In case of discontinued mines, the bidder has to submit a mining scheme, and the DPR, based on that, DPR is prepared. And then sale value is calculated using the mining scheme and the production quoted by the bidder. During the initial phases, when the document for open cast was approved, there were difficulty in the first tender, that is Kotre Basanpur. We faced this difficulty relating to the project cost, which was the basis for formation of SPV, the capital which was to be deployed. So then it was bifurcated into 2, that is estimated project cost and assessed project cost. Estimated project cost is what is estimated by the CMPD or the subsidiary, and the assessed project cost is the cost which is assessed by the bidder. That is to be taken as a reference point for the formation of the SPV, the capital which has to be considered. And this amount shall not be less than 75% as mentioned. And financial agreement and subscribed paid up capital is based on the assessed project cost. In case of discontinued mine, the annual sale value is described as the factor which is multiplied by the maximum coal production during any year with the price as quoted in the National Coal Index as on bid due date. Then evaluation of the open cast and underground takes place based on the mining charge, and the discontinued mines based on the revenue share of the discounted production. And the floor price for the revenue share is fixed at 4%. Bidder can quote above that. Just go behind. In this, even for MDO underground or open cast,
it has been proposed, in fact, it has been suggested by ministry to implement the revenue share model where flexibility of the technology can also be given to the bidder, where no bidder turns up in some of the projects where there is no ultimately there is no participation from the bidders. So that can also be considered. Next. Performance security is taken as 5% of the estimated project cost estimated by the bidder, and it has to be provided within 90 days from the issuance of LOA before signing of the agreement, and it has to be kept valid and in a revolving manner after a period of at least 3 years. Discontinued mines, in case of discontinued mines, it is 5% of the annual sale value. This is important. SPV has to be formed for the execution of the project in both the conditions, whether open cast or underground or discontinued, and the subscribed paid criteria for subscribed paid up capital has been mentioned for the SPV, that is 10% of the assessed project cost for OC and 15% of the assessed project cost for underground MDO projects. In case of discontinued mine, it is 15% of the annual sale value. This is just an example which illustrates the amount which may be which will evolve, considering the estimated project cost as 100 crore, 5% of which is 5% is performance security. The estimated assessed project cost should not be less than 75 crores, and the subscribe and the paid up equity capital of the SPV can be 7.5 crore, considering 10% of the value, and 15% for underground mines it will be 11.25 crores. There are in this, before the commencement of contract period, there are certain conditions which has to be satisfied by the authority as well as the mine operator. These are the certain set of conditions which have to be certified. After completion of this condition precedent, the contract period is commenced. That is, procure the issuance of notification for land acquisition. This is for the authority. Procure terms of reference for EC. Online application for issuance of EC and FC. Procure approval of mining plan. Procure approval of RNR. Then for the mine operator, similarly, we have a certain set of conditions. Execute and procure execution of the substitution agreement. Procure all applicable permits. Execute financing agreements and deliver to the authority. Deliver to authority the financial package and model upon which the bidder is working upon. Issuance of EC and FC. And upon this fulfillment of all the conditions, the condition, that is appointed date, starts. It is the commencement of the contract period. Then there is a term which is used as commercial operation date. This has been defined as in the year in which the excavation delivery at least 85% of annual capacity or at least 50% of the contracted capacity is achieved by the mine operator, as such, which is to be certified by the engineer in charge. Provided that all milestones, the major milestones, are complete up to the accounting year. The contracted capacity is the peak rated capacity. That definition has been given in the document. For discontinued mines, contracted capacity is the peak rated capacity mentioned in the annual production plan of the bidder. There is a term which is scheduled COD. The significance, you have to understand the terms. Even in the previous slide, you have to understand the significance of this term. Why it is important, commercial operation date. This is important because if contract is terminated before commercial operation, there will be no payment of the the cost of the capital equipment, the assets which have been built up by the bidder. And secondly, similarly, the scheduled COD is also the same. It is the first day of the succeeding account year in which the 50% of the contractor. This is for fixing the duration when it is supposed to be scheduled, and fixing the penalty also. So each term has its own implication in the document which needs to be understood. And there is a scheduled completion date for each of the milestones which is mentioned in the schedules. The schedules are the very comprehensive
comprehensive, and it has to be customized for each of the project based on its own set of activities and the milestones which has been set up by the project proponent. The Schedule G sets, this needs to be incorporated in Schedule G. And this basically comprises of major activity, which may be CHP construction including coal depot, surface infrastructure, township and buildings, siding and railway tracks. In fact, you can have your own milestone, but we suggest that it should be major one, because by the other milestone creation may create difficulty in the project execution. This is a brief scope of work. Brief scope of work of the of the mine operator. This has been elaborated earlier also. This is obtaining just a minute, just go through that. पीछे करें. Obtaining physical possession, undertaking R&R activity, procure and maintain all applicable permits during the contract period, development of township and maintenance of it, development of the project as per the mining plan or the project report which is given, which has been customized in the document as also, and provided to the bidder separately as well. For the authority, next slide please. For the authority, responsibility of the authority or the subsidiary will be the owner of the mine for the purpose of the Mines Act, and shall appoint agent, a manager and other statutory personnel. Employment of the project affected person is the responsibility of the authority, and all the cost, direct and documented cost, is to be reimbursed as incurred by the mine operator by the authority. Reimbursement of all statutory cost, which is also a documented cost, has to be paid, and payment of the land cost is to be made. Undertaking of the final mine closure, if it occurs after the contract period, that is of the project. Engineer in charge is one of the important person in the project, and has to be authorized by the owner, and he becomes authorized representative for the purpose of supervising and administrating the contract, administering the variations in the contract, awarding extension, etc., and valuing all the assets, certifying all the construction activities and duration, and all the benchmarks which have been set up in the documents. Then the mining charge, which is specifically mentioned in the document, is comprising of only one thing, that is based on one thing, that is the excavation or extraction of coal and delivery of its delivery at the delivery point. And the bidder will be, for all the activities, the bidder will be paid only this charge, apart from the other expenses which is to be reimbursed. And this will be escalated based on the escalation formula, which has been formulated based on the project report and the component which is decided based on the project report. In case of mining open cast mine, this mining charge shall be adjusted yearly after the COD for actual stripping ratio, as per the formula given in the stripping ratio adjustment. Next. For revenue share, there will be a separate session as mentioned. I think it is better to discuss in detail. In fact, I would request you all to frame up your questions, for detailed questions for that session. Well, this document was formulated after me moving out from CMPDI, although this instruction came from MOC, but I was not involved with this document, and the answers will be made in that document, in that session. And moving on, next is price escalation. There are certain set of components which has been devised and mentioned in the document. 20%, but this percentage is all variable. It has to be determined based on, it will be project specific. 20% is supposed to be fixed and with no escalation. 25% with change in WPI for category mining, quarrying, metallurgical machinery parts. 5% change for WPI for subcategory lubricants. 25% change in unskilled category of employees as per HPC recommendations, 20% for change in WPI for high-speed diesel, 5% for electricity. In fact, if you have any suggestions where project doesn't, in fact, in some cases, the lubricant or diesel, if project is proposed for operation through electrical, major operation through electrical means,
then the composition can also be taken up for change and it can be suggested accordingly. Next, in case of underground mines, minor variation have been made because it's basically electricity which comes into picture, and there's some percentage which comes in which is in terms of foreign exchange maybe, but now the manufacturing of underground equipment is taking place in India, like Caterpillar has been, machines are being manufactured, so things, it needs to be changed or it needs to be incorporated, modified. There is another charge which is to be paid, which was earlier there for stockpiling and rehandling charge was there, but this was excluded after detailed deliberation. However, there is the mining charge payment has also been split. 70% has to be paid on undelivered coal if it is stacked in the depot, and 30% mining charge at the time of delivery will be paid. There is no mobilization advance and there is no revenue shortfall loan provided to the mine operator. There are two important provisions in this document related to change of law, because this document needs to evolve over a period of time. And in fact, the suggestions and the framework which come, these will be part of the change. Besides the change in law, if certain law changes because of this, either the mine operator is beneficiary or he suffers, this cost is to be reimbursed. And there is a threshold has been set up, that is 0.1% or certain amount which you can fix up. Based on that, this will be this evaluation of this on the impact and its impact on the mining charge will be made, and accordingly the variation in the mining charge will be made. This will be during the contract period. Secondly, therefore, any change of scope which is envisaged in the contract framework, it can also be done. However, this restriction was imposed by the board at that time, that only it will be made only for safety and other unforeseen circumstances. Even this can be taken up if it is very specific to any project, it can be considered for change. It may be considered. Then there are force majeure events, non-political, indirect political and political event, which is beyond the control of the affected party. It has to be intimated and can be considered. This is non-general force major condition which is mentioned in most of the contract documents. Next, please. This is subcontracting was very specifically limited in most of the contracts, most of the documents which has been prepared for open cast underground and discontinued mines. This was intentionally done so that the bidder who is taking up the contract is doing the work himself. That is why this was limited, and in case of open cast mine it was limited to 25%, for underground mines it was limited to 10%, and similarly discontinued mine it was limited to 25%. This was intentionally done with so that he doesn't throw away the contract to somebody else and moves out. There are provisions for termination because of mine operator default and authority default. There has to be a cure period of 60 days or 90 days in case of mine operator and authority. That needs to be done. So this is the brief summary. In fact, if you have question, I would like to answer that. But slightly for discontinued mines, the revenue share model, well, I am not very much conversant with that. It has changes have happened after my moving out from CMPDI. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for sharing your insights on separate bid documents on open cast, underground, partially explored and discontinued mines. It has been quite enlightening for us. If there is any question and answer. Sir, Anjani Kumar, BCCL. My question is related with award criteria of revenue sharing model. Sir, award criteria hai net present quantity multiplied by revenue percentage, whoever is having the highest. Sir, a subsidiary like BCCL is having multi-stream with multi-grade. Even coking coal and non-coking coal are at the same place. So, is this criteria suitable or needs any modification? Because I think suppose someone has quoted in ton only, and
excavates during contract period, extracts only non-coking coal, and other is capable of extracting coking coal also. The economics will differ. Sir, your comment. हेलो रेवेन्यू शेयर मॉडल के लिए जो आपने बताया ये डिफ़िकल्टी तो रहेगी ही। तो अगर बहुत ज़्यादा स्प्लिट कर दीजिएगा रेवेन्यू शेयर के इवेलुएशन में तो आपको इवेलुएशन में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। If you have any specific suggestion on this, I think you need to deliberate in the session which is dedicated for this revenue sharing model. We would like to, in fact, I think CMPDCL would like to take up this issue because this has been, would you like to answer that? Any more questions? Now I would one more question is there. Sir, in the recent model, the bidder is to participate in sole mode only. In BCCL, we are going to float tender for one of the mine, which is having estimated project cost of 3,000 crore. So, as per requirement, a bidder has to have 30% of average total income, that is 900 crore average annual. So, as per bidders' feedback, they are feeling difficulty. Actually, earlier, sole bidder or consortium were allowed to participate. So, the capacity would have been divided between the consortium members. Comment, sir. फिर से बोलिए, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर, अभी जो कंसोर्शियम को डिसअलाउ किया गया है या नहीं, अभी वो क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन हमारा वही था कि जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, उसमें कंसोर्शियम मोड में पार्टिसिपेशन करना है या नहीं बिल्डर को, ये क्लियर नहीं है सर। जहाँ तक मेरी जानकारी है सोल बिल्डर और कंसोर्शियम दोनों अलाउड है इसमें। सर, ये क्वेश्चन पहला था, अभी वो अनआंसर्ड है। अगर वो है देन सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ नो वैल्यू। I think it both the bidders, sole bidder and the consortium is allowed. सर, हमारा एक सजेशन है एमसीए में जो भी एमडीओ को जो भी पावर कंजम्पशन है पर ईयर जो भी चलता है, उसका कम से कम एटलीस्ट 10% सोलर पैनल से प्रोड्यूस करना चाहिए। वो कंडीशन डालना चाहिए ताकि फिर से बोलेंगे थोड़ा। सर, ये पावर कंजम्पशन जो भी लगेगा प्रोजेक्ट चलाने के लिए बाई एमडीओ, उसका एटलीस्ट 10% कंजम्पशन फ्रॉम सोलर पैनल्स। दे शुड इंस्टॉल solar panels all along the haul road or transportation road for at least pumping or lighting, such that ये इंक्लूड करने से कम सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, एक एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ आल्सो एक अच्छा कंडीशन हो सकता है। ये मेरा सजेशन है। हनी, योर सजेशन इज वेलकम। आई थिंक दिस नीड्स टू बी नोटेड एंड हाउ इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड वो देख लीजिए अगर कर सकते हैं तो। There is one more question. Good afternoon, sir. I'm Shweta from CCL. So my question is that in the optimum mix, what should be the ideal ratio for MDO, departmental and hiring? There is no case like that. There is no optimum mix determined. In fact, since the coal requirement has become so huge, any effort on any front will be welcome. Either it is through departmental means or through PPP means, document through MDO is welcome. There is no optimum mix as such. In fact, because you know in the departmental mix there is a restriction of the prices also notified. They have to CRS to sell coal as per the NCDP.
But in case of other models, we are also allowing for revenue share. So that in fact increases the revenue of CIL as well as the bidder. So in case if we increase the revenue share model to a higher extent, in fact, CIL or subsidiary will be the beneficiary. So you increase that share, the percentage, the beneficiary will be Coal India, your subsidiaries. Okay, thank you, sir. Yeah, this was actually taken up because most of the blocks which are being assigned, yes, auctioned through ministry, there is no technical qualification criteria. Based on that, this instruction was given so that this should be done away with, technical requirement. Because many of the bidders are there who are willing to take up the mines, but may not be having the qualification requirements. So these are basically all the discontinued mostly are having very limited capacity or short capacity. That is why it was done away with. Even in fact, more than 100 mines blocks have been auctioned till date. But there is no qualification requirement. Initially, in fact, there is no qualification requirement as such. Hello. Namaskar, sir. Myself is Bikram Kumar, CMC, Chief Manager Mining, CMC Department, BCCL. Sir, being the one of the board member, you are our board member also. I am luckily so many times I have been interacting with you on various issues. For this particular issue, I would like to draw your attention. So in MDO mode, we have put a tender for Kapuria underground, and for 2 times. In fact, in the very first time when we had floated it on the mining charge basis, where washeries and siding, everything they had to make. And bidders in pre-bid meeting, bidders shared their experience, and they asked the issues that it is very difficult to put all the values on the mining charge itself, because huge capital investment is to be made by the bidders, and that's why they were not sure whether they will be able to execute that project in that model. So second time also we modified that model, and on the discontinued mine model we floated this tender, but again nobody participated in that tender. So I think as Ekirana sir discussed in detail about the evolution of the tenders, we had sent our bidders representation. Some are to be included in that. Second thing is that I would like to draw your attention that viability of the project is missing in our RFP, where how we can evolve the viability of the project, because in the evaluation criteria we are selecting the bidders as a preferred bidder through NPV method and H1 bidder, but that 12% IRR viability, whether it is applicable or not, I would like to just know from you, sir. Thank you, sir. पहले तो ये बोलेंगे कि जो भी कमेंट आपके पास सब्सिडी या बिडर से जो आया है, आई थिंक यू नीड टू टेक अप दैट कॉज. इनफैक्ट सभी कंपनीज के लिए इनफैक्ट दिस इज अ सजेशन दैट द बिडर्स सजेशन शुड बी टेकन अप फ्रंट एंड शुड बी एनालाइज्ड इन डिटेल एंड टेकन अप फॉर एनालिसिस, so that the appropriate modifications in the document, if it is acceptable to the subsidiary, should be made. There should be a senior level officers who should participate in this, because many of the tenders are failing for very, very small reasons, or certain deficiency in the document. Yeah, certain things which they are pointing out, probably removal of those deficiencies could lead to success of the tender. In many cases, more than 3 or 4 times the tender has been floated, but there has been no success. In many of the cases, similar or repeated suggestions have been made, but we have not yielded as of now. We need to consider such suggestions very in a favorable way, so that things can move on. So my suggestion, first of all, it would be for everybody, so that
these suggestions of the bidders are taken into consideration in a favorable way, yeah, in a positive way, so that it is biddable. Regarding your document for Kapuria, I think there is well laid. You need to sit down with I think CMPDA or your own finance people to analyze that. You can always come up at the financial assessment, financial evaluation. When you are calculating NPV, where is the hindrance in getting to the evaluation on the basis of the criteria that is well laid? Queries relating to, I think it would be appropriate. We have sessions for this, Patro. I think we have sessions for this, bidder suggestions. I think we need to, in fact, your suggestions are welcome here. In fact, the very purpose of this workshop is to take feedback from all the bidders as well as the officials of the company who are dealing with this tender document. In fact, they are not getting into it. They must get into the details. In fact, your insight into the document will give a further, will elaborate the things in a better way. You come up with suggestion, even if you don't have, you can give it in writing to all the persons. It would be better if you come up with a suggestion during the forum discussion. You can mention a few suggestions if you have. There is no point, I can address that. What can be done. तो इसको नोट कर लीजिए प्रसाद साहब. I think you needs to be taken up. I would like to say that actually we have planned in such a way that the persons who are implementing, both from authority side and both from contractor side, we have separate sessions tomorrow. Each and everybody will be given time, and in that session you will be giving your suggestions and your thoughts. But be pinpointed. Whatever suggestion is, be pinpointed, and even from the authority side or the subsidiary who are joining, who will be willing to join, or they will be having queries, which probably will be answered by CMPDI. Yes, they will also be given time for their views to put forward. That's a welcome thing, but the thing is that learning should happen. Okay. Any other query? हेलो. हाँ सर, वो जो क्वेश्चन था कि 12% IRR का जो मिनिमम डेटम है अवार्ड के लिए, क्या MDO कॉन्ट्रैक्ट्स में वो बाइंडिंग है ना सर? वो ये क्वेश्चन मेरा था. बाइंडिंग तो है, अभी तक बाइंडिंग है. हमने तो उसको मंत्रालय से लिख के 10% के लिए भेजा था, बट रेवेन्यू शेयर मॉडल के लिए ज़रूरी नहीं है. ये हमने आप बात कर लीजिएगा इंटरनली. देयर इज इंटरनल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. बिकॉज अवार्ड क्राइटेरिया में तो कहीं नहीं आया है RFP में या कहीं भी सर. तो क्या सिर्फ वो पॉजिटिव NP भी आएगा तो अवार्ड वी विल अवार्ड दैट? पात्रो, आई थिंक रेवेन्यू शेयर में क्या क्राइटेरिया है? रेवेन्यू शेयर में क्राइटेरिया क्या है इवैल्यूएशन का? रेवेन्यू शेयर का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑन बेस्ड ऑफ NPV एंड H1 bidder. So there is no criteria for 12% IRR. No. Actually, आपका जो नॉर्मल MDO मोड है उसमें आप पर टन बेसिस पे लेते हैं. दैट एक्चुअल एस्पेक्ट अपॉन व्हिच यू डिटरमाइन, उसमें भी क्या आपका IRR कैलकुलेशन का प्रोसीड्योर है? नहीं है. आप सिर्फ उससे एक कोटेशन मांग रहा है पर टन बेसिस पे, और दैट इज़ योर डिटरमाइन करने का कि कौन प्रेफर्ड बिडर होगा. सिमिलरली इन केस ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, ये जो मेथोडोलॉजी है उसमें आप प्रेफर्ड बिडर को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद आपका वायबिलिटी आएगा या नहीं आएगा, दैट इज़ द सेकंड स्टेज, जो कि ना आप उसमें भी करते हैं
पर टन बेसिस में उसमें भी करते हैं. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो वायबिलिटी जब हम चेक करेंगे, ठीक है, प्रेफर्ड बिडर सेलेक्ट हो गया, देर आफ्टर जब वायबिलिटी अवार्ड के लिए हम जब जाएंगे, बिफोर दैट हमको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, बोर्ड या जिसके पास भी जाना होगा, तो वो तो पूछेंगे कि क्या आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, IRR क्या है. तो उस समय वो जो 12% का जो डेटम है वो तो हमको कंप्लाई करना होगा ना, अदरवाइज क्या एकदम करना होगा, एकदम करना होगा. दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज. ओके ओके, थैंक यू सर. विक्रम, यू आर मिसिंग वन पॉइंट. रेवेन्यू शेयरिंग में अगर तुम्हारा जीरो इन्वेस्टमेंट है तो IRR कैसे निकालोगे, जरा सोचना. नहीं, हमारा रेवेन्यू शेयर वाले में नहीं था सर. हम अदर देन रेवेन्यू शेयर के बारे में मेरा क्वेश्चन था. अदर देन रेवेन्यू शेयरिंग में सब में ये बाद में कैलकुलेट होता ही है. कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसमें बगैर 12% के अवार्ड हुआ. हाँ, रेवेन्यू शेयरिंग में नहीं होगा, बाकी सब में ऑलरेडी होता है. रेवेन्यू शेयर में हमारा कॉस्ट फ्लो भी तो नहीं है, रेवेन्यू कॉस्ट भी तो फ्लो क्योंकि नहीं हो रहा है. कॉस्ट ही जीरो है, इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो है, तो IRR आ नहीं सकता है कभी. MDO में तो इट इज ऑल सेट, ऑल सेटल्ड. एनी अदर क्वेश्चंस? सर, संजीव कुमार CMC से पूछा. एक मेरा क्वेश्चन है कि समटाइम्स वी आर गेटिंग नो बिड्स और समटाइम्स वी आर गेटिंग बिड्स विथ हायर percentage above our estimate, so that we can't award those contracts. Especially in CCL, Sangmitra, we have floated 4-5 times and we are not able to finalize that. So my question is that there are certain uncertainty involved on which the bidder is taking more risk cost, so that he's quoting more price. Like in Sangmitra, a number of PAPs is not available in the bid document, so they have to take the survey. Similarly, these contracts are going to last for more than 25 years. The demand of coal in coming years will remain the same, or there will be a further reduction of scope. They are also not very sure. So there are some problems of project financing in that aspect, that whether the project will be viable for such a long time or not. So all these risk factor, can we reduce it so that we get the competitive price? रिस्क फैक्टर कैन ओनली बी रिड्यूस बाय सर्टेनिटी. अगर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ है तो ये सर्वे CCL करा ले तो क्या दिक्कत है. इनफैक्ट इन मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स दिस अनसर्टेनिटी क्रिएट्स सच ए सिचुएशन. तो सच सिचुएशन कैन बी अटेंडेड बाय डूइंग अवे विद सच अनसर्टेनिटीज. रिगार्डिंग इवेल्युएशन में वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल. रेट and second thing is the justification, the financial viability depends upon the pricing of the coal also. So what we are considering is the notified price for the purpose. Now flexibility is already given in the NCDP. That flexibility should be availed and should be brought before the board for the appropriate decision. Thank you, sir. I would request you to please be on stage, and I would request our Director Technical Operations CCL Shri R.B. Prasad sir to please come on stage and felicitate sir with a token of appreciation for his valuable insights and sparing his valuable time. Request everyone to give a please give a big round of applause for sir. Thank you, sir. I would request everyone to please be seated. Now we are going to showcase a small video on the different activities at CCL, especially CSR. And I would request ENT Department CCL to please play that video. कोल इंडिया हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ये आप समझ के रखिए. और आने वाले
20-25 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए कोयला बहुत जरूरी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं. It is the most necessary for the electricity. Coal Indian companies, the subsidiaries, they have a long history of working in the states, eastern states and central states of India, and have a very good connect with the local people and the local communities. In my tours, my reviews, I have found that they have completely been honest in the task of keeping up the environment of the states they are working in. And I have no doubt that in the times to come, Coal India Limited will come out as a great promoter of environment, forestry and air quality of the regions that it is working in. Coal India Limited is the premier coal mining company in India. It is government-owned and headquartered in Kolkata. It is in fact the largest coal-producing company in the world. Coal India is a Maharatna public sector company, contributing 83% of the total coal production in India. Mining the coal in an ecologically sustainable way becomes very important. Coal India is trying to reduce its carbon footprint through automation, mechanization and digitization. In this context, we are trying to plant as many trees as possible, and actually in this year we have increased our target by 60% compared to the last year. We are venturing into solar power generation as well, and we expect that in next 3 years Coal India will be net zero carbon company. Central Coalfields Limited is one of the 7 coal producing subsidiaries headquartered in Ranchi, Jharkhand. It has 42 operational mines spread over 8 districts in Jharkhand. Some of the major mines are Amrapali, Ashok, Magad, North Orimari, Karo and North Karanpura, besides Rajrappa and AKK. Contrary to the popular perception that coal mining is detrimental to the environment, CCL is concentrating on several initiatives to preserve the environment and ensure inclusive development of project-affected areas. Land reclamation activities are integrated at the inception level itself. The mines are planned in such a way that backfilling operations start from 5th year onwards, and approximately 75% to 100% of overburden is backfilled in mined out voids. The external and internal dumps are also technically reclaimed through activities like leveling and overlaying of soil for its biological reclamation. In biological reclamation, mined out area and dumps are converted with plants. For this purpose, the services of State Forest Department of Jharkhand is used. As on date, more than 85 lakh saplings have been planted, covering an area of approximately 3,000 hectares. And 49 kilometers of avenue plantation or roadside plantation has been carried out. Significant example of avenue plantation can be found in North Karnapura and Rajrappa area. Kayakalp Vatika is being developed in Piparwar area of the company. This eco park is spread over an area of 1 hectare. Kayakalp Vatika initiative is an endeavor towards developing a mine reclamation model to reclaim and restore degraded mining land and to facilitate development of forest and wildlife habitats by letting nature heal through natural regeneration and succession.
The foundation of the Eco Park was laid in 2015 and it has been planned for expansion of additional 20 hectares. The reclaimed land has been undergoing a gradual change into a lush green land with increased soil moisture level and soil fertility, with grasses and shrubs coming over, with several trees growing over 10 feet. Slowly, the reclaimed land is getting converted into a rich biodiverse area. In the years to come, this area will grow into a forest with diverse habitats sustaining each other and developing into a self-sustainable ecosystem. The projects utilize mine water to the maximum extent possible for industrial and domestic requirement. All the open cast mines have oil and grease trap in workshops. Water treatment plants have been provided for supply of safe drinking water to employees. The washeries are operating on the principle of zero discharge. Water discharged from open cast mines and underground mines of CCL are used by local population and the CCL colonies for domestic and other purposes after proper treatment. An MOU signed on 30/10/2017 between Coal India Limited and the Government of Jharkhand for utilization of 25,250 million gallons of water. In the financial year 2020-21, CCL has granted 3 NOCs to Drinking Water and Sanitation Department of Jharkhand Government for utilization of mine water for community use. Provision of water sprinkling by mobile sprinklers is in all the open cast mines. At present, CCL has 61 mobile sprinklers. Majority of them are mist type of sprinklers which are technologically superior to normal sprinklers. The railway sidings of the company use varieties of techniques like fixed sprinklers, windscreens and a green belt to mitigate environmental pollution. Railway sidings also use continuous real-time PM10 analyzers for continuous monitoring of ambient air quality. Central Coalfields Limited is in the process of procuring continuous ambient air quality monitoring stations for all the areas of CCL. The company has developed the mine voids filled with water for promoting pisciculture. The objective is to improve the water quality through biological methods and consequently create a cost-effective method of income generation for the local community. More than 3 lakhs of fish seeds of katla and tilapia varieties have grown in the areas earmarked for pisciculture projects. CCL contributes to the national goal for renewable energy by installing rooftop solar power plants at its various project sites. CCL has distributed solar kits among the indigenous and vulnerable Birhor community. इसमें लाइट का बहुत दिक्कत था हमारे गांव में, तो 1500 सोलर पैनल के साथ पंखा और बैटरी और 2 बल्ब ग्रामीणों को दिया गया है। ये सारा काम सीसीएल द्वारा कराया गया है। ऐसे हम लोग पहले अंधार में रहते थे, अभी लेड और बैटरी मिला, सोलर मिला, पंखा मिला तो यूज करते हैं। जैसे कि पहले यहाँ नहीं था बना हुआ तो हम लोग बहुत दूर से पानी लाते थे, नहाने के लिए बहुत दूर नदी जाना पड़ता था। अभी यहाँ बना है तो थोड़ा आराम हुआ हम लोग को। पीने का भी पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, दिक्कत तो उस टाइम बहुत। अभी तो वैसा कुछ नहीं, भी आराम हो गया हम लोग को। The Sports Academy at Khelgaon, Ranchi was established in 2016
As a joint initiative of Central Coalfields Limited and the State Government of Jharkhand, this CSR initiative of CCL aims at lending wings to the dreams of the children of the state, nurturing them holistically so that they can scale great heights in the field of sports. At present, 437 sports cadets, about 96% of whom belong to the scheduled castes, scheduled tribes and other backward communities, are undergoing training. They have won 702 medals, including 87 medals in national championships. As a responsible corporate citizen, CCL has taken all measures to align corporate social responsibility with its approach towards sustainable development. Our social initiatives are focused on activities designed to improve community health, sanitation, skill development, as well as promotion of sports and games. The company endeavors to expand its CSR footprint in the communities that it serves and generate wider benefits for them. The company has spent over 480 crore rupees on CSR since April 2014. The success of projects like CCL ke Lal Ladli, Kaya Kalp Public School, etc. are testimony of the company's sincere efforts. Recently, Matul Baghel, a student of our flagship scheme, CCL ke Lal, has joined Coal India as a mining engineer. Multiple skill development training activities are also organized by the company throughout its operational areas for the benefit of the community. CCL provides vocational training to individuals in the region for their skill development. It is focused on self-empowerment of the local community. Modern mining technology is deployed by the Central Coalfields Limited to ensure sustainable mining. This ensures productivity, prevents wastage and makes mining operations safe without compromising the share of future generations. The introduction of surface miners for coal mining instead of shovel dumper system is significant. Surface miners have minimized the need of drilling, blasting and crushing of coal. The company has undertaken 4 first-mile connectivity projects to replace the existing road transport between pit heads and dispatch points and to switch over to seamless mechanized coal transport system through conveyor belts, which is a covered system for movement of coal, reducing the dust pollution. Besides corporate governance, one thing is we have to have a social responsibility. We have to take all the stakeholders in confidence. We have to see their livelihood, their development as an index we have to monitor. The surrounding areas, if we grow with us, then it will be a fruitful thing. A lot has to be contributed from this coal industry, Coal India in particular, as we being plus 83-84% coal production. So we will take all the possible steps and we will ensure that CCL from this Jharkhand will be a role model in the country in the best practices of environment we will ensure. Central Coalfield Limited, as part of Coal India Limited, is trying its utmost to carry out its mining operations in a sustainable manner. It is giving top priority to inclusive growth, environment conservation, and to self-empowerment of all the stakeholders. Thank you everyone for being a very patient, interactive and an inquisitive audience. With this, let us break for lunch and rest of the sessions will resume post lunch
Hence, I would request everyone to please be seated inside the auditorium by 2:30 p.m. to enable us to start the next session in time. Thank you.
As we are approaching the resumption of the post-lunch session, I would request the organizing committee to please mobilize the gathering outside and assemble everyone in the auditorium. I request everyone to kindly occupy their seats and make themselves comfortable. Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to the post-lunch session. I hope everyone is rejuvenated after the delicious lunch. So post-lunch, we have our first speaker, Shri Briya Reddy sir, ex-CMD SECL, and he'll be giving insights on operationalization of MDO contracts. So kindly sir, grace us with your presence. Good afternoon to everybody. First I want to declare the disclaimer. I am the unprepared speaker, so you have to bear with me. And I am not expert on the subject also. First of all, I want to appreciate, rather record my appreciation, कि 6 months they could conclude the MDO contract. I want to share a small my
experience with MDO. During 2014-15, sometime I was discussing with by the time I became director, I was discussing N. Kumar Saab and his associate team, सर इसको हम MDO में क्यों नहीं जा सकते? अरे गलती से भी वो वर्ड मत लेना, वो बड़ा डेंजरस वर्ड है. तो दैट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम, एज राणा साहब वाज राइटली सेलिंग. वहाँ से लेकर द जर्नी वाज डेफिनेटली, इट वाज वेरी learning experience for many people, and ultimately the contract, the document has been concluded and it has been tendered, and a few contracts have been concluded. That is really a good part. The second part is, it is again very important for us to think at this stage, some contracts could not be concluded, as somebody was expressing their concern कि nobody is participating in those tenders. So there definitely there is some more reiterations, some more research is required in this document, so that many people participate in that particular tenders. I will not go deal much with that subject. Now the tenders have been already concluded, the agreements have been signed. Now the MDOs, they are operating these tenders. तो before that हम आपको एक छोटा सा रिलेशन समझाना चाहते हैं, जो मेरे को समझ में आया, पता नहीं कितना सही है गलत है, आप लोग समझ लीजिए. अभी तक हम लोगों का कल्चर था कि 3 साल 5 साल का टेंडर करने का, वो एक लिव इन रिलेशनशिप था, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दैट इज सब्सिडरी एंड कॉन्ट्रैक्टर. वी यूज टू लिव विद इन ए लिव इन रिलेशनशिप. पसंद आया तो कंटिन्यू किया, नहीं पसंद आया 3 साल के बाद छोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था. बट ये जो टेंडर है ये अरेंज मैरिज है, इसको 25 साल तक झेलना ही पड़ेगा. अगर गलती से कोई चाहेगा डाइवर्स ले लूँ, उसका एलिमनी बहुत हेवी है. तो इसीलिए लोग सोच समझ के ये जर्नी को आगे बढ़ाना पड़ता है. डॉक्यूमेंट में इसके बारे में जिक्र किया, शायद हो सकता है इसने कोई इतना ध्यान से उस सेंटेंस को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा. तो कंडीशंस प्रेसिडेंट में नीचे और एक जगह में भैया दोनों, बोथ अथॉरिटी एज वेल एज MDO, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ना, यही चीज़ हमको शादी के समय समझाता, भैया एक दूसरे को समझ के आप लोग अपना ज़िंदगी गुजारिए. ये चीज़ डॉक्यूमेंट में भी मतलब बताया गया है, बट इट इज़ ए subjective statement, it is not an objective statement. So now I will come to just want to share a few ideas regarding the operational of MDO contracts. देखिए MDO contract बहुत मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड सब प्लान है. अगर आप एक अदरवाइज उसको सोचना चालू कीजिए, माइनिंग प्लान अप्रूव्ड बाई हम लोग बताते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारा है, एस्टिमेटेड सो कॉल्ड कैपिटल सब कुछ डिसाइड बाई सब्सिडरी. मतलब they have fixed the boundaries, within the boundaries he has to quote the price and he has to implement the tender. During the process and finalization of the tender, the issue is how to evaluate the tender. Presently MDO tenders we are evaluating as we used to get our project reports approved. Once the rate is given, that rate then we take what is the estimated so called estimated cost department, MDO cost should be there by CMPDIL, and though there is no any specific stipulation, we still feel if it is more than 10%, normally we do not go ahead of that tender. Then again 12% IRR it has to come. These are the two criteria, knowingly unknowingly we are following, and that is the guideline as on today. So now the question comes, when that rate has been given, is there any way to achieve that? One or two observations what I, with little knowledge of my finance, कि this IRR depends on the cash outflow as well as cash inflow. In most of the cases, especially for land, our cash outflow in PRs we show in 3 years only, whereas that amount will not be sent for next 10 years. That we know. Naturally in the initial years the cash flow is very heavy, outflow shown in the while calculating the IRR. I don't know if it really has got some impact on that IRR of 12%. It has to be considered, can it be further spread, because practically it is not spent. If it has got any effect, if it does not have any effect, I don't have any issue. That has to be considered. Second, as it was explained, the first we will come to land.
land, it is specifically mentioned ki up to section 11 of CBI Act and relevant act, that will be done by the subsidiary. Then the MDO has to take the physical position of the land, and the documented and direct cost that is involved will be reimbursed to the bidder within 1 month, or some clause is there accepted by the competent authority. But recently, in if I am not wrong, in some tenders which were in ECL, that clause also slightly modified, that management will directly pay the cost. Now we will come to the details of it. Okay, as per the first part is, it is only legal process, anybody will do that. Maybe within 1 year or 2 years, the subsidiary will give the notification, section 11 will be completed. For taking the physical position, why we are going for MDO? Because we were not able to manage the big some of the big projects, especially in the land issue. So we want to ease out. So MDO should be aware exactly what is that taking the physical position. Nowhere in the document or anywhere it is mentioned exactly what is going to be the R&R plan. At least I know 5 subsidiaries: CCL, ECL, BCCL, MCL and SCCL. In all 5 subsidiaries, the process of land taking the physical position as an R&R are entirely different. If anybody has got the experience of dealing with these subjects, they can understand. My knowledge of taking the physical position in CCL, that was not at all useful when I went to ECL. Then I thought I am already become expert. When I went to SCCL, I learned new things. So in these documents, it is very much necessary for the subsidiaries to, while before floating the tender, they should have an annexure. What is the R&R, model R&R? I am not telling any specific model R&R plan they have to implement. With that, the bidder will have an assessment exactly what I am going to required to be spent. What we write in that? You have to do R&R as per the applicable laws. That is the statement that is written in the document. It is a very vague and this thing. You specifically write ki you have to implement LAR Act, but you cannot write exactly, because that is not implemented across all the subsidiaries of Coal India, though it is mandatory. In CCL, we are having our own plan of 2012 policy, we are doing that. If you go to ECL, their land is mostly taken by direct purchase, not even CBI Act, especially in West Bengal, not even LAR Act. LAR Act they don't accept, so they go for outright purchase. So these variants are there. What I personally feel as a part of a suggestion, it may be noted, detailed R&R plan of the particular project which is going to be implemented, it should be there as a part of the document. So the whatever the amount direct or this thing that will be given to the bidder, he can roughly assess. Rest of these things he can factorize in his price. First part. Second part, as somebody was discussing regarding Sangamitra. So it is what information we are giving in some of the documents. We are giving the census figures of 2011 and we are tendering 2022. So whatever the MDO tenders that are going to come, I think CCL and the subsidiaries also, this information you can as well, you can appoint an agency. The state DC has got listed agencies. They will award the work. They will do the social economic survey. You publish the social economic survey in the document only with a rider. By this is only indicative. You have your own assessment. So that will give a fairly good idea for the bidder how to assess his R&R cost. These 2 things are most important. Third point, see, we have given the mining plan, but when you are going for a FC and EC is not always strictly as per your mining plan. There will be variation in the conditions. That conditions may have impact on the expenditure. In
a document, somewhere I think it is written, if whatever is the EC he has to implement. Suppose if it changes the scope of the work. In scope of the work, I think it is not clarified. If there are changes in the EC conditions, that will also be considered as a part of change of scope of work. If it is already there, it is okay, but I am doubtful. Why I did not read that it has to be, if it is not there, I think it requires. Later on, any statutory permissions, if they impose any extra conditions, we have written definitely when there is a change of law. Whether it will be considered as a change of law or not, I am not clear. So that the GMCMCs or with CMPDL, you can get it clarified. Otherwise, it has to be specifically mentioned. That is also very much required in the scope of the work. Third, in one particular, in our coal policy, that is sales policy, we have got different modes of marketing the coal. Whereas in evaluation, we are taking only the notified price. Just to facilitate the subsidiaries, Ministry has issued a circular. You may consider non-coal price, you may consider import substitution price, all these things also you may consider. But the discretion is left to subsidiaries. But I am doubtful any subsidiaries will they be able to take any decision on that. Though SSL has taken two proposals on the same line by considering. Is it possible, I don't know, it is a very wild thought I am throwing. Is it possible, once we get the price, can we have a sort of a FSA, the person who is willing to pay us that price and have that 12% IRR or whatever the rate? If it is possible, say for example, I will give the basic example which is already available. In ECL in Rajmahal, there is a system, NTPC pays add-on price of about 450 rupees. Suppose there is a tender in ECL and that tender is not coming under 12% IRR, is it possible for the company to have talk with the NTPC, by if you increase my add-on price to this extent, we will be able to give coal to this one. If you think there are multiple users, there can be multiple users. I think most of the people must be knowing Shakti scheme. It is an entirely new concept. Similar type of concept, I know the price, I know my tender how it will become more than 12%. Is it possible to devise a scheme? Offer will be given to the powerhouses at this price, notified plus this one. If you have a MOU with us or if you have FSA with us, this coal will be supplied to us. So some of the projects which are appearing to be unviable or not able to pass our test of evaluation and viability, can we think of such alternative method where we can extend that coal at a higher price? Earlier there was a system in WCL, presently I do not know what is the idea. So that they can do. And regarding the very high, of course it is a very, the total structure they cannot change in the document. The bidders what, they are not, when we interact with them, presently the MDO tenders are being processed at NTPC, at DVC, at WPDCL, even at Neyveli and Coal India. I am just in, because it is our in-house discussion, somehow the feedback which I am getting at least, because now I am not in the chair, so people freely talk to us, they are not comfortable with us. They are not comfortable with our operation of MDO contracts. The reason is what they say, sir, you people are strictly comma, full stop, underline, dash. You do not deviate from that from your document. Whereas if you take an issue with the top management of those other companies, they take, including Singareni, they take appropriate decision. So far as we have got that confidence level that if it is not, this particular clause is required to be modified, it can be modified. But in our system, it is not there. But if you had in the beginning, right from Chairman Sir and DTCL and respective committees, there is a change in their thinking. But now we have to change.
if you are finding any difficulty in the operation of any of the clauses or anything, I think we should take it to their knowledge so that they can take the decision, and these contract that 15 which may extend to even 2025, they can be easily concluded and it can be operationalized. One more, of course there is no provision in the, there is provision in the document, but it is not specified. I personally feel at least at the level of director in each subsidiary, the MDO contracts are to be rigorously monitored. In the last 6 months or after the award of this contract, still people are indifferent towards, I am sorry to state this and this is the fact, still our persons, our officers are indifferent to MDO contracts. They are just thinking, no, it is not our baby, wo contractor ka hai. So that thinking, if it has to be changed, as we are regularly monitoring our own mines, that is departmental mines, similarly MDO is also our own mines, at least at director level, it has to be rigorously monitored, and different activities, what are the delays, where we have to make the changes, where we have to help the MDO, then they will come into production at the earliest possible. Thank you very much. I want to say just only few views. Thank you, sir. Thank you for sharing the insights and all the nitty-gritties of operationalization of MDO contracts. Now the house is open for discussion. If anyone has questions, kindly pitch them. Okay, as we don't have a question from the audience, let's move forward. I would like to request, sir, please. Sir, please. I would like to request R.V. Prasad sir, Director Technical Operations CCL, to kindly facilitate. We are ready, sir, with a memento. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो दो ही चीज़ संभव है, जितना हमने समझा दिया लोगों को पूरा समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया. Moving further, we have a team from CMPDIL who will be throwing light on different clauses and their implications on the finalization of MDO contracts. So it will be a participative session. So I request Patra sir and his team to kindly address the next session. Good afternoon, all the dignitaries, seniors and colleagues. From the morning, we have heard a lot of things. And now as CMPDI prepares the model document and time to time revisions are being carried out in CMPDI itself before competent approval. So we will be giving the details of all the clauses, both open cast and underground mines. So at the beginning, I will like to say a few words and then I will hand over for details to my colleagues. First of all, we prepare a model document for separately for open cast, underground and discontinued mines. And these model documents are to be customized for each and every project when you go for MDO operation. There are few things that we
tend to overlook in our model document. Some instructions are given on the very first page of our RFB document, model RFB document. This says that there is something which is given in curly bracket. These things are to be retained as it is while customization. No changes are to be made, and that part is to be filled up by the bidder itself. Second, there are certain things which are marked with asterisks. Project specific data are to be filled while customizing the model bid document. And third, there is something given within square bracket. For example, the escalation clause. The percentage of escalation on different heads are given in square bracket. So during the period in the time of customization of each project, project specific escalation part for each and every items is to be filled up. Generally, where we fail to do customization properly in this aspect, we tend to forget to change this part, and problem creates during evaluation of our project. So these are the very few basic things that we need to understand and carry out during customization of our model documents for project specific NIT preparation. With this, I will hand over to my colleague Mr. Dheeraj Chaudhary, who will be elaborating the clauses one by one. So Dheeraj. Good afternoon, everyone. Actually, our presentation is limited to for opencast and underground document. So we will move each slide wise, and since it is a participative session, so we expect from you all to intervene me anytime, and if you have any question or any queries, you can ask anytime. So next slide. Since it is a development and operation by MDO for 25 years, so since our document is based on our approved project report, and we already take the estimated project cost from our project report, and estimated project cost is capital on the head of MDO operators, and we have already decided that what is the peak capacity and what will be the bid security. We already mentioned in our document. And one thing you must know that in this document, since it is a MDO document for virgin mines, and we have already approved project report, and we decide everything in this, and while tendering we enclose our abridged PR report, so that what is the technology and what is the estimated project cost and what will be the production program, it is already mentioned in the document. So MDOs has to maintain that annual production program, and accordingly our contract progresses. So it will be single stage 2-part bidding process, and there is no reverse bidding in this our tender. So there is a part 1 and cover 1 and part 2
cover 2. And part 1 mainly we have techno-commercial evaluation we do, and in part 2 there is a mining charge per ton, it is mentioned by the bidders, and after the completion of techno-commercial acceptable bidders, we open the price bid for the successful techno-commercial bidders who have already qualified in the part 1 process. Next. Technical capacity we mentioned in our document. For open cast, it is 50% of the maximum annual production handling requirement, or 25 million cubic meter from either coal, lignite, iron, bauxite, manganese, copper. So whichever will be less. So during it is mentioned that it can be done from the maximum 5 open cast mines, and for that purpose specific gravity is mentioned. So this is the qualification for open cast. Next. For underground mines we have 2 type of qualification. One is for mass production technology using continuous miners. For that we have mentioned that 50% of maximum annual coal production requirement, or 0.3 million ton, whichever is less. And if there is a long wall experience, then we will take experience qualifying period will be for 10 years, and 50% of maximum annual coal production, or 0.5 million ton, whichever is less. So since it is a participative session, so I will expect if you have any queries in technical requirement. Huh. This one. हाँ, आज एट दिस स्टेज अभी हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर अब कोई सजेशंस होगा तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अभी एट दिस स्टेज तो नहीं होगा, क्योंकि जो मेंशन किया हुआ है वही एज पर डॉक्यूमेंट यही है. हाँ, तो if there is any suggestions, it is always welcome. तो अगर वो कोई माइनिंग ऑपरेशंस किया हुआ मान लीजिए डोलोमाइट का या सैंड का, तो उसका इसमें कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा? अभी तो नहीं होगा. तो इसको नोट किया जाए, क्या ये करना उचित है या नहीं है? आप अपने बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसलिए तो हम लोग इसको पार्टिसिपेटिव रखे हैं. आपका कोई सजेशंस है तो उसको हम लोग जरूर इसको लाएंगे. Yes, one suggestion was there from chromite mine owners. So we can consider in, but it is competent approval is needed for that. So आप इसको सजेशन में दीजिएगा अभी नेक्स्ट सेशन में. नेक्स्ट. हाँ, इसमें फाइनेंशियल कैपेसिटी में हमारा 2 फैक्टर्स है. वन इज़ नेटवर्थ फॉर ओपन कास्ट, और एक मैक्सिमम मिनिमम एवरेज टोटल इनकम. तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया है इसमें ओपन कास्ट माइन के लिए 10% ऑफ एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कैप्ड एट 500 करोड़, ये नेटवर्थ रहेगा. और फॉर अंडरग्राउंड माइंस it has not been amended. It is as it is rupees 100 crore or 10% of estimated project cost capped at 500 crore, whichever is higher. And for minimum average total income, it will be chosen during the 3 financial year, chosen from 4 immediately completed consecutive financial year, and it will be 30% of the estimated project cost.
धीरज साहब. हाँ सर. Just one response to what they had asked for, why not other minerals. Your point is very well taken. The idea when we had selected these minerals were that these are mostly bulk minerals. हमारी quantity और estimation, या हमारे जो हमारा quantum of work होगा, that will be very high. और बहुत छोटी छोटी माइंस जो कि few thousand tons वाला चलता है या फिर lakh tons वाला रहता है, you can include it, but the idea is कि हमारी माइंस जब हम 20, 25, 30, 40 मिलियन क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं, तो normally we would like to restrict ourselves to bulk minerals. अगर आप हम डायमंड्स की बात कर रहे हैं या कुछ और की बात कर रहे हैं, वहाँ पर द टनेजेस आर एक्चुअली इन लैक टन्स, सो दैट वुड नॉट रियली मेक, और हमको एनलिस्टमेंट में 100 मिनरल्स आ जाएंगे या 50 मिनरल्स आ जाएंगे. सो द आइडिया इज टू गो फॉर बल्क मिनरल्स. ग्रीड है, लेकिन फिर वो छोटा छोटा करके अगर आपको देना शुरू कर देगा, और उन मिनरल्स में आज के डेट पे हमको वैसे वॉल्यूम्स मिल भी नहीं रहे हैं, डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है. हम ज़बरदस्ती अपना कंप्यूटेशंस को और ये कॉम्प्लेक्स कर देंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू देयर इज एनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम इन एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट and assessed project cost, we can go ahead. Performance security is 5% of the estimated project cost, and it has to be paid by the MDO within 90 days or any extended period by the authority, and it has to be kept in a revolving period within 3 years. Any question? Yes. पिछले स्लाइड का क्वेश्चन है, जो हम लोग एसेस्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट में 75% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट रखे हैं, तो वो क्या कस्टमाइजेशन के समय उसको 75 की जगह 95 कर सकते हैं क्या? यस, दैट इज़ वाई हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हैं. कोई भी प्रोविज़न जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो सब्सिडियरी अपने वो टेंडर के पहले उसको अमेंड कर सकता है. सर, तो ये 75% रखने के पीछे क्या लॉजिक है? या एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, हम लोग एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट तो बीडर्स के ऊपर है. ये जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है, दैट इज एस्टिमेटेड बाय द अथॉरिटी. बीडर्स के ऊपर क्या कॉस्ट आएगा, दैट इज एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट. धीरज साहब, आई कैन जस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट. हाँ सर. जब हम एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट करते हैं, तो हम जो स्कोप ऑफ वर्क एमडीओ का है उसकी एक कॉस्ट का एस्टिमेट करते हैं इन्वेस्टमेंट टर्म्स में, और वो लार्जली गाइडेड रहता है हमारे नॉर्मेटिव एंड प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस से. अब ये हो सकता है कि वो जो एमडीओ है वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण या फिर जो वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहता है, आप 150 करोड़ की कॉलोनी बनाएंगे, वो हो सकता है 70 करोड़ की कॉलोनी में काम चल जाए. आप डबल लेयर सर्किट कोई चीज़ का देंगे, वो सिंगल लेयर में काम कर सकता है. वो जो इक्विपमेंट लाएगा वो आपसे 15-20% कम ला सकता है. सो वो अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या एसेट एफिशिएंसी अगर लाता है थ्रू रिड्यूस्ड कॉस्ट, इसीलिए ये प्रोविजन दिया गया है. और इसका एक एस्टिमेट करके आप उसको वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं थोड़ी सी, कि वो अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, असेस्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी उसकी. Sir, my question is, 75% can be reduced to any extent, or there is some limit? No, there is a limit. Actually 75% ये रखा गया है, और सब्सिडी चाहे तो कुछ प्लस माइनस कर सकती है, लेकिन ये आपको तो देखना होगा कि एमडीओ को मिनिमम कितना देना है. और इसका इफेक्ट एसपीबी फॉर्मेशन के लिए है एक्चुअल में सर. जो एसएस प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका यूज़ एसपीबी जब फॉर्मेशन होता है उस समय जो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है वो हमको उसी से डिटरमिन करना है. जैसे अभी ओपन कास्ट में 10% ऑफ एसएस प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल रखना है एसपीबी का. एसएस प्रोजेक्ट कॉस्ट का यूज़ सिर्फ एसपीबी फॉर्मेशन में मेनली हम लोग यूज़ करते हैं. तो एसपीबी फॉर्मेशन के लिए, कैपिटल के लिए एमडीओ चूँकि उनको पता है कि हमको कितना कैपिटल चाहिए, तो वो कुछ हम लोग इस हिसाब से उसको रखे हैं. ये नहीं कि आप उसको 50% कर दें, वो नहीं है. मतलब 75 से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग ने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है. नहीं, और हाँ, ये एक्चुअली ये है 75% जो है
वंस यहाँ आने के बाद सब्सिडरी अपना अलग से कोई असेसमेंट का उसका एक मैकेनिज्म नहीं है, तो अलग से वो अपना चेंज नहीं कर सकता, कोई करेगा नहीं, वो ब्रैकेट में रखिए या नहीं रखिए। बट समस्या ये है कि जब हम बिड डॉक्यूमेंट में 25% जो है इसको दे दिए, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए दे रहे कोल वो भी, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट भी अलाउ किए हुए हैं। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर अपना चाहे तो कितना भी कम कर सकता, कॉलोनी वगैरह में भी जो अपना कम कर सकता वो अलग है, इट मे गो लेस देन 50% ऑल्सो। इसीलिए इसको जो है इसका फ्लेक्सिबिलिटी का एक मैकेनिज्म हमको देखना होगा। तो 75% जो कोट करते हैं, दूसरा इसका एसपीवी का ऊपर आता है, हमारा एसपीवी भी जो है वो भी एक इश्यू है, क्योंकि आइडल कैपिटल है, आइडल कैपिटल उसमें पड़े रहता है। हम 75% में करके अगर उसको 100 इवन 200 करोड़ भी आइडलिंग में डालना होगा 100, मतलब वो क्यों करेगा, कोई भी बिजनेसमैन नहीं करेगा। इसीलिए राइट, ये हम लोग सजेशंस में दे सकते हैं, ये सजेशंस में हम लोग रख सकते हैं। एज पर डॉक्यूमेंट वी आर डिस्कसिंग द provisions as per document, and if there is you need any modification, we can you can give it in your suggestions. और ये जो है मेनली एसएस प्रोजेक्ट कॉस्ट का हम लोग जब एसपीवी फॉर्मेशन होता है उस समय हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और वो 10% ऑफ द एसएस प्रोजेक्ट कॉस्ट आज के डेट में वो ओपन कास्ट के लिए है, और 15% एसएस प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको समझना बिल्डिंग प्रोसेस। धीरज साहब एक चीज़ और इसमें और बोलूँगा, जो मंशा है 75% है, इट कैन चेंज टू एनी लेवल बिकॉज इट इज़ इन द स्क्वायर ब्रैकेट। वो आप 50 कर सकते हैं, 40 करते हैं, 20 कर सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन एक एमडीओ का जब द वेरी बेसिस ऑफ सिलेक्टिंग अ एमडीओ इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट, अगर आपने सोचा हुआ 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एमडीओ का, तो अगर वो 400 करोड़ या 500 करोड़ का 400 साढ़े 400 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएगा तो फिर उसका लॉन्ग टर्म स्टेक रहा कहाँ? फिर तो टेक्निकली आप बोल दीजिए कि वो पूरा का पूरा एक वेट लीजिंग या ड्राई लीजिंग कंसेप्ट पे पूरी की पूरी खदान चला सकता है विदाउट पुटिंग एनी मनी फ्रॉम देयर पॉकेट। तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म वाला जब स्टेक तभी बिल्ड होता है जब एक कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट जाती है। सो इट इज़ विद दैट थॉट इट वॉज डन। बट वॉट यू आर सेइंग इज के कल को बिजनेस मॉडल्स चेंज होते रहेंगे, then you'll have to relook into these type of things कि उसको आप कितना लो लेवल पे ला सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हर साल आपको 1000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है या टर्नओवर आ रहा है, उसमें अगर और 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप 400 करोड़ भी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका स्टेक क्या रहेगा? सर ये सवाल ये नहीं है जी, इसमें जैसे हमारा जो एमडीओ का जो मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है हम इक्विपमेंट में है, उसका इक्विपमेंट में मैक्सिमम चले जा रहा है। तो इक्विपमेंट जब हम हायरिंग के लिए अलाउ ही कर दिए 25%, अपार्ट फ्रॉम लीजिंग के लिए दिए हैं और बाकी जगह में भी वो अपना कर सकता है, तो इट इज़ एज पर अवर बिड डॉक्यूमेंट। और दूसरा हमारा पर्पस जो है कोल वो भी एक्सट्रैक्शन और स्मूथ रनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और हम क्यों उसका पीछे पड़े कि ये इसका पैसा डालना ही होगा कि इसको लॉन्ग टर्म उसका स्टेक रहना चाहिए। स्टेक तो उसका कोल वो भी प्रोडक्शन में, उसमें बाकी में नहीं है। हमारा स्टेक जो है उसमें है, वो कितना कैपिटल डाल रहा नहीं डाल रहा उसमें नहीं है। तो हम अपना अप्रहेंशन जो है कि कहीं बीच में छोड़ देगा, कहीं कॉन्ट्रैक्ट का ये होगा, तो वो हम ये अप्रहेंशंस को हम उसका क्रेडिबिलिटी में हम ले ही रहे, उसका फाइनेंशियल टर्नओवर कितना है, वो क्रेडिबिलिटी में हम कितना एक्सपीरियंस है, ये सब क्रेडिबिलिटी लेके उसको जब बिड अवार्ड कर रहे हैं, तो बाकी हम उस पार्ट में हमें जाने का कोई मुझे औचित्य नहीं लगता। नहीं, योर पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन। मैं बोल रहा हूँ कि कल को बिजनेस मॉडल्स में अगर कुछ चेंज आएगी उस तरह से इट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट एज ऑफ टुडे इवन 25% सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो अलाउ किए हैं वो भी एक फैसिलिटेशन के लिए है। दैट डजंट बिकम कि आप डे 1 से 25% आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही प्लान कर लीजिए, तब तो हम ही 4 आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट करके खदान चला लेंगे। वाई इन्वॉल्व एमडीओ? द आइडिया ऑफ पुटिंग अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्लॉज इज दैट टुमारो, कल को अगर आपको फॉर सम रीज़न अगर आप नहीं कर पाते हो या अगर आपको 10% एक्स्ट्रा करना पड़ गया तो आपको एक एवेन्यू दिया गया है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पर काम कर लीजिए। बट इफ़ यू थिंक दैट डे 1 आई एम डिजाइनिंग माई माइंड विद 25% कॉन्ट्रैक्टिंग, तो कंपनी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट विद 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 25% कॉन्ट्रैक्टिंग। सो एमडीओ को थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा सीरियसनेस लाने के लिए किया गया। बट योर पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन। और ये एमडीओ के लिए भी ये अच्छा रहेगा कि उनके पास कैपिटल अवेलेबल है। मान लीजिए वो सारा चीज़ लीज आउट कर दें,
सब कॉन्ट्रैक्टिंग में चले जाएं तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कहीं ऑपरेशन करना बाद में। नहीं हम तो ये उनके लिए भी ये सुविधा है कि उनके पास हमेशा कैपिटल अवेलेबल रहेगा। नहीं ये लॉन्ग टर्म सोच के ये किया गया था। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस जो हम है हम उसी बात कर, हम एक साइड में अलाउ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये दो चीज़, एक साइड में हम अलाउ कर रहे हैं उसका कैपिटल रिड्यूस करने के लिए हम बिड डॉक्यूमेंट ही अलाउ कर रहे हैं, और दूसरा साइड हम बोलेंगे कि तुम्हारा ये रिस्ट्रिक्शन है, इससे तुम नीचे एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है, इसीलिए इसको हमको रीलुक करना होगा। ठीक है, इसको हम लोग सजेशंस में लिया बिडर्स का कई बार सजेशन भी आ चुका है, तो लोग उनका ये था, और कई जगह कहीं पब्लिक पीपीपी मॉडल में ये चलता भी है, लोग उसको अपना लेता करता, लीजिंग करता, अपना कैपिटल को कम करता, रिस्क, क्योंकि हर एक बिजनेस मॉडल में लोग चाहते हैं अपना रिस्क को कम करे, वो तो रिस्क कम करने के लिए चाह रहा। ठीक है, इसको आप सजेशंस में इसको आगे बढ़ाएं। डिस्कशन की बात है तो ये लेट अस डिस्कस, ये हमारा उद्देश्य उसको रिस्क का करना बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली चलना है, कंपटीशन बढ़ना है। देखिए अभी जितना बिड्स है क्या कंपटीशन है, कंपटीशन तो बहुत कम हो रहा, तो इसको भी देखना होगा, कंपटीशन नहीं, अगर 4 आदमी सिर्फ टोटल आएगा 4 एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा, 5वां कोई लेने वाला ही नहीं है हमारा पास, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ऐसा सेट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे सक्सेसफुल होगा, इसीलिए हमको उस हिसाब से सोचना ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी इसको लेते हुए हमको आगे देखना हो। बिल्कुल, हम लोग हमेशा ओपन है, इसको हमेशा अमेंड, अगर स्कोप जब अमेंडमेंट का होगा तो हम लोग करने के लिए इसको तैयार हैं, और अगर सजेशंस आप अपना रखिए इसमें। कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? फ्रॉम CCL CNC डिपार्टमेंट। ओके, इसको एक बार समझ लेते हैं। बिडिंग प्रोसेस अथॉरिटी और एमडीओ के बीच में जो हमारा ये है, लेटर ऑफ अवार्ड के बाद। हेलो, हमको एक क्वेश्चन करना है। हाँ सर प्लीज़। ये जब LOI इशू हो जाता है सर, और उसके बाद एग्रीमेंट हम लोग करते हैं, इसके बीच में बिडर्स को जनरली एक, अगर जेबी है या कंसोर्टियम है तो उसको एक 1% एडिशनल सिक्योरिटी है, फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, फिर एक SPB फॉर्मेशन हुआ उसमें 10% इक्विटी है। ये पीरियड जो है ये 90 डेज रहता है। वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं सर, ये डिपेंड करेगा। वो आप उसमें, लेकिन आपको टेंडर के पहले वो आपको मेंशन कर देना होगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है रखा हुआ है 90 डेज और एनी अदर पीरियड एक्सटेंडेड बाय द अथॉरिटी, वो प्रोविज़न दिया हुआ है। नहीं ये ठीक है, वो एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारा ये करना है कि वो तो फिर भी एक्सटेंड करेंगे, फिर भी एग्रीमेंट के पहले ही करना होगा। यस सर। हाँ, तो ये जो SPB जो है ठीक है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और एडिशनल सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन SPB का जो है, जो ये 10% ऑफ द इक्विटी है, आई थिंक दैट शुड बी एक्सटेंडेड टू द अपॉइंटेड डेट, सो दैट कि एक बीडर्स को थोड़ा सा ये टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये सब कुछ उतना फाइनेंसिंग करना और ये करना, और फिर उसमें एक जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्चुअली सर टेंडर होता है, ये इसलिए रखा गया था सर, एक्सक्यूज़ मी, ये इसलिए रखा गया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द, जैसे ही अवार्ड होगा तो लैंड पहले जो हमारा, अभी तो लैंड हम लोग लैंड कॉस्ट डायरेक्ट जो लैंड ओनर को देंगे, लेकिन पहले हम लोग रिम्बर्स कर रहे थे, तो लैंड का तो स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे एग्रीमेंट हुआ उसके बाद तो एमडीओ का रोल स्टार्ट हो जा रहा था, तो उनके पास कैपिटल नहीं रहेगा, तो फिर लैंड परचेज करना था, ECFC के लिए सारा पैसा उनको लगाना है, हम इनको खाली रिम्बर्स कर रहे थे, तो इसलिए रखा गया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्रीमेंट जो है उनके पास कैपिटल रहे, और वो ताकि वो फर्दर वो अपने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दें। ये पर्पस ये था, और ये सजेशंस में हम लोग रख सकते हैं कि उसको अपॉइंटेड डेट के बाद आपका ये सजेशन है सर। यस, ठीक है सर, इसको हम लोग थैंक यू रखते हैं। तो इसमें साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट के बाद जो है हमारा कंडीशन प्रेसिडेंट होता है, और ये दोनों पार्ट में अथॉरिटी और इसका होने के बाद हम लोग का एक अपॉइंटेड डेट आता है, और वहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुरू होता है।
और फिर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, और डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट आता है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करेंगे। और ऑपरेशन कंडीशन प्रेसिडेंट तो हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? कंडीशन एक कंडीशन प्रेसिडेंट वाला देखो। इसमें अभी जो है वो माइन ऑपरेटर को, एमडीओ को एक प्योर एजेंट की तरह काम करना है। जैसे फिजिकल पोजीशन ऑफ लैंड उनको करना है। अभी लैंड कॉस्ट हम लोग उनको रिम्बर्स नहीं करके डायरेक्ट जो लैंड ऑनर को देंगे, लेकिन ईसी और एफसी के लिए एज ए प्योर एजेंट काम करेंगे। उनका जो डॉक्यूमेंटेड और जो भी कॉस्ट होगा वो हम लोग रिम्बर्स करेंगे उनको इन्वेस्ट उन्हीं को करना है। और इसमें कोई क्वेश्चन है सर? ईसी एंड एफसी में आपका पब्लिक हियरिंग क्या हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्या? बेसलाइन डेटा पब्लिक हियरिंग अथॉरिटी का भी उसमें रोल रहेगा सर। हाँ। लेकिन आपका कंबाइंड रोल है उसमें। हाँ, वो अरेंजमेंट अथॉरिटी करेगी, लेकिन आप उसमें आपका रोल तो रहेगा ही रहेगा। तो बेसलाइन डेटा कौन करेगा, कौन कलेक्ट करेगा? मतलब उसको कौन कलेक्ट करेगा, कौन उसको कंपाइल करेगा? वो तो एमडीओ को ही करना है उसमें। मतलब उसमें कन्फ्यूजन है हम लोग का कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉर में आप लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली आप लोग जस्ट ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं। बस सर। हाँ, वो एप्लीकेशन ही सबमिट कर रहे हैं बस। हाँ, उसके बाद सारा आपको एमडीओ को ही करना है सारा। अच्छा। और वो पैसा भी देना है, वो हम लोग सिर्फ आपको रिम्बर्स करेंगे। जो डॉक्यूमेंटेड कॉस्ट जो होगा वो हम लोग रिम्बर्स करेंगे। अच्छा, इसमें सर एक इशू है जो कंडीशंस प्रेसिडेंट में टाइमलाइन इधर मेंशन किया हुआ नहीं है, बट टाइमलाइन तो नहीं इसमें रखे हैं, लेकिन है। अभी हम लोग ओपन कास्ट में हम लोग ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में भी है हम लोग का। हाँ, दोनों में है सर। यस सर। पेपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट में 180 डेज 120 डेज किया हुआ है। तो उसमें पेनल्टी भी है। पेनल्टी भी है, यस। तो एक चीज जब पेनल्टी में हम लोग आएंगे सर नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सो आवर कंसर्न इज दैट if there is any delay in this environmental clearance उसमें सर एम्पल स्कोप दिया गया है। अगर हिंड्रेंस के चलते या कोई आपके बिना कंट्रोल के एमडीओ के कंट्रोल से बाहर का के चलते डिले हो रहा है तो हम लोग टाइम एक्सटेंड करने का प्रोविज़न दिया हुआ है कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए। तो इसमें पेनल्टी लगने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन अगर इनकेस अगर आप कोई मान लिए इंटेंशनली एमडीओ कोई ये कर रहा है, नहीं पूरा कर रहा है, तो उनको तो पेनल्टी लगाना पड़ेगा। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि जो ECFC लेने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है, स्टैट्यूटरी कॉस्ट की जो बात हुई है डॉक्यूमेंट में, वो स्टैट्यूटरी कॉस्ट का डेफिनेशन मेंशन नहीं है। तो क्या क्या कवर करता है स्टैट्यूटरी कॉस्ट एंड फीस? वो तो जो एज पर गवर्नमेंट एक्ट रूल्स जो भी है उसमें तो ऑलरेडी मेंशन रहता है कि क्या क्या कॉस्ट लगेगा, नहीं लगेगा। उसको हम लोग डॉक्यूमेंट में एक्चुअली मेंशन नहीं किए हैं। नहीं सर, कंफ्यूजन क्या होता है ना, स्टैट्यूटरी कॉस्ट का मतलब लोग समझ रहे हैं कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा फी या कॉस्ट मांगा जा रहा है वो स्टैट्यूटरी कॉस्ट है। क्या ये सही है? यस, डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंटेड कॉस्ट है वो नहीं सर, डॉक्यूमेंटेड कॉस्ट तो R&R के email ये डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन ECFC के कंडीशन में स्टैट्यूटरी कॉस्ट लिया गया है, डॉक्यूमेंटेड कॉस्ट नहीं। तो स्टैट्यूटरी कॉस्ट का क्लैरिटी नहीं है सर। हम लोग उतना डिटेल में नहीं गए, चूँकि ये जो है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है। ईसी बनवाने का कॉस्ट या फिर कोई बेसलाइन डेटा जनरेट करने का कॉस्ट ये इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको अपने ऊपर बियर करना है और माइनिंग चार्ज में बिल्ट इन करना है। सिर्फ कहीं गवर्नमेंट बॉडीज को कोई पेमेंट कर रहे हैं, बस उतना ही रिम्बर्स होगा। नहीं सर, अब एक क्वेश्चन आता है हम लोग के केस में, क्या है कि नाला डाइवर्जन जो है स्टेट ऑफ झारखंड एक CWPRS पुणे से करवाती है। दैट इज अ गवर्नमेंट बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो वो जो कॉस्ट होगा वो कौन बियर करेगा, MDO और अथॉरिटी? MDO। वाई? वो
क्लैरिटी ये है कि एमडीओ वो कॉस्ट बियर करेगा और वो कॉस्ट को वो बिल्ट इन कर ले अपने माइनिंग चार्ज में। वो एक एडवांस में एसेस कर लेगा कि क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ आरएनआर, ये सर क्या जो एमडीओ को उसको बियर करना है या सीसीएल विल बियर या कंपनी विल बियर? कंपनी को बियर करना है एक्चुअली। जो भी देखिए इसमें लैंड में अभी हम लोग अमेंड किए हैं कि हम लोग डायरेक्टली पैसा देंगे लैंड ओनर को, और आरएनआर का जो है हम लोग रिम्बर्स करेंगे एमडीओ को। तो सर इसमें जो इशू है जो आरएनआर में अभी सर हम लोग जैसे सीसीएल में हम लोग बहुत सारे चेंजेस किए हैं, वी हैव इनहेंस द आरएनआर अमाउंट, और जो सेम कंपोनेंट जो आप उसका फिजिबिलिटी निकालते हैं प्रोजेक्ट का, तो सेम कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड और इट इज़ नॉट कंसिडर्ड राइट नाउ, क्योंकि जब उसका वैल्यूएशन करेंगे टेंडर का आफ्टर सबमिशन ऑफ बिड, तो ये वैल्यूएशन जो कॉस्ट लैंड का जो कॉस्ट आएगा इट इज़ ऑलरेडी इनहेंस, तो उसको एक बार कंसिडर करना चाहिए कि टोटल लैंड कॉस्ट इंक्लूडिंग आरएनआर विच इज टू बी रिम्बर्स should be taken care in the time, at the time of valuation of the project. वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। Yes sir. Yes. तो माइक दीजिएगा। सर साइंटिफिक स्टडी हम लोग करना पड़ता है माइंस ओपन करने के पहले, तो वो साइंटिफिक स्टडी का जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा, एमडीओ करेगा कि अथॉरिटी करेगा सर? अंडरग्राउंड का केस में बोल रहे हैं? ओपन कास्ट सर। एमडीओ करना है हम लोग को, कोई कॉस्ट मतलब इसके रिलेटेड कोई नहीं है। हमारा लैंड है, आरएनआर है, बस मेनली हमारा यही कॉस्ट, और जो हमारा मैन पावर रहेगा ओके उसके बस, और इसके अलावा लैंड में जो आपको जो लाइसेंस फी लग रही है, लैंड का कॉस्ट का लग रहा है, जो भी डायरेक्ट जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कितना खर्चा हुआ है और जो डीड का अमाउंट है उतना ही मिलेगा। द रेस्ट ऑल आपको अपने कॉस्ट में बिल्ट इन करना है, क्योंकि आप सब कुछ आपने पेमेंट कर दी, आप पोजेशन लेने के लिए जाएंगे वहाँ पर भी आपको 10-15% खर्चा एक्स्ट्रा हो सकता है, ऐसे कोई हटेगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ करनी पड़ती हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं रहेंगी, वो आपको अपने माइनिंग चार्ज में बिल्ट इन करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सर। यस मैं कोत्रे बसंतपुर के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ओके। उसमें पीआर में 4 नाला का डाइवर्सन करना है, उसके अंदर जो हमारे जो माइंड प्लान के अंदर में एज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ CMPDI, तो उसको लेकर जो है MOEF में जो है मतलब EC में काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है। उसमें उनका कहना है कि बिना नाला डाइवर्सन के ही आप काम करें। बहुत तरह तरह का बात, इसमें बहुत तरह का आर्गूमेंट हम लोग भी दे रहे हैं, है ना। बावजूद जो है वो 1-2 FSC हो गए, मतलब 2 ये थी मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इसके कारण हमारा EC अभी रुका पड़ा है। अब इसमें उनका एक कहना है कि आप ये जो माइंड प्लान है CMPDI का, इसको हम नहीं मानते, तो आपका अपना डिपार्टमेंट का है, आप इसको जो है कोई इंटरनेशनल रिप्यूट वाले इंस्टीट्यूशन से आप इसको वेटिंग कराइए माइंड प्लान को। तो इधर में तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो फिर भी हम लोग रणदीप सर साहब रिप्लाई करेंगे सर इनका। इसमें ऐसा है कि अगर कोतरे बसंतपुर के केस में जो भी EC के लिए बोला गया है वो ऐसा है कि आपका माइनिंग मेथड को ही चेंज करना होगा, क्योंकि उसमें ये पूछा गया है कि आप वाई आर यू नॉट माइनिंग द प्रॉपर्टी बाय अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, है ना। तो उस केस में यू विल हैव टू चेंज योर माइनिंग प्लान। तो ये सोच के कभी हम लोग MDO के अपॉइंटमेंट नहीं किए थे कि हमारा माइनिंग प्लान ही चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें उस समय क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा, क्या होगा वो डिसाइड करना होगा, क्योंकि अगर ये EC नहीं मिला और ये स्ट्रिक्ट रह गए MOEF की नहीं आपको अंडरग्राउंड से ही माइनिंग करना होगा, ओपन कास्ट से परमिशन आपको नहीं मिलेगा, देन द होल थिंग्स चेंज। तो द बेसिक concept that we have prepared a mining plan and MDO will have to adhere to that, वो केस ही नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें अभी फ़िलहाल हम लोग जैसा कि MDO के द्वारा ये मतलब कि ये स्टडी करवा रहे हैं थ्रू ISM, है ना। चूँकि हमारे इंडिया में तो ISM ही अच्छा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कह लीजिए जो भी, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा वो तो MDO बियर करेंगे ना। ये MDO बियर करेगा, MDO बियर करेगा। अच्छा।
कोई भी साइंटिफिक स्टडी हो, Yes. कोई भी स्टडी हो, वो एमडीओ को ही बियर करना है। MDO को ही बियर करना। Yes. Okay, thank you sir. Hello, sir, in the case of net worth for financial evaluation when we are concerning, तो net worth में सर आपने दो बोला सोल प्रोप्राइटरशिप या कंजोर्टियम में से पार्टिसिपेट करेगा, तो नेटवर्थ में सर वो क्लैरिटी नहीं है कि इन केस ऑफ कंजोर्टियम कितना नेटवर्थ हमको देखना, जो कि अभी हम लोग एक टेंडर इवोल्यूशन कर रहे थे, उसमें एक इंडियन बेस्ड कंपनी हैविंग रिलेशन ऑफ हैज बीन प्रमोटेड बाय 2 promoters एंड इट इज मेक ए कंजोर्टियम विद अफ्रीकन कंपनी। तो उस केस में इंडियन कंपनी ने अपना यूज़ किया, एक होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस दिया फॉर नेटवर्थ। तो वहाँ एक्स्ट्रा क्लैरिटी चाहिए इन केस ऑफ कंजोर्टियम, then how will we evaluate the net worth of that consortium? It should be very clear in the bid document. It is not given there, clear there. It should be noted key for it should be clear in case of consortium what are the parameters to be evaluated for net worth and the turnover or income. It should be so noted, sir. Okay. ठीक। कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट में किसी को क्वेश्चन है? यस प्लीज। इसमें लिखा हुआ कि 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी और 85% ऑफ एनुअल कैपेसिटी, मतलब कोई माइंस का यदि प्रोडक्शन बिल्डअप है 6, 10, 25, 35, 50 है ना सर, तो पहला साल में उसका 6 मिलियन टन करना है, उसका 85% वो कर देता है इस राइट, तो उसका सीओडी अचीव हो जाता है, हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस साल तक का उसका माइलस्टोन यदि कर दिया है तो हाँ, माइलस्टोन कंप्लीट करना जरूरी है। लेकिन बाकी साल का वो करे ना करे तो उसको तो सीओडी अचीव हो जाता है। यस, तो फर्स्ट ईयर में ही मान लीजिए आपका जो एनुअल टारगेट था उसका 85% अचीव कर लिया और उस साल का जो माइलस्टोन्स था वो भी कर लिया, तो सीओडी कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी वो अचीव करे उसके बाद ही होना चाहिए। जहाँ जो कि ये तो एक्चुअली ये अमेंड हुआ है, ये प्रोविजन जो है पहले 50% ही था, बाद में जो हमारा बिडर्स रिक्वेस्ट आया ये आया उसमें ये अमेंडमेंट हुआ ताकि उनको सीओडी जल्दी हो जाए और उनका जैसे इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स होता है सीओडी के बाद, तो वो मिल जाए एमडीओ को, इसलिए इसके हम लोग उसको रिलैक्स किया गया है। तो ये पहले साल से ही सीओडी हो जा रहा है। हाँ राइट, तो अच्छा है, वो एमडीओ थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, इसलिए हम लोग इसको अमेंड किए थे। नहीं, व्हाट यू हैव सेड इज राइट, बिकॉज एक तरह से ये सीओडी वाला जो क्लॉज है ये रिडंडेंट हो गया, क्योंकि अगर 0.5 का प्रोडक्शन है और 0.5 कर लिए तो और उस साल का कोई माइलस्टोन एक्टिविटी हो चाहे नहीं हो आपका सीओडी क्लोज हो गया। आइडियली इट शुड बी आपको एटलीस्ट कुछ एक कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आई थी, व्हेन वी वर डूइंग सीआरमल टेंडर, उसमें 50 MTY का प्रोजेक्ट था और उसमें उस टाइम द सीओडी वाज शायद 85% था ना, उस टाइम 85% था। तो पता चल रहा था कि 15 साल तक 18 साल तक 16 जब तक वो 45 मिलियन या 40 मिलियन नहीं पहुंचता 40 मिलियन तब तक उसका सीओडी नहीं होगा। द सीओडी कंसेप्ट केम फ्रॉम पावर प्लांट्स, जहाँ पर अगर कोई 600 मेगावाट का पावर प्लांट है तो 72 घंटे उसको 600 मेगावाट पे रन करके दिखा के फिर दिखा देना है। दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ सीओडी। हमारे केस में हम लोग को इस क्लॉज में जो आप बोल रहे हैं वी हैव टू रीलुक इनटू इट कि अगर कोई सपोज 7वें साल में टारगेट अचीविंग ईयर है तो ऐसा नहीं हो कि पहले साल में ही सीओडी खत्म हो जाए विदाउट हिम डूइंग। अगर इसमें मेजर माइलस्टोन एक्टिविटीज डिफाइन कर देंगे कि कम से कम वो हो जाए, प्रोडक्शन आए चाहे नहीं आए, बट मेजर माइलस्टोन आपका सीएचपी तैयार हो जाना चाहिए, सबस्टेशन बन जाना चाहिए, ताकि आप एक स्टेडी स्टेट प्रोडक्शन होल्ड कर पाए, उतना में सीओडी होना चाहिए। नहीं तो एस्टिमेटेड कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होगा, वो 100 करोड़ करेगा, बाकी पेनल्टी देके वो पूरा काम करा लेगा आउटसोर्सिंग करके। हमारा जो प्रोजेक्ट का ये है वो फुलफिल नहीं होगा जी। हाँ, सीआरएल वाला में दूसरा हो गया थोड़ा सा। एक्चुअली इसको पहले जो था ओरिजिनल जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो 50% पे ही था, लेकिन वो बाद में ये अमेंड किया गया क्योंकि बिडर्स रिक्वेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट, एक हमारा शेड्यूल्ड सीओडी का प्रोविज़न है, मतलब जो भी हमारा एनुअल प्रोडक्शन प्रोग्राम है उसके बेसिस पे 50% कब अचीव होगा, तो शेड्यूल सीओडी पर ही हम पेनाल्टी चार्ज करते हैं किसी एमडीओ को।
अगर उन्होंने शेड्यूल सीओडी अचीव नहीं किया है विद इन दैट टाइम, और आफ्टर एक्सटेंडेड डेट ऑल्सो, अगर एक्सटेंडेड डेट देने के बाद भी अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर हम लोग उसको पेनाल्टी का प्रोविज़न है। नेक्स्ट, ये प्रोविज़न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का है, अथॉरिटी के ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये पावर स्टेशन देना है, रेल कनेक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। और इसमें है कि अगर हम लोग जब टेंडर करने के पहले अगर अथॉरिटी के ऊपर अगर ये लगता है कि नहीं अथॉरिटी को नहीं करना है या, तो हम लोग उसको एमडीओ के ऊपर दे सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया है हमारा। नेक्स्ट, और रेल ट्रैक का जो है इसमें हम लोग रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। इसमें पहले एमडीओ के ऊपर था, उसको हम लोग हटा के रेल ट्रैक का कॉस्ट अथॉरिटी के ऊपर हम लोग किए हैं। ये ऑप्शनल रखा गया है, या तो अथॉरिटी खुद करे या फिर एमडीओ करे, और जो भी होगा उसका रिम्बर्समेंट हम लोग, अगर एमडीओ करता है तो हम उसका रिम्बर्समेंट करेंगे। नेक्स्ट, इंजीनियर इंचार्ज अपॉइंट करना है। नेक्स्ट, और ये इंजीनियर इंचार्ज का एक रोल है, ड्राइंग का रिव्यू करना, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क का देखना, इंस्पेक्शन टेस्टिंग ऑफ माइंस, कंडक्टिंग टेस्ट, रिव्यू इंस्पेक्शन। इंजीनियर इंचार्ज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमडीओज में, एमडीओ प्रोजेक्ट में। और ये अथॉरिटी को मैन पावर देना है, स्टैट्यूटरी और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव। ये लिस्ट हम लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। नेक्स्ट, और ये एमडीओ को देना है, और जितना भी वेजेज होगा वो हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से होगा। नेक्स्ट, माइनिंग चार्ज। माइनिंग चार्ज हम लोग पर टन बेसिस पे, कोल डिलीवर्ड के बेसिस पे देंगे, और ये एवरी क्वार्टर इसको एक्सकेलेट हम लोग करते हैं। और ओपन कास्ट के केस में हम लोग उसको स्ट्रिपिंग रेशियो एडजस्टमेंट आफ्टर सीओडी माइनिंग चार्ज का करते हैं। इसमें किसी को क्वेश्चन है? राइट, माइक दीजिएगा। सर जो प्राइस एक रिक्वेस्ट है, एनीबॉडी हुज आस्किंग अ क्वेश्चन पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें प्लीज। माई सेल्फ संतोष कुमार सेठी, पोस्टेड एट सीएमसी डिपार्टमेंट एमसीएल हेडक्वार्टर, डिप्टी मैनेजर माइनिंग। आई एम लुकिंग आफ्टर द एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एमसीएल। सर इसमें क्वेश्चन है कि हमारा जो प्राइस इंडेक्स है सर, आर्टिकल 47 में प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, उसमें हर फिक्स्ड कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का परसेंटेज दिया हुआ है। हमारा इतना बड़ा एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है, उसमें एस्केलेशन का जो फॉर्मूला है वो नहीं दिया हुआ, वो मिसिंग है, जो कि उसमें रहना चाहिए सर। जैसे हमारा नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा सेम मैनुअल में, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनुअल में, वो सब में है, लेकिन इसमें है नहीं, जो कि उसको डाल देना चाहिए सर। अभी एग्जीक्यूशन में नहीं आए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, जब आने लगेंगे तो वो जो फॉर्मूला है हम वो फिर उसी को रेफर करेंगे, जो कि डॉक्यूमेंट में नहीं है। ऑलरेडी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल में है तो नहीं डाला गया था। हाँ, लेकिन इसमें डाल देना चाहिए सर। ठीक है, ये सजेशन। बहुत सारा नहीं, आई थिंक एस्केलेशन क्लॉज तो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट। क्लॉज है सर, नहीं सर। फॉर्मूला भी है उस, नहीं फॉर्मूला है, और उसमें स्क्वायर, सपोज आपके 20% आपको फिक्स्ड वैल्यू है जिस पे एस्केलेशन नहीं होगा, 80% एस्केलेट होगा। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन वेजेस एंड पावर एंड डीजल एंड मशीनरी एंड स्पेयर्स, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्वायर्ड ब्रैकेट में है, उसको आप प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक हिसाब से चेंज किया जा सकता है। तो ठीक है। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं सर, वो बोल रहे हैं कि जो जैसे सीएमएम में हमारा एक फार्मूला दिया हुआ है सर, वो हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं है, क्योंकि वो उसको हम लोग रेफर करते हैं। ओके, ओके ओके राइट सर, सीएमएम में है हमारा, सीएमएम में है सर। ओके ओके ओके, तो उसको हम लोग एक्चुअली आज की डेट में सीएमएम को ही रेफर करना पड़ेगा। ओके, मतलब बेसिकली वो प्राइस इंडेक्स वाली आप बात कर रहे हैं। राइट, ओके ओके, हाँ हाँ समझ गए। ओके, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट, ये हमारा एक ओवरबर्डन एडजस्टेबल अमाउंट है, जहाँ पर हमारा कोल प्रोडक्शन आफ्टर 3 इयर्स होता है, तो वहाँ पर हम लोग एमडीओज़ को ओवरबर्डन एडजस्टेबल अमाउंट हम लोग देते हैं। वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 40% ऑफ द माइनिंग चार्ज ऑन द नोशनल अमाउंट ऑफ कोल। जो भी ओबी उन्होंने रिमूव किया
उसका एक नोशनल अमाउंट ऑफ कोल हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो से निकाल लेंगे और उसका 40% हम लोग उनको एडजस्टेबल अमाउंट देंगे, उसके बदले उनसे हम लोग 110% का एक बीजी लेंगे। और जब कोल प्रोडक्शन जब चालू हो जाएगा तब फिर हम लोग 60 इंस्टॉलमेंट में उसको हम लोग फिर उनसे रिम्बर्स करते हैं। और ये एक स्ट्रिपिंग रेशियो एडजस्टमेंट का एक फॉर्मूला हमारा डॉक्यूमेंट में है, लेकिन ये आफ्टर COD इम्प्लीमेंट होता है। COD अचीव करने के बाद ही उनको ये फैसिलिटी मिलता है स्ट्रिपिंग रेशियो एडजस्टमेंट का। इसमें हम लोग और ये एस्केलेशन का एक हम लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ CIL, क्योंकि ये हमारा जो भी फिक्स्ड कंपोनेंट या इंडस्ट्रियल मशीनरी, लुब्रिकेंट, वेजेज कॉस्ट, HSD, इलेक्ट्रिकल टैरिफ और जो INR वाला जो अंडरग्राउंड में होता है, तो इसमें हम लोगों ने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। सब्सिडरी अपना इसको चेंज करती है वाइल टेंडरिंग। तो ये देखिए सीआरमल में अभी हम लोगों ने मेनली अब जो डीजल कॉस्ट पे ज़्यादा ये रहता था, डीजल एस्केलेशन का 49% उन्होंने रखा है। कोटरे बसंतपुर में 52% रखा है, जबकि हमारा जो है डीजल का 20% ही है ओपन कास्ट और ओपन कास्ट के लिए। तो ये आप इसको ये चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड। नेक्स्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग का अभी हम लोगों ने अमेंड किया ओपन कास्ट में। पहले ये 15% था उसको, यस नेक्स्ट बैक, यस सर। यस ये जो स्टिपिंग रेशियो एडजस्टमेंट है, ये जो मेरे ख्याल से जो पहला जो फर्स्ट हम लोगों ने जो डिवाइस किया था ये बाद में अडॉप्ट किया हुआ है, राइट। और सीआरमल में ये शायद नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली नहीं सर, सीआरमल में कुछ और नहीं सर। ये जो था ये आपको जो एसएल माइनिंग के भुवनेश्वरी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नहीं था। एनटीपीसी का भी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, एंड देन तब डाल दिया। तो इसमें मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दो ये, बिकॉज इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली ये सर हम लोग जो भी बेस माइनिंग चार्ज है उसको COD के बाद हम उनका एक स्ट्रिपिंग रेशियो एडजस्टमेंट देते हैं। इनिशियली हम लोग आफ्टर जब COD को भी MDO अचीव कर लेता है तो उनका हम लोग तो प्राइस एस्केलेशन देते ही हर एक क्वार्टर में, हर एक आफ्टर एक क्वार्टर में। और उसके अलावा एक एडिशनल ये बेनिफिट MDOs को दिया गया है कि COD अचीव अगर पहले करेंगे तो उनका वो स्ट्रिपिंग रेशियो एडजस्टमेंट भी माइनिंग चार्ज का मिलेगा और उसमें उनको उनका माइनिंग चार्ज बढ़ जाएगा। जस्ट टू सप्लीमेंट, एक्चुअली ये जो इशू है ना, नहीं जैसे सपोज हम बोलते हैं 3 मिलियन की माइन है और 3 का रेशो है, सो द एक्सपेक्टेशन इज कि 9 क्यूबिक मीटर का वो मटेरियल निकालेगा OB और 3 टन का कोयला निकालेगा। सो दिस इज द प्रोपोर्शन, या 3 मिलियन टन और 9 मिलियन क्यूबिक मीटर। सो द MDO नोट्स के हमको कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क इन्वॉल्व है। कल को वो वॉल्यूम ऑफ वर्क कम होगा तो टू दैट एक्सटेंट उसकी कॉस्ट घटेगी। तो अगर हम ये नहीं देते हैं और सपोज एक माइन है जिसका एवरेज स्ट्रिपिंग रेशो 3 है, लेकिन ओवर द लाइफ ऑफ माइन वो 2.5 ही हुआ, क्योंकि जितने लॉसेस कोयले में सोचे थे उतने नहीं हुए, या कुछ बैंड्स आ गए फॉर वट एवर रीजन्स। अगर कोयला ज़्यादा निकल गया तो रेशो कम हो गया, सो यू एंड अप पेइंग अ मच हायर कॉस्ट विदाउट ही डूइंग सो मच ऑफ ओवरबर्डन। तो ये एक एडजस्टमेंट एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है कंपनीज को, बट एट द सेम टाइम अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ये प्रोटेक्ट करता है MDOs को भी, कि अगर हाई रेशो है तो दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सकवेशन वॉल्यूम्स रादर देन जस्ट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। जो हाँ एग्जैक्टली। आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? यस सर, आफ्टर अचीविंग दिस, माय नेम इज राजेश रेड्डी, KBP माइनिंग कोत्रे बसंतपुर प्रोजेक्ट का। आफ्टर अचीविंग द COD, कैन बैक डेटेड जो क्वांटिटीज लिया गया था उसका भी एडजस्टमेंट चलेगा? नहीं तो it will be not from the backdated, it is from the date of after achieving the COD only. Yes sir, after achievement.
बैकडेटेड नहीं, पहले का नहीं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट सर, अभी जो स्टैट्यूटरी कास्ट को फ्यूचर टेंडर्स में क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्यों बोले तो ऑल द MDO बिडर्स may not be aware what are the statutory costs involved, and any unanticipated scientific study को जो करने का है वो अथॉरिटी लेना उचित होगा। ठीक है, सजेशंस में हम लोग उसको रखते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये एनुअल प्रोडक्शन प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी टेंडर में डाल देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोडक्शन के लिए हम लोग उसके लिए फिर पेनाल्टी चार्ज करते हैं अगर नॉन अचीवमेंट होता है तो। और अथॉरिटी जो है वो आफ्टर COD 15% का अथॉरिटी को है कि वो चेंज कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ EC प्रोडक्शन प्रोग्राम में। नेक्स्ट, और टर्मिनेशन पेमेंट में हम लोगों ने लिखा है क्या क्या मिलेगा आफ्टर टर्मिनेशन अगर होता है किसी कारण से, और अगर बिफोर COD अगर होता है टर्मिनेशन तो कोई पेमेंट नहीं मिलेगा MDO को, इसीलिए COD अचीव करना ज़रूरी है। या ये इजी हो गया उनके लिए, राइट। नेक्स्ट, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद अगर होता है तो फिर उसमें कोई टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं है। ये 30 डेज़ पहले आपको एक ऑपरेटर को, माइन ऑपरेटर को इंटीमेट करना है कि हमारा एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है, तो उसमें फिर हम लोग उसके बाद टर्मिनेशन होता है तो उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है। नेक्स्ट, डैमेजेस के लिए हम लोगों ने बनाया है कुछ स्लाइड्स। कंडीशंस प्रेसिडेंट के लिए अगर फुलफिल नहीं होता है तो अथॉरिटी को भी पे करना पड़ता है इसमें डैमेजेस, जो 0.1% ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ईच वीक। उसके बाद माइन ऑपरेटर के लिए हम लोगों ने ओपन कास्ट में अभी 0.5 को 2.25 कर दिया है और अंडरग्राउंड में 0.5 रहेगा। नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट माइलस्टोन, उसमें भी हम लोगों ने ओपन कास्ट में इसको 0.2 से 0.1 किया है और अंडरग्राउंड में 0.2 है। फेल्योर टू अकर शेड्यूल्ड COD, वो 0.5% ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉर डिले ऑफ ईच वीक और पार्ट ऑफ वीक। ये डिलीवरी पॉइंट में अगर कोल्ड डिस्पैच में अगर शॉर्टेज है तो हम लोगों ने उसमें रखा है कि अप टू 2% नोटिफाइड प्राइस जो होगा कोल का, जो शॉर्टफॉल क्वांटिटी का प्राइस होगा, और एक्सीडिंग अगर 2% से ज़्यादा शॉर्टफॉल होता है तो डबल द प्राइस ऑफ नोटिफाइड प्राइस ऑफ कोल। शॉर्टफॉल ऑफ OB रिमूवल में भी हमारा पेनाल्टी है, उसका हम लोगों ने रखा है कि जो भी अगर शॉर्टफॉल होता है तो OB शॉर्टफॉल का भी उसमें भी देखिए COD का रोल आता है कि अगर COD अचीव हो गया है तो थोड़ा शॉर्टफॉल कम लगेगा। डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल्ड ओवरबर्डन क्वांटिटी एंड ओवरबर्डन रिमूव डिवाइडेड बाय द नोशनल स्ट्रिपिंग रेशियो प्रायर टू COD रहेगा, और ऑन और आफ्टर COD डिफरेंस बिटवीन द ओवरबर्डन रिमूव्ड एंड द एक्चुअल स्ट्रिपिंग रेशियो। ये वाला नहीं, ये अगर शॉर्ट फॉल हुआ है डिलीवरी में अप टू 2% सेम प्राइस नोटिफाइड एट द रेट ऑफ नोटिफाइड प्राइस। ज़्यादा आ गए, इनिशिएटिव से ज़्यादा आ गया, ऐसा भी होता है, तब क्या करें? इनिशिएटिव तब कुछ नहीं। नेक्स्ट, यस, इसमें हाँ सर, क्वेश्चन है कि एक्चुअली दिस इज एस बासु फ्रॉम JMS माइनिंग। सर एक्चुअली सी द फर्स्ट पार्ट
for the authority, you are keeping a cap of maximum 20%. But for MD operator, why you are keeping the cap of 30%? Because it's, I mean, it's a part. अभी तक देखिए, अभी किसी भी डॉक्यूमेंट में अथॉरिटी के ऊपर पेनाल्टी नहीं है. हम लोगों ने तो उसमें डाला है कि अथॉरिटी को भी पे करना है. जनरली ये क्लॉज जो है अथॉरिटी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि नहीं, उनको भी कंडीशन प्रेसिडेंट को के लिए करना है जो भी. बट एक्चुअली दैट क्वेश्चन जो मैं पूछा है उसका आंसर प्रॉपर्ली नहीं हुआ सर. ये अगर उधर 20% होता है तो इधर भी 20% होना चाहिए ना सर. एक्चुअली आपका रोल ज़्यादा है इसमें, इसलिए आपको ज़्यादा चार्ज किया गया है. नहीं, आपका कंडीशंस प्रेसिडेंट फुलफिल होने के बाद तब ना हम लोग का कंडीशंस प्रेसिडेंट चालू होगा. तो एक्चुअली इसमें क्या है कि इसमें देखिए कंडीशन प्रेसिडेंट में मोस्टली पेनाल्टी लगने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोग पूरा उसको टाइमलाइन आपका एक्सटेंड होता जाएगा. अगर मान लीजिए आपके कंट्रोल से बाहर अगर होता है तभी होगा, ये फुलफिल नहीं होगा. तो उसमें हम लोग पूरा प्रोविज़न दिए हुए हैं कि उसको टाइमलाइन एक्सटेंड करने का. तो ये है इसमें. जस्ट एक रिक्वेस्ट है. ठीक है सर, इसको सजेशंस में हम लोग रखेंगे. और सेकंड पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में जाइए, वो सेम है. हाँ, उसमें सर फेल टू अचीव प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स, damages at the rate of 0.1% of the amount of performance security each week or part of week for delay for open cast and underground projects respectively, right? But what is the maximum cap? एक मैक्सिमम कैप भी होना चाहिए ना. कोई भी एलडी अगर आप लगाओगे तो एक तो मैक्सिमम कैप होना चाहिए. मैक्सिमम कैप का एक प्रोविजन है लास्ट में. अगर आप सेक्शन 55 देखोगे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें तो नहीं, कैप रहता है. नहीं, एक हमारा है ऑलरेडी कैप है, लास्ट में है एक हमारा क्लॉज है जिसमें हमारा दिया हुआ है कि कितना लायबिलिटी, कितना मैक्सिमम आप एमडीओ के ऊपर रहेगा. नहीं ना, वो हाँ एग्जैक्टली, वो तो टर्मिनेशन का टाइम. ये अभी पर्टिकुलर ये जो डिले डैमेज जो है ना, ये डिले डैमेज में तो एक होना चाहिए. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में रहता है मैक्सिमम कैप रहता है. ठीक है, तो ओपन एंडेड हो जाएगा ये. ठीक है, ठीक. प्रोजेक्ट माइलस्टोन इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए सॉफ्ट प्रोजेक्ट ही ऐसे सीरियसली होता है. जब टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज टू बी. तो इसमें हर प्रोजेक्ट में कैप रहता है. ठीक है, इसको हम लोग सजेशंस में रखते हैं. आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एसबीडी आप देखो, उसमें भी कैप है. टोटल कैप दिया हुआ है सर. टोटल कैप इंडिविजुअली नहीं दिया हुआ है सर. अच्छा सर, जी ठीक. और ये अंडरग्राउंड में हम लोग एक डेवलपमेंट के लिए, लेंथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए एक पेनाल्टी रखे हैं. नेक्स्ट, ग्रेड स्लीपेज में हम लोगों ने रखा है 1.25 टाइम्स सेल प्राइस ऑफ कोल which the authority is unable to or fails to realize from the buyer. और फिर कोल प्रोडक्शन जो हमारा शेड्यूल्ड कोल प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे हमारा पेनाल्टीज है, जो कि इस तरह से. सर एक क्वेश्चन है मेरा. रेट प्लीज सर. इधर सर, कार्तिक सिन्हा सर, केबीपी माइनिंग से बोल रहा हूँ, अपना कोतरे बसंतपुर से. अगर कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू ईएसी एफएसी restrictions, in that case पेनल्टी लगेगा क्या? नहीं, अगर वो मान लीजिए आपके कंट्रोल के बाहर कोई चीज़ हो रहा है जिससे चलते आप ECFC नहीं हुआ, तो आपको फिर टाइम एक्सटेंशन मिलेगा. किस बेसिस पे सर आएगा वो टाइम एक्सटेंशन? ये फोर्स मेजर में जाएगा क्या? नहीं, वो तो इसी का इंडिविजुअल इसमें है कि अगर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ये है या हिंड्रेंस है किसी चलते, तो वो आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा. इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू 2 years ना सर. इट इज ओनली नहीं, वो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा दिया हुआ है.
Any extent only up to 2 years from the signing of the contract. Later, but it is debatable only. Right. उसमें जैसे उसमें फर्दर जो भी है उसमें तो हमारा दिया हुआ है कि अगर इंट्रेंस अगर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ है उसको एक्सटेंडेबल माना जाएगा, किया जाएगा उसको। मतलब इन दैट केस ये एक्सटेंशन मिल जाएगा? मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ये प्रोडक्शन पे हमारा ये है पेनाल्टी का है, जिसमें एक ब्रैकेट और है, लेस देन 50% का भी है, इसमें नहीं शो किया हुआ है। उसका एक कंपैरिजन भी दिखा दो। एक हम लोगों ने कंपैरिजन बनाया था, जैसे सब्सक्राइब पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ओपन कास्ट के लिए, अंडरग्राउंड के लिए। नेक्स्ट, रिस्क एंड चैलेंजेस फॉर अथॉरिटी। माइन क्लोजर एक्टिविटी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। एक्चुअली अगर विद इन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो वो MDO का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद अगर फाइनल माइन क्लोजर होता है तो वो अथॉरिटी को करना पड़ेगा। प्रॉपर एडहेरेंस ऑफ माइन प्लान, ये हमको अथॉरिटी को इंश्योर करना होगा कि माइन ऑपरेटर्स को माइन प्लान को एडहेयर कर रहे हैं। अगर कोई प्रीमेच्योर टर्मिनेशन होता है या फिर डिले इन कमीशनिंग रेल ट्रैक, वो हैम्पर कर सकता है। MDOs के लिए इनिशियली इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा और हमारा कोई एडवांस प्रोविज़न नहीं है मोबिलाइजेशन, और तो वो उनके लिए चैलेंज हो सकता है। और ये सक्सेसफुल MDO प्रोजेक्ट्स के ऊपर था, जिसमें हमारा अभी 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुके हैं। नेक्स्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, इसके नेक्स्ट यस, मदनपुर पेलमा ऑलरेडी आने वाला है। ये बोर्ड में SCCL बोर्ड में 14/10 को आने वाला था, आज ही शायद होने वाला है बोर्ड। फिर हुरासी एंड ईटापारा उसी का ECL में चल रहा है, टेक्नो कॉमर्शियल। और परासिया बेलवेद अंडरग्राउंड ECL में है। और ये संगमित्रा, बांसरा, तिलाबोनी और ललमटिया AB जो पार्शियली एक्सप्लोर्ड कोल ब्लॉक है। टोटल हमारा 21 प्रोजेक्ट अभी MDO में आइडेंटिफाइड है। अगर और कोई किसी को क्वेश्चन हो। हाँ, माइक प्लीज। myself मोहन कृष्णा फ्रॉम WCL। ये इसका कुछ क्लाजेस है क्या इसमें, जो जैसा स्टैट्यूटरी सुपरविजन का एक हो गया, दूसरा है सिक्योरिटी, और कई बार PR रिपोर्ट से भी ज़्यादा जो एनविसेज किया उससे ज़्यादा कोयला निकलता है, उसका कौन क्या करेगा? और ओवरऑल मतलब कोल का सिक्योरिटी क्या है, MDO ऑपरेटर का हाथ में पूरा है या अथॉरिटी का? नहीं, सिक्योरिटी तो MDO के ऊपर ही है, पूरा कंप्लीट हम लोग का है, उसमें डॉक्यूमेंट में क्लियर कट है। नहीं, लेकिन जो भी एडिशनल कोल जो भी मतलब PR में है, उसका बियॉन्ड अगर कोल मिलता है, कोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मे बी ड्यू टू सम अनप्रेडिक्टेड जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, वॉट एवर मे बी द रीज़न, जो हम लोग एनविसेज किए उससे ज़्यादा रिजर्व मिलता है, उस केस में क्या होगा? नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं, मतलब अगर मतलब रिजर्व ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड होगा। मान लीजिए अगर 25 ईयर से ज़्यादा का कोयला है, वो कौन मॉनिटर कर रहा है, मतलब कैसे एक्स्ट्रा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाउ वी आर गोइंग टू एज ए अथॉरिटी, हाउ वी आर गोइंग टू नो? नहीं, एज पर देखिए, एज पर डॉक्यूमेंट जो है ये 25 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। अगर माइन लाइफ बढ़ गया तो फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है, यानी तो फिर दूसरा MDO आएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन वही है, यस, हाउ एज ए अथॉरिटी हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है उतना ही कोयला मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है? हमारा मॉनिटरिंग का क्या क्लासेस है? इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है। डू यू मीन टू से एनी केस ऑफ थेफ्ट? मे बी नहीं, उसका तो प्रोविजन है, कहाँ कितना इंस्टीट्यूट से निकल रहा है यार, वो मेजरमेंट, वो तो मेजरमेंट है ही उसका। नहीं, मेजरमेंट का क्लासेस है क्या? वही हाँ, मेजरमेंट का क्लासेस है ना, जैसा थ्रू आउट माइनिंग फेज, मतलब मेजरमेंट बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
और एक डाउट था सर, ये जो माइन क्लोजर के एक्टिविटी का जो बोल रहा है, वो उसका जो इनिशियल जो एस्क्रो अकाउंट में जो पे करना है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, माइन देखिए जो भी एस्क्रो अकाउंट है अथॉरिटी पे करेगी पहले, और अथॉरिटी फिर माइन ऑपरेटर से रिम्बर्स कर लेगी अमाउंट। ईयर वाइज जो हमारा अमाउंट निकलेगा जो एस्क्रो अकाउंट का, वो अथॉरिटी को पे करना होगा और अथॉरिटी फिर माइन ऑपरेटर के बिल से रिम्बर्स करेगी। वो फिर माइन डेवलपर को कब देगा जब पूरा क्लोजर एक्टिविटी? राइट, यस, माइन क्लोजर जो प्रिपरेटरी माइन क्लोजर जो भी करेंगे, फिर वहाँ से जब हमारा रिम्बर्स पैसा आएगा तो फिर हम माइन ऑपरेटर को दे देंगे। और ये भी डिपेंड है क्या सर, जो स्टैट्यूटरी पार्ट में जो भी है माइंस एक्ट का कंप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, कुछ इंडिमनिटी रहेगा? अथॉरिटी को कुछ इंडिमनिफाई करता है क्या एमडीओ? नहीं करता है। नहीं। फिर मतलब मान लीजिए उसने कुछ शॉर्टकट मारा है, कुछ एक्सीडेंट किया है, तो उस केस में अथॉरिटी का क्या हालत है? हमारा तो उसमें है जो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एमडीओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड किया हुआ है। और जैसे हमारा तो माइंस एक्ट के हिसाब से माइन ऑनर तो हम ही हैं, अथॉरिटी है। जी जी। हमारा जो भी है मैनेजर हमारा है, एजेंट है, तो एज पर माइंस एक्ट जो भी होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगा। स्टैट्यूटरी पोस्ट जो होल्ड कर रहा है उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है, वो तो रहेगा हमारे ऊपर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, दिस इज मनीष बर्नवाल फ्रॉम CMC ECL हेडक्वार्टर। Yes. Sir, I would like to have just a query regarding the RFB, model RFB, where there is provision that the authority shall comply with the purchase preference to Make in India policies and all circulars related therewith. But sir, there is no mention how or there is no deliberation how this Make in India policy will be implemented. Likewise, in our other similar normal OC contracts or underground contracts, bidders have to just submit certificate from chartered accountant or something like that. But here we don't have any such provision. Should not it be incorporated? Yes, you can refer that provision at this time, because we have not clearly elaborated that provision here. Right, you are right. But that should be included, sir, because we are contradicting our own stand. Yes. And second one, sir. In our some OC patches, the recent amendments we have received on 26th of July, and those were definitely the very welcome and good steps. And because of that, we have already received good participation in our some of the OC tenders. But in underground tenders where the similar clauses are existing, but there is no amendments like that. Likewise, how we will reimburse the land cost to the mine authority, or whether we will be paying it to the directly to the landowners. Yes, actually this amendment is been done for only OC document, and for underground document, if any suggestions comes, we can refer it to the competent authority. Sir, we have already talked to Coal India. They are saying that we should talk to CMPDL headquarter only. Okay. That's why I am raising this issue. Actually, it will come from competent authority. So we will, if you will give your suggestions, we can refer it to Coal India. Okay, sir. Third one, sir, that we are facing practically the clarification due date. That is 20 days prior to the bid due date. Okay. And suppose at the last day of clarification due date, a bidder just puts up a lot of questions, because this may be in number 70, 70, 80, 90 likewise. And we get just 5 days, because the responsibility of the authority is to give the clarification just maximum up to on the portal 15 days prior to the bid due date. Okay, so we just get 5 days, and within the 5 days, if any Saturday, Sunday occurs, then we effectively get just 3 days, and within these 3 days, we have to send this clarification to CMPDL, and CMPDL give us back. So if there is no proper clarification to the bidders, there is no participation of the bidders. So for effecting the good participation of the bidders, we must have some window period of at least 10 days. So it should be considered okay, we can seriously. Okay, we will keep it. Next, any question? Okay, sir. Thank you. हाँ सर, एक क्वेश्चन मैं SS झा, चीफ मैनेजर सिविल CCL में,
ये सर रेल कनेक्टिविटी जैसे सीसीएल की जिम्मेवारी है या ये है, और एमडीए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं अपने, उनकी जिम्मेवारी है कि वो लोडिंग पॉइंट तक लाएंगे अपना जो रैपिड लोडिंग सिस्टम हो या साइलो हो। वो दोनों के बीच में एक ग्रे एरिया आता है कि वो रिट्रैक्टेबल ओएचई एक हाई टेक्नोलॉजी आइटम है जो उसका ये है, वो किसके जुरिडिक्शन में है? वो तो एमडीओ के जुरिडिक्शन में ही है। ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं वाइल मेकिंग, मतलब जब डॉक्यूमेंट बन रहा है उस समय हम लोग कर सकते हैं जी, वो हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली अभी रेल ट्रैक तो कम्प्लीटली अथॉरिटी का जिम्मा है, तो उसमें आप देख सकते हैं अगर कि जैसे मगध, जैसे हम अभी एमडीओ के अलग बात करें, यदि मगध हो, आम्रपाली हो, जहाँ सीएचपी साइलो वगैरह की हो रही है, सारी जगह बीडर्स के स्कोप में वो रिट्रैक्टेबल ओएचई का प्रोविज़न है। कोटरे बसंतपुर में भी जो आसरी वगैरह का टेंडर हो रहा है, वहाँ रिट्रैक्टेबल ओएचई बीडर्स के स्कोप में जा रही है। तो हम ये ग्रे एरिया है, इसमें हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है। हम लोग रेल कनेक्टिविटी में अपने अंडर में, मतलब जो सीसीएल इस पार्ट से अभी अलग जा रहा है कि वो बीडर्स के स्कोप में है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एकदम बिल्कुल क्लैरिटी इसमें होना चाहिए। ठीक है रणदीप सर, ये क्लैरिटी जो है ना, हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है ड्यूरिंग कस्टमाइजेशन, हम लोग ये क्लैरिटी दे सकते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक केस में। नहीं, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक इवन सियामल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको सीएचपी बनाते बनाते आपको 4 साल लग जाएंगे, और इस बीच आपका कोल प्रोडक्शन आ रहा है जिसको किसी पर्टिकुलर साइडिंग पे लेके जाना है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन हैव अ सेपरेट क्लॉज कि आप हमको, जैसे सियामल के केस में उन्होंने क्या कर दिया था कि शुरू के उस पीरियड में एज अ परसेंटेज ऑफ सर्टन अमाउंट देंगे, वो माइनिंग फ़ी का फुल नहीं देंगे जब तक सीएचपी फुल नहीं आएगा। सो दिस वॉज डन, और ये पहले से ही उस डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया था। ऑफ कोर्स अगर कहीं पर उस तरह का कोई क्लॉज आ रहा है जहाँ टेम्परेरली आपको कोई दूसरी जगह लेके जाना है अदर देन द डिजिग्नेटेड पॉइंट, दैट कैन बी पुट इन द कस्टमाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और बियॉन्ड दैट अगर कुछ होता है तो अदरवाइज टेक्निकली यही है कि व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग इनटू इट, द बिडर शुड नो कि उसका स्कोप ऑफ वर्क कहाँ पर क्या है। 2 साल तक, 3 साल तक अगर उसको कोई साइडिंग तक लेके जाना है, या क्या कहते हैं पिटहेड का, या जो क्रशर पॉइंट तक लेके जाना है। सो ये क्लैरिटी डॉक्यूमेंट में कस्टमाइजेशन के टाइम में डाला जा सकता है। इसको काइंडली नोट कर लिया जाए सर। हाँ, उसमें 2 डिलीवरी पॉइंट थे, लेकिन जब सरडेगा साइडिंग जाएगा तो पेमेंट वुड बी 86% या 87% ऑफ द माइनिंग चार्ज। तो वहाँ पर वो पहले से बता दिया गया ना। सो अब वो माइनिंग चार्ज कितना होगा, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें वो अपने माइनिंग चार्ज के अंदर बिल्ट इन करके बता देगा। लेकिन हमने पहले से बता दिया कि उसको वो 93% ऑफ द माइनिंग चार्ज मिलेगा अगर वो अपने सीएचपी से डिस्पैच नहीं करता है और सरदेगा साइडिंग लेके जाता है। सो दिस टाइप ऑफ क्लैरिटी हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू द डॉक्यूमेंट। सर अगर ये लास्ट में आता है तब भी हमारा डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी चेंज ऑफ स्कोप का अंतर्गत एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो उस केस में अगर ऐसा इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेडली आता है तो डॉक्यूमेंट उसमें बहुत क्लियर है कि वो मैकेनिज्म का हमसे आप डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं, मगर काम चलते रहेगा, काम रुकेगा नहीं। तो उस हिसाब वो भी मैकेनिज्म दिया हुआ ही है। राइट, एनी मोर क्वेश्चन? स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है माइंस एक्ट, माइंस रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना, उसका जिम्मेदारी भी एमडीओ को रहना चाहिए। हम लोग मैन पावर जो सरदार और मैनेजर लगाया, छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल 10 साल का मैनेजर का गिनती नहीं करता है। ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 10,000 करोड़ 25,000 करोड़ बड़ा एमडीओ आएगा, वो जीएम को भी गिनती नहीं करेगा। वो इम्प्लीमेंटेशन स्टैट्यूटरीज हम ये पब्लिक सेक्टर के सब्सिडी का ऑफिसर्स फंसेगा उसमें, तो उसका जिम्मा भी एमडीओ को दे देना चाहिए। उसको हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग में वो वाला मॉडल डाले हैं, लेकिन इसमें एट प्रेजेंट जो है हमारा ओसीओ अंडरग्राउंड का जो है वो हमारा ही मैन पावर तो हमारा ही है। और दूसरा ये मोहन कृष्ण जो पूछा था, जहाँ पे अगर 100 मिलियन टन है उसमें 105 मिलियन टन पे आने का चांस है स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरिएशन रहने से। इंस्टीट्यूट से कभी कभी डिस्पैच में ज़्यादा आएगा, अगर बैंड्स आ गया वो वेट ज़्यादा आएगा, कन्वर्ट करके वापस आने से ज़्यादा आएगा। उसमें वो 5 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा आएगा वो बिजनेस पीपल एक्सेप्ट टाटा एंड सन्स एथिकल वैल्यूज नहीं रहता है। वो अगर वो 5 मिलियन टन वो लोग दूसरा तरीके से चोरी करना संभावना है, उसके ऊपर क्या सर्वेलेंस है, सिक्योरिटी सर्वेलेंस 1-2 लाइन लिखा है
पूरा उसका जमा है करके, पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी का जमा उसका है, लेकिन उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगाना है, ये बेस्ड सर्वेलेंस जीपीएस सब, उसको भी एक कनेक्शन देके डॉक्यूमेंट में जोड़ देना चाहिए। नहीं वो तो है हमारा, नहीं उसमें सर्विलेंस वाला है, क्लॉज है, क्लास है, बस उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगाना है, इक्विपमेंट का। सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस भी आजकल आ गया, वो अभी मार्केट में अवेलेबल है, DRDO डेवलप किया। ये सब स्पेसिफिक देने से और ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, ये सब आने से कंट्रोल रूम रह के अपना आदमी भी उसमें मॉनिटर करेगा कंटिन्यूस 24/7, नहीं तो आप फिलफ्रेज का चांसेस बहुत है। ओके ठीक है, इसको सजेशन में हम लोग रखते हैं। नमस्कार सर। ओके हाँ यस। मैं भास्कर तिवारी, असिस्टेंट मैनेजर एनवायरनमेंट WCL से हूँ सर। मेरा क्वेश्चन माइन क्लोजर को रिलेटेड था कि जैसे आज की डेट में जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है MOC की, उसके अनुसार जो माइन क्लोजर कॉर्पस जो निकलता है सर, तो दैट इज ओनली a security deposit against the activities to be done against the mine closure. Right. Okay. So that's not the actual cost. The actual cost and the activities are to be done by the MDO जो करेगा, जो आदमी एक्चुअली ऑपरेट करेगा, ऑपरेटर जो होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जस्ट जैसे थोड़ी देर पहले इसको क्लैरिफाई किया गया कि जो माइन क्लोजर कॉर्पस होगा उसको हम लोग रिम्बर्स करेंगे उसको, बट व्हेन देयर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द MDO ऑन एग्जीक्यूटिंग द वर्क, so why we will reimburse that to them, because it's not a statutory fees sir, it's a guarantee against the execution of activities. वो रिइम्बर्स इसलिए करेंगे क्योंकि उसका पैसा भी वही पे कर रहा है, जो हर साल कॉर्पस में जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो भी MDO का ही कंट्रीब्यूशन जाता है, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं उसके पेमेंट्स में से, हम पेमेंट करेंगे लेकिन एडजस्ट कर देंगे उसकी पेमेंट में से। सो टेक्निकली ही इज पेइंग फॉर इट, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क ही डज इन प्रोग्रेसिव एंड फाइनल क्लोजर वो अपना क्लेम देगा और जो पैसा मिलेगा वो उसको जाएगा, बिकॉज पैसा अल्टीमेटली उसी ने दिया हुआ था। हाँ पैसा सर सबमिशन ये है कि सर पैसा अल्टीमेटली उसी ने दिया हुआ सर, बट दैट क्लेम हैज़ टू बी रिम्बर्स्ड बाय द CCO। हाँ तो वो जितना वो अपना, जब वो 5 साल के बाद एक प्रोग्रेसिव प्लान बता के बताएगा कि हमने इतना क्लोजर कर दिया है, CCO उसको एक्सेप्ट करेगा और उसका कॉर्पस में सपोज उस टाइम 15 करोड़ है, उसमें से वो 7.5 करोड़ बोलता है अलाउ करता है, इफ CCO अलाउज एंड गिव्स दैट 7.5 करोड़ बैक, दैट विल बी गिवन टू हिम। हाँ देन इट्स ओके सर, ये वाला। और अगर वो 7.5 की जगह 5 करोड़ देता है तो 5 ही करोड़ उसको मिलेगा। हाँ डेफिनेटली, जितना वो रिमर्स करेगा उतना ही उसको। हाँ जितना वो क्लेम करेगा और उसमें जितना उसको मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ कन्विंस CCO इज अबाउट इट। सर एक्चुअली इसमें मुद्दा क्या है कि सर एक्चुअल जो माइन क्लोजर कॉस्ट जो होती हैं बेसिकली वो दैट आर ऑल माइनिंग कॉस्ट, दैट आर ऑल बुक्ड इन आवर बुक ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज उसमें कोई सेपरेट एक्टिविटी ऐसा नहीं, उसको माइन क्लोजर के लिए सेपरेट कॉस्ट हेड्स बनाने पड़ेंगे, बिना उसके तो अगर वो माइनिंग कर रहा है और इंटरनल डंपिंग कर रहा है और इंटरनल डंपिंग को वो बोलेगा कि मेरा माइन क्लोजर एक्टिविटी है, दैट इज नॉट माइन क्लोजर। सर आज की डेट में सर जैसे जो गाइडलाइंस में जो एक्टिविटीज़ मेंशन है सर, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लेते हैं आइदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर जैसे भी हों, वो सारी की सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है और हमारे कॉस्ट शीट में बुकड रहती है, और वही सेम एक्टिविटीज़ को हम एक माइन क्लोजर एक्टिविटी की तरह भी ट्रीट करते हैं, जैसे इंटरनल डंपिंग है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ। नहीं, बट आगे जाके अगर आपको उस हेड का रिम्बर्समेंट लेना होगा तो यू नीड टू क्रिएट अ सेपरेट हेड फॉर दैट। आप अपने कॉस्ट में से, माइनिंग कॉस्ट में से आप उसमें से, अदरवाइज क्या होगा कि माइनिंग कॉस्ट इज सच अ बिग कॉस्ट, वो 2-3-4 करोड़ का पैसा तो आप कहीं से भी आप अपने डोजिंग वर्क ही दिखा दोगे, तो वैसा नहीं रहता है। द एक्टिविटीज नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड अगेंस्ट दोज एक्टिविटीज़ आपको सेपरेट कॉस्ट हेड्स क्रिएट करके वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि उतना पैसा बुक हुआ है, चाहे डिपार्टमेंटल डोजर ही काम कर रहा होगा, इट नीड्स टू बी शोन लाइक दैट, अदरवाइज वो पैसा वापस मिलेगा नहीं। कितने लोग के पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं CCO में, कहाँ पैसा मिल रहा है? डेफिनेटली सर, अपन लोग इसी उसमें मतलब यही हम इंटरप्रिटेशन अभी CCO के सामने मतलब डिस्कशन में ही है चीज़, हम लोगों ने उसी के बहुत सारे क्लेम नहीं, बट MDOs हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर दैट इफ दे आर डूइंग माइनिंग एक्टिविटी एंड द क्लोजर, प्रोग्रेसिव क्लोजर इज पार्ट ऑफ दैट माइनिंग, उसमें दैट कंपोनेंट ऑफ क्लोजर नीड्स टू बी क्रिएटेड एज अ सेपरेट विद इन माइनिंग। सर वही है सर, इसमें यहाँ पे एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि वेदर, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि सर इंटरनल डंपिंग विल बी टेकन एज अ माइन क्लोजर एक्टिविटी और नॉट, इट कैन बी टेकन एज अ डंपिंग इज नॉट माइन क्लोजर एक्टिविटी, इट इज वेरी क्लियर। हाँ, ग्रेडिंग करते हैं, कुछ करते हैं, रीग्रेडिंग करते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। अभी भी सर सब्सिडरीज में जैसे लाइक हमारे वहाँ भी स्टिल ऐसा ही है कि ग्रेडिंग तो हम तब कर पाएंगे जब इंटरनल डंपिंग होएगी। नहीं, बट इंटरनल डंपिंग इज अ कॉन्करेंट पार्ट ऑफ माइनिंग एंड देयर इज वन सर्कुलर, देयर इज वन क्लैरिटी व्हिच इज ऑलरेडी देयर। आई थिंक दिस इज नॉट नथिंग टू डू विद MDO कॉन्ट्रैक्ट्स एज सच, बट ये वाला जो पार्ट है इंटरनल डंपिंग इज नॉट अ माइन क्लोजर एक्टिविटी। हाँ, कहीं एक्सटर्नल डंप किया हुआ है उसको ला के इंटरनल डंप कर रहे हैं बाद में, दैट कुड बिकम, बिकॉज यू आर रीहैंडलिंग दैट मटेरियल एंड पुटिंग इट बैक इन द पिट।
बट कॉन्करेंट इंटरनल डंपिंग एज पार्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, सपोज क्लोजर की या माइन क्लोजर की गाइडलाइन नहीं होती तब भी आप इंटरनल डंप करते ही ना एज पार्ट ऑफ रेगुलर माइनिंग, तो फिर इट इज़ नॉट माइन क्लोजर. ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लर्निंग. सर एक तो लास्ट क्वेश्चन है. ओके सर एक तो लास्ट क्वेश्चन है. हाँ, माइक दीजिएगा प्लीज. 3 साल के लिए जो बीजी जमा किया गया है एग्रीमेंट के बाद, मैंने एलओए के बाद जो 90 डेज में जमा हुआ था, तो उसका 2024 का 19 अप्रैल को उसका मैंने एक्सपायरी डेट था. तो ये लोग पार्ट ऑफ द बीजी जो है करीब 25-26 करोड़ के आसपास है, उसको 19 महीना भी बचा हुआ है मोटा मोटी, उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं. तो इसका क्या प्रावधान है? इसमें कोई रिप्लेसमेंट का, ये जो जितना बीजी दिया हुआ है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का, तो उतना ही फिर उनको फिर रिन्यू कराना पड़ेगा, उतना ही. उसमें कोई पार्ट प्रोविजन नहीं है. नहीं, लीगली अलाउड है ये? नहीं है? नहीं. मान लीजिए 100 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ का बीजी है, उसमें से मान लीजिए 25-26 करोड़ को मैंने पुराना बीजी को सीसीएल के द्वारा इंस्ट्रक्ट करा करके उसको विड्रॉ करा करके उसका कंटिन्यूटी में ही वो 25-26 करोड़ का दूसरे बैंक का बीजी डालना चाह रहे हैं. वो लोग रिप्लेसमेंट कराना चाह रहे हैं. एज पर डॉक्यूमेंट आई डोंट नो, अभी ऐसा नहीं, कोई प्रोविज़न नहीं है. 100 करोड़ का है तो हाँ कर सकते हैं. तो अगर अदर कॉन्ट्रैक्ट है तब कर सकते हैं, लेकिन जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बीजी का रेफरेंस दिया है, तो हमको एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हमारा जो बीजी का डिटेल इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ये था, उसको हमने रिप्लेस किया है विद सिमिलर अमाउंट बट विद डिफरेंट बीजी. सो एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हैज टू बी साइंड. कॉम्पिटेंट अप्रूवल कौन करेगा? अमाउंट का तो कोई चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है. नहीं, इसका कॉम्पिटेंट अप्रूवल कौन करेगा? बोर्ड से होगा. देखिए, इसका कोई ऐसा डीओपी नहीं है, लेकिन इसमें यही है कि अगर आप एग्रीमेंट जो साइन किए हैं, अगर एग्रीमेंट साइन किए हैं जैसे जीएम एरिया जीएम सीसीएल के बिहाफ में साइन किया हुआ है, तो एग्रीमेंट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी एरिया जीएम ही करेंगे. तो उसमें अगर कोई बीजी रिप्लेस करके दे रहे हैं तो उसमें आपको बीजी आपके पास आ गया, आप उसको ऑथेंटिकेट करा सकते हैं. कराने के बाद आप एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करिए, उसके बाद पहले का बीजी आप लौटा सकते हैं. लाइक दिस. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. अब अभी हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं. हम लोग अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है किसी पर्टिकुलर से, तो वी विल डिस्कस विद रणदीप सर एंड ऑल दैट ड्यूरिंग टी ब्रेक, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू आफ्टर टी. लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, ओके. सर हमारा जो सीओडी, मतलब मैं थोड़ा लंबा है सर. सीओडी जो है पहले हेलो सर, हमारा सीओडी जो है फर्स्ट ईयर में अचीव हो गया सर. उसने जो माइलस्टोन था 1 साल का उसने कर लिया, ठीक है सर. उसके बाद क्या होता है कि उसको माइलस्टोन, हमारा जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स में प्रोजेक्ट माइलस्टोन अभी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग नहीं है. जो मॉडल डॉक्यूमेंट में वो क्या है कि एक्टिविटी वाइज मॉनिटरिंग है. तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे. उसने एक्टिविटीज़ कुछ किया नहीं, सीओडी उसका अचीव हो गया, उसको फुल पेमेंट मिल रहा है. उसने कुछ भी किया नहीं, खाली ओनली पेनल्टी ऑफ 0.25% ऑफ पीएसडी जो है वो जमा करते गया ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वो एक्यूमुलेट होते हुए जितना टर्मिनेशन अमाउंट है वहाँ तक पहुँच गया है ना सर. अभी आपके पास ऑप्शन है 100% प्रोडक्शन हो रहा है, आपके पास ऑप्शन है कि टर्मिनेट करना है कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अभी आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे कि आप यदि टर्मिनेट, अब तो नॉर्मली क्या होता है कि जब पीक में पहुंच जाता है फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके लीगलिटी में जाएं. तो इसीलिए हम जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट को, मतलब जो एसेस प्रोजेक्ट कॉस्ट उसने दिया 100, उसका सपोज 100 था एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, 75 उसका एसेस प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसने उतना किया नहीं. आप उसको मॉनिटर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने हटा दिया उसमें, और उसमें खाली पेनल्टी ही है. वो पेनल्टी देते गया. माइनिंग चार्ज में वो 100% जो एसेस प्रोजेक्ट कॉस्ट का कैपिटल वो उसमें उसको रिम्बर्स होते रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जब टर्मिनेशन का बात आया, आप लीगलिटी में फंस गए, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? उसलिए एक ठो ऑप्शन होना चाहिए कि उसको मतलब वो नहीं करता है तो सपोज 10 ईयर्स के बाद उसका कैपिटल जितना है उसका माइनिंग चार्ज से मतलब डिडक्शन करने का एक वैसा रखना चाहिए जैसे कि वो काउंटर हो पाए कि वो कैपिटल उतना इन्वेस्ट करे और प्रोजेक्ट को वो
जो मतलब एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बिल्डअप करें। नहीं, पर आप ये एक तरफ ये बोल रहे हैं कि वो सपोज 50 मिलियन की माइन है तो उसने 50 मिलियन का प्रोडक्शन कर दिया। हाँ। उस 50 मिलियन का प्रोडक्शन करने के लिए जो उसको रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सीएचपी चाहिए, सबस्टेशन चाहिए, बिना उसके वो करेगा कैसे? ही वुड हैव क्रिएटेड इट। इट बिकम्स अ हाइपोथेटिकल थिंग के उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ही काम कर रहा है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ देता है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बनाना है, अथॉरिटी के लिए बनाना है, उसके लिए बनाना है, 10 साल 20 साल तक नहीं किया, आपको तो चाहिए ना क्वार्टर्स, तो फिर आप क्या करेंगे? आप खुद भी नहीं बना पाइएगा क्योंकि आप एमडीओ को दिए हुए हैं, एमडीओ ले रहा है उसका कैपिटल, तो आप क्या करिएगा उसमें? आप 20 साल तक क्वार्टर नहीं बना के चलाएंगे प्रोजेक्ट आप, या फिर आप अपना इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, जो क्या है कि सर सीओडी के लिए है कि वो उस साल तक का माइलस्टोन अचीव करना चाहिए। 85% ऑफ फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट ईयर में ही इम्पोर्टेंट नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं सर, इनका कहना है, इनका जैसे हम लोग ने जो वो क्लॉज डाला है ना 85% उस साल का जो क्वांटिटी है, तो सपोज पहले साल में 0.5 का प्रोडक्शन था, किसी ने 0.5 कर लिया, चाहे वो 10 मिलियन की माइन है, तो पहले साल में ही उसका सीओडी हो गया। अगर फर्स्ट ईयर के माइलस्टोन अगर था या नहीं था, उसने फर्स्ट ईयर में ही उसको सीओडी हो गया। सो आफ्टर सीओडी माइनिंग चार्ज एडजस्टमेंट होना शुरू हो गया स्ट्रिपिंग रेशो वाला, और उसको पेमेंट फुली मिल रहा है। सो हाउ इट इज़ एंश्योर्ड कि वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो माइलस्टोन एक्टिविटीज़ में आता है वो करे? नहीं करने के लिए तो उस पे जो बता रहे हैं जो पेनल्टी है, हाँ सर, आपका कहना है कि वो पेनल्टी सफिशिएंट नहीं है? हाँ, बहुत मिनिमम है सर। 100 करोड़ का यदि पीएचटी है, 0.25% है, 2 लाख मतलब 2.5 लाख हुआ, तो महीना में 10 लाख हुआ, साल भर में 1 करोड़ हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 25 करोड़ हुआ। 3000 करोड़ का कैपिटल वो जो है इन्वेस्ट नहीं 3000 करोड़ का कैपिटल, आप सारे कैपिटल को नहीं, जो उसने नहीं किया है वो तो 3000 करोड़, 500 करोड़ का नहीं किया, और नहीं 500 करोड़ का क्या कैपिटल नहीं कर सकता? जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग 500 करोड़ का कभी हो नहीं सकता है ना एक प्रोजेक्ट में। जो देखिए 250 करोड़ का जो भी है, हमारा बलभद्र में भी 250 करोड़ का है। ओके, बलभद्र सर्विस में बिल्डिंग और सर्विस बिल्डिंग तो है, उसने 250 करोड़ का काम नहीं करने के एवज में आपके पास पेनल्टी बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। कितना आ रहा है बता रहे हैं? ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि 25 करोड़ है तो 10 करोड़ उसका अभी का प्रेजेंट वैल्यू आएगा। अभी के तो ये है कि प्रोजेक्ट माइलस्टोन नहीं अचीव करने पे जो पेनल्टी है वो इनसफिशिएंट। हाँ, नहीं। अच्छा ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, पर इस पे जो हमारे एमडीओ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेफिनेटली उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है, तभी कहानी पूरी होगी। नहीं, और सर ये एक्सपेक्टेशन के 50 मिलियन की माइन बन रही है और वो अपने लोगों के लिए घर नहीं बनाए और सर्विस बिल्डिंग्स नहीं बनाए, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं सर, पीआर के हिसाब से कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। बनाएगा वो दूसरी क्वालिटी का बना सकता है, स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं, बनाना तो उसको होगा ही। एआईसी को सर्टिफाई भी करना ही है उसको। नहीं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वो उतनी बड़ी माइन चला नहीं सकता है। सो इफ ही इज टू गो टू दैट लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आएगा ही। इसको सर थोड़ा सा देखने का जरूरत है। नहीं, जस्ट ए मिनट, इसमें नोट कर लेते हैं। एक चीज सिर्फ मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो एमडीओ की जो होल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उसके लिए जो पेमेंट है वो डेफिनेटली कंपनी से ले रहा है, तो नहीं बनाने का कोई रीजन नहीं। ओके, थैंक्स। Thank you very much. We will break for tea and assemble in 15 minutes time because we are already late. Thank you.
झारखंड राज्य में स्थित देश की प्रमुख कोयला खनन कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ झारखंड वासियों के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की अनेक CSR योजनाओं में से एक CCL के लाल लाडली सबसे सफल और लोकप्रिय योजना है, जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। इस पहल के अंतर्गत गरीब पृष्ठभूमि के मेधावी छात्र छात्राओं को CCL में कार्यरत IIT के पूर्व छात्रों द्वारा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। साथ ही उनको रहने खाने व स्कूली शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिसका खर्च CCL ही वहन करता है। I'm Tejasvi Kumari, CCL की लाडली बैच 4. I come from a small village near Makluski-Ganj. Here there are no facilities for class 11th and 12th. Then I came to know about CCL के लाल लाडली scholarship program. I applied for it and thankfully got selected in it. I'm very thankful to the entire CCL team as I have been able to crack JEE Advance and I'll be pursuing my BTech from IIT Dhanbad in Electronics and Communication Engineering. छात्रों का चयन राज्यव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इसकी सफलता इसी से आंकी जा सकती है कि स्थापना के बाद से ही 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया और इस वर्ष भी 10 बच्चों ने IIT के लिए क्वालिफाई किया है। आज योजना से लाभान्वित कई बच्चे देश के प्रमुख कॉरपोरेट कंपनियों में काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मेधावी छात्र मतुल बाघेल ने CCL के लाल योजना से कोचिंग कर NIT रायपुर में प्रवेश प्राप्त किया तथा वहां से इंजीनियरिंग करने के बाद CCL के नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र में इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। हम बच्चों का भविष्य संवारते हैं, इसलिए कोयला निकालते हैं। झारखंड राज्य में स्थित देश की प्रमुख झारखंड की खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण प्रदान कर उनके पंखों को उड़ान देने के लिए CCL ने कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में अपने CSR कार्यक्रम के अंतर्गत सन 2015 में राज्य सरकार के साथ मिलकर हुडवार रांची स्थित खेलगांव परिसर में खेल अकादमी एवं इसके संचालन के लिए झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना की, जिससे खेलो इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है। झारखंड के 24 जिलों में ट्रायल द्वारा 8 से 12 वर्ष के प्रतिभावान बच्चों का चयन कर उन्हें मुफ्त आवासीय शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पौष्टिक भोजन, मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है। चयनित प्रशिक्षुओं में 96% अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से आते हैं। एकेडमी में 437 कैडेट्स हैं, जिन्हें पढ़ाई एवं प्रशिक्षण में सहयोग के लिए टैबलेट भी दिए गए हैं। एकेडमी के कैडेट्स जैसे फ्लोरेंस बर्ला, दीपक टोप्पो, चंचला कुमारी एवं कई अन्य ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व प्रदर्शन कर राज्य एवं देश का नाम रोशन किया है। मेरा नाम निसीमा कुमारी है। मैं काके प्रखंड की रहने वाली हूँ। मैं फुटबॉल खेलती हूँ। मेरा सिलेक्शन फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 इंडिया कैंप के लिए हुआ है। यहाँ के कैडेट्स ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों को मिलाकर अब तक 845 पदक जीते हैं, जबकि एकेडमी में मात्र 10 खेल विधाओं को ही सम्मिलित किया गया है। शीघ्र ही 5 अन्य खेल विधाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इन प्रयासों को प्रथम नेशनल CSR अवार्ड एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सराहना भी मिली है। मेरा नाम सबीना कुमारी है। मैं JSSPS में 2018 से रह रही हूँ। मैं अभी 73 नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग ली थी। मैं उसमें एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीती। उपलब्धियों ने हम में और ऊर्जा भरी है और राज्य की खेल प्रतिभाओं के लिए एक आदर्श भविष्य निश्चय ही गढ़ेंगे। CCL CSR में खर्च करने वाली झारखंड की सबसे बड़ी कंपनी है।
जो अपने कमांड क्षेत्र और राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन को बदल रही है। CCL निगमित सामाजिक दायित्व का निर्वाह पूरे जिम्मेदारी के साथ करती है। अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों की हर प्रकार से सहायता करती है। इसी के तहत किशोरियों, गर्भवती महिलाओं की प्रसवोत्तर देखभाल, ग्रामीण बच्चों की नर्सरी शिक्षा और उनमें जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र के 5 जिलों के 728 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर उन्हें और अधिक प्रभावी एवं आकर्षक बनाने हेतु संबंध जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। इस समझौते के तहत उन आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीकरण, दीवारों में बच्चों के अनुकूल मनभावन पेंटिंग, स्वच्छ शौचालय का निर्माण, प्री स्कूल किट, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराए गए। मेरा दीवार में पेंटिंग हुआ है, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाने में सुविधा हुआ है और सभी बच्चों को हम इसी से बता भी सकते हैं और बच्चा भी वहाँ से पढ़ भी सकता है। इसके लिए 2020-21 और 21-22 के दौरान जिलों को कुल 10.92 करोड़ रुपए प्रदान किया जा रहा है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया गया है उनमें बोकारो के 100, रांची के 150, हजारीबाग के 61, रामगढ़ के 150, लातेहार के 167 एवं चतरा के 100 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल है। गांव में संसाधनों की उपलब्धता विकास का प्राथमिक लक्ष्य है। ये प्रोजेक्ट इस दिशा में देश एवं राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रभावी साबित हुआ है। तो हम CCL को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे को बहुत अच्छा से सुविधा मिल गया है, पढ़ने में भी आसानी हो रहा है, उसके बाद हाथ पैर धोने के लिए भी आसानी हो रहा है, बाथरूम जाने के लिए मतलब बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। खनिज संपदाओं से समृद्ध झारखंड राज्य में स्थित सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड कोयला खनन कर न सिर्फ देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए भी सतत प्रयासरत है। इसी कड़ी में CCL द्वारा अपने कमांड क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु CSR के तहत देश की अग्रणी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। इस पहल के अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों के 320 युवा छात्र छात्राओं को सीपेट द्वारा 6 महीने का आधुनिक और रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिए जा रहे इस निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की संकल्पना प्लास्टिक उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रशिक्षण को प्लास्टिक प्रोसेसिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक एक्सट्रूजन और टूल रूम जैसे 4 विषयों में बांटा गया है। राज्य के छात्र छात्राओं को अब न सिर्फ बेहतरीन औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है, बल्कि प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उन्हें रोजगार की गारंटी भी दी जा रही है। वर्तमान में हमारे कमांड क्षेत्र के 160 प्रतिभाशाली युवा इस महत्वाकांक्षी पहल से जुड़कर अपने और अपने परिवार के सुनहरे भविष्य की नींव रख रहे हैं। CCL के द्वारा यहाँ मेरा सीपेट में मेरा चयन हुआ, मैं यहाँ सीपेट में आया हूँ। यहाँ मेरा CCL के द्वारा रहना खाना सारा कुछ CCL के तरफ से है। I am thankful to CCL for selected me free course of 6 months in CPET रांची। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के CCL के इस प्रयास से आने वाले समय में सैकड़ों छात्र जुड़कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेंगे। पानी और प्रकाश हमारी प्रमुख आवश्यकताएं हैं। इनके बिना जीवन यापन आसान नहीं होता। इनकी कमी से हमारा विकास प्रभावित होता है। झारखंड के दुर्गम क्षेत्रों में बसने वाले गांवों में भी यह सुविधा सुलभ नहीं है। CCL के खनन क्षेत्रों के आसपास भी ऐसे कई गांव हैं। अतः CCL ने कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में अपने CSR कार्यक्रम के अंतर्गत सन 2020 में ऐसे गांवों को सोलर ऊर्जा से पेयजल तथा रोशनी पहुंचाने की पहल की है।
और चंद महीनों में ही यहाँ के लोगों के चेहरों पर आ गई अनूठी चमक। इसमें लाइट का बहुत दिक्कत था हमारे गांव में, तो 1500 सोलर पैनल के साथ पंखा और बैटरी और 2 बल्ब ग्रामीणों को दिया गया है। दरअसल चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में स्थित सीसीएल के आम्रपाली, ओसीपी तथा चंद्रगुप्त परियोजना क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित कई गांव हैं। इनमें से होन्हे, कुमरंग खुर्द, कोयाड बिरहोर टोला, कुमरंग कला, बिंगलाट तथा उस्सू गांवों को रोशन करने के लिए कुल 1500 घरेलू सौर इकाइयों की स्थापना की गई है। प्रत्येक सोलर पैनल, बैटरी तथा कंट्रोल यूनिट के द्वारा ग्रामीणों को एक टेबल फैन, 2 एलईडी बल्ब तथा एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिल गई है। इससे न सिर्फ उन गांवों के बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से हो पा रही है, वरन घर के अन्य कामकाज भी सुचारू रूप से संपादित हो पा रहे हैं। इन सोलर यूनिटों का रखरखाव आसान है, फिर भी ग्रामीणों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। दूसरी ओर लातेहार तथा चतरा जिले के परियोजना प्रभावित कुल 21 गांवों में 41 डीप बोरवेल करवाए गए हैं। इनमें शुद्ध पेयजल की सहज आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा चालित पंप युक्त ओवरहेड टैंक भी लगवाए गए हैं। सीसीएल अपनी परियोजना क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए सदैव तत्पर है। पानी बिजली मुफ्त मिला, ग्रामीणों का मुखमंडल खिला। कोल इंडिया हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ये आप समझ के रखिए। और आने वाले 20-25 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए कोयला बहुत जरूरी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। इट इज द मोस्ट नेसेसरी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। Coal Indian companies, the subsidiaries, they have a long history of working in the states, eastern states and central states of India, and have a very good connect with the local people and the local communities. In my tours, my reviews, I have found that they have completely been honest in the task of keeping up the environment of the states they are working in. And I have no doubt that in the times to come, Coal India Limited will come out as a great promoter of environment, forestry and air quality of the regions that it is working in. Coal India Limited is the premier coal mining company in India. It is government owned and headquartered in Kolkata. It is in fact the largest coal producing company. Okay, welcome back. Welcome back everyone. So, we'll be starting today's last session. Before starting the session, there is a special announcement for all the area general managers of CCL who are requested to mark their presence in tomorrow's session as well for interaction and discussion. And all the participants from different subsidiaries will be getting their participating certificates in tomorrow's valedictory session. Also, there is an announcement for all those people who have made queries in the previous technical sessions held today. You all are requested to kindly mail your queries on the email ID gmcmc.ccl@coalindia.in, gmcmc.ccl
coalindia.in from your respective official email IDs for official purpose record. Now, moving ahead, I would like to call upon Mr. Neeraj Kumar Sinha, Area General Manager, Hazaribagh Area, CCL, for his experience sharing. Mr. Neeraj Kumar Sinha. Please welcome with a huge round of applause. Good afternoon to everybody. Actually, it is my great privilege that we have started this first MDO project in our area, that is Kotre Basantpur. And actually just after awarding this contract, we are very much ahead of the all works regarding EC and FC. We are quite ahead as per our programs, but due to certain observations from ESC, we are just still awaited the final permission. But we will expecting that we will get the permission very soon, and we will start this project as scheduled, time given in the project award contract. Actually, this is a very good project. Actually, most of the land is forest land. Out of 1162 hectares land, more than 1000 hectare land is forest land. So once we get the approval, permission of forest clearance, and we will certainly do our commitment as given in the contracts. And my project officer, Mr. Hui, is now just give you some brief about the work taken up by our sides till date, and the problems that we are facing right now in implementing this project. Thank you very much. Good evening, sir. Sir, I will share some of the experiences we have gained during the operationalization of this MDO project. This is the first MDO project, and this is a coking coal project. Next slide. As it says, it is a peak rated capacity is 5 MTY, and mineable reserve is 149.65 million ton. OB to be generated is 718.57, and it is located in northwest Bokaro coalfield at the northernmost end. Next, please. Sir, I would like to add that this project is having one of the most difficult geological condition, and it is having 18 seams, and only 8 seams are having thickness more than 3 meter, and it has 11 number of major faults having through 5 to 300 meter. Next. Now, one more information I would like to point out, that this is a coal block allotted under Coal Mine Special Provision Act, CMSP Act. So for that we had to deposit a hefty amount of 286 crore of bank guarantee with Ministry of Coal for obtaining this block. So that is also a important point. Now this agreement has been signed with mine operator on 21st June 2021. PMPL AMR Consortium is our MDO, and we would like to say that we are, as our general manager has already pointed out, that we are quite ahead in getting EC, FC and getting other statutory approvals. Next slide, please. We are, in fact, 2 expert appraisal committee meeting has already taken place for grant of EC. They had some observation
on specifically on mine plan. And our Forest Advisory Committee meeting is likely to take place on 17th of this month, 17th October. Just now, I have received a message that we have already obtained no objection certificate from Central Groundwater Authority, and we have also obtained NOC from DVC for Nala diversion, and our DPR for Kedla Dania railway line for the exit railway route for this coking coal, that has also been approved by the railway authorities. And we have also done site-specific wildlife management plan that is prepared, and that has been submitted to DFO Ramgarh. And soil and moisture conservation and draft carbon emission and sequestration report has also been prepared. Next. Sir, we have some issues. I would like to share some of the issues what we are facing. Next slide, please. Sir, this is the clause in contract condition regarding statutory cost. As it has already been pointed out, that statutory cost and fees needs to be clearly specified in Article 47, which is dedicated to definition chapter. Because it is ultimately financial matter, and every financial matter is scrutinized thoroughly. So it is better to avoid dispute. It is definition of statutory cost and fees is included in the Article 47 of the contract agreement. Then one more thing I would like to point out at that this agreement is for 25 years. 25 is a pretty long time. So it is more or less 2 generations. And there will be lot more situation when there will be change of scope, change of law, statutory laws. So my humble request is that a suitable formula for compensating the mine operator, or getting the advantage the mine operator is getting out of the situation arises, then that should be specified in model contract agreement. Some direction should be there to the project proponents. So this is my humble submission. The next slide. Next. Next. Sir, one more humble submission is that one chapter is dedicated in the contract agreement regarding dispute resolution procedure. Sir, dispute resolution procedure, sir, since I have said this is a pretty long contract for 25 years, and this is a sort of marriage, arranged marriage, and we cannot break so easily. So lot of disputes are bound to arise. One chapter is dedicated to dispute resolution procedure, and that is not comprehensive. Only thing that is mentioned that a high-level committee shall be constituted, and such committee shall be headed by a board-level officer of the authority. Now, my humble submission is that the board-level committee, the committee under the chairmanship of board-level officer of the authority should be held by a suitably equipped department at the corporate headquarters, and we need to groom a lot of young executives who are thorough in mining, legal, financial aspects, so as to support this sort of contract. So my humble submission is that at headquarter level, a group of young executives from multiple disciplines need to be groomed as experts of MDO contract to assist high-level committee. At the same time, there will be lot of disputes which may be resolved at area level. This agreement is silent about the dispute resolution procedure at area level. A committee at the area level should also be constituted, and that should be defined who will be the chairman of that committee and how the disputes will be resolved. Some of the experts should also be posted at every area who will take up the issues at area level. Next slide, please. One more humble submission, sir. These contracts are, as respected speaker in the morning hours said,
mine plan is the Bible of the MDO contract. We cannot deviate from the mine plan. Sir, a mine plan, if it is the, and it then culminates into a big commercial contract where other party is also there and they come with some expectation. Sir, it happens that during implementation there are a lot of questions on mine plan, and my humble submission is that the mine plan should be scrutinized at the corporate level through a committee of various executives from environment, forest, mining, civil, mechanical, and people from from retired forest officials or experts in that field who are associated with the recent MOC of guidelines and their expectations should also be in that committee to scrutinize the mine plan at the corporate level before it is put up to empowered subcommittee of directors for its approval. Because this will address so many issues like climate change, socio-economic needs, which will come up and crop up during the course of implementation of the project. Thank you, sir. Thank you, Rajiv. We have one. Is there any query regarding this experience sharing? We will go forward to another presentation from Piparwar Underground MDO. Mr. Haldar is there? Respected audience, Shri C.B. Sahai GM Piparwar could not be present due to some other engagement, so I am Nishant Lakta, Assistant Manager Mining on his behalf. Please start. As you can see, the Piparwar Phase 1 Underground MDO project. Next, please. Agreement with JMS Mining Private Limited was signed on 29 August 22 in the presence of respective CMD, sir. Next, please. So as you can see the parameters of the Piparwar underground mine. The reserve is 14.92 million, extractable reserve is 8.83 million. Only one seam will be extracted, that is lower Bachra seam. The gradient is 1 in 10 to 1 in 40. The coal quality generally G4 and G6. The area will be 4.04 square kilometers. Seam wise thickness is up to 8.42 meters. Depth will be 194 meters. And the parting is 91 to 114. Next, please. The value of the contract is 1889.04 crores. And the life of the mine is 14 years and the period of contract is also 14 years. The annual mine capacity will be 0.87 million ton per annum. Next. So as you can see the land details, the land was already acquired for the Piparwar open cast project. So this is the present status of the conditions precedent. The land in totality has been already acquired and is in possession. The application for FC has been made in March 20. Application for EC has also been made in March 20. And the terms of reference have already been issued in June 20. The project report has been approved by the CCL board. And as the land is already acquired and is in our possession, so R&R activities are not, R&R policy is not applicable for this project. Next, please. So this is the schedule for the 14 years. The initial 2 years will be the development phase and the third year is when the production will be started. And it will reach the peak capacity in the 5th year and the peak capacity will last until the 12th year.
Next, please. So the site has been divided into 3 blocks. The first block is under which the mine will be located. The second block is on which the township project will be situated. The land for the second block will be provided by the by Piparwar management in the township area. And the third block is located adjacent to the first block, which will house the CHP coal depot and other project facilities like the electrical and mechanical departments. Next, please. Yeah, so this is the site plan for the first and third block. The second block will be provided in the township area. Yeah, next. Yeah, so there will be 3 mine entries. One will be used for the intake. The other will be for the belt conveyor. The third one will be for the return. Next. Yeah, so coal wheeling method will be by the Bowden pillar, and both low height continuous miner and the standard height continuous miner will be used for the extraction of the seams. Next. Yeah, so these are the technical details of the coaling in method. Next. Yeah. So thank you on behalf of Piparwar area. Three MDOs have been awarded in CCL. One in Hazaribagh area, that is Kotre Basantpur. Another is Piparwar Underground in Piparwar area. And the third one is Chandragupt in Amrapali Chandragupt area. So we will have a last experience sharing from Amrapali Chandragupt area. Avnish Kumar Saab and GM Saab, please share your experience on development after award of the contract. सभागार में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी को पहले ही ये बताया जा चुका है कि सीसीएल में 3 एमडीओ प्रोजेक्ट अवार्ड हुए हैं, उसमें से 2 का प्रेजेंटेशन हो चुका है और तीसरा जो है चंद्रगुप्त प्रोजेक्ट जो है, जो आम्रपाली एरिया के अंतर्गत आता है, उसका जो संक्षिप्त विवरण है आपके समक्ष उपस्थित है, जिसमें 1495 हेक्टेयर ज़मीन का एक्विजिशन होना है। इसमें से 1378 हेक्टेयर ज़मीन का एक्विजिशन हो चुका है। बाकी ज़मीन का सेक्शन 7141 हो चुका है। 71 के लिए एप्लीकेशन जो है प्रोग्रेस में है। इस माइन की कैपेसिटी 15 मिलियन टन पर ईयर रखा गया है और इसके लिए EIA EMP इसका ऑलमोस्ट फाइनल कंडीशन में है। ये जैसे ही हो जाता है तो इसका EC FC के लिए भी स्टेज 1 के लिए इसका एप्लीकेशन किया जा चुका है, जो कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है, जिसमें RCCF का जो इंस्पेक्शन होना है वो इंस्पेक्शन हो चुका है। उसके बाद वो अपना जो इंस्पेक्शन नोट है वो सबमिट करेंगे और यह MDO जो है ये काफ़ी अच्छे स्थिति में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी टीम काफ़ी अच्छी है और उनको हम लोगों के तरफ से भी भरपूर सहयोग है, पूरा मॉनिटरिंग है, जिसमें इस प्रोजेक्ट को जो शेड्यूल डेट था उसके हिसाब से इनका सारा कार्य चल रहा है। इसमें लगभग 10 सीम है, वर्किंग सीम्स 10 हैं, 4B से लेकर के 1 बॉटम तक इसमें 10 सीम आता है और 1.06 मीटर से लेकर के 10.09 मीटर थिकनेस तक का इसमें सब सीम आता है। टोटल कोयला जो इसमें माइनेबल है दैट इज़ 527.30 मिलियन टन्स एंड OB is 995.34 million cubic meter. The only issue for this project is dumping. इसका जो initial dumping होना है that has to be dumped in the
area of Amrapali OCP excavated area. तो इसमें कोई भी जगह ऐसा नहीं है जो नॉन कोल बियरिंग एरिया है. द होल एरिया इज कोल बियरिंग एरिया, इसलिए इसका इनिशियल डंपिंग ऑलमोस्ट 48 मिलियन क्यूबिक मीटर वो भी जो है वो इसका डंपिंग आपका आम्रपाली का जो एक्सकेवेटेड एरिया होगा उसमें होगा. इसमें जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी इसमें इन लोगों का जो एक्टिविटी है उन लोगों ने अपना प्लान चार्ट आउट किया है और उसके हिसाब से उनकी एक्टिविटी चल रही है. इसके बारे में विशेष जानकारी आपको अवनीश कुमार जी जो इसके कोऑर्डिनेट जीएम माइनिंग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपको बताएंगे. धन्यवाद. थैंक यू सर. इसका नेट जियोलॉजिकल रिजर्व 709 मिलियन टन है और माइनेबल रिजर्व 527 मिलियन टन है. स्ट्रिपिंग रेशियो 1.89. लाइफ ऑफ द माइन 41 ईयर्स है लेकिन कंट्रैक्ट 25 ईयर्स का है. एवरेज स्ट्राइक लेंथ 3 सेक्टर में बांटा हुआ है. सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3. सेक्टर 1 का 2.2 है, सेक्टर 2 का 2.5, सेक्टर 3 का 1.75. डेप्थ ऑफ क्वेरी, एवरेज डेप्थ ऑफ क्वेरी सेक्टर 1 का 70 मीटर है, सेक्टर 2 170 मीटर, सेक्टर 3 250 मीटर. डीप ऑफ द सीम 1 in 15. एरिया ऑफ एक्सकेवेशन टोटल 1333.15. नेक्स्ट टोटल इसमें पूरा प्रॉपर्टी में 4 सीम है. सीम 4 2 पार्ट में, सीम 4B 4A. एवरेज थिकनेस इसका 1 मीटर से लेकर के सीम 1 टॉप का 10 मीटर है. ये वहाँ का सीम का बोरल सेक्शन. नेक्स्ट प्रपोज कैलेंडर प्लान. फर्स्ट ईयर में कोल प्रोडक्शन 2.8 और अप टू 13 ईयर्स. नेक्स्ट नेक्स्ट total volume of overburden from all the 3 sections of the proposed OCP has been estimated as 995.34 million cubic meter. अभी जैसा हम लोग का जीएम साहब बोले एक्सटर्नल डंपिंग के लिए, एक्सटर्नल डंपिंग का उसमें आम्रपाली में करना है 70.38 मिलियन क्यूबिक मीटर. लीड आम्रपाली का पड़ेगा 3 किलोमीटर के आसपास. नेक्स्ट G11 टोटल सिम का ग्रेड G11 है. 2 मेथड से करना है, सरफेस माइनर एंड सोवल डंपर कम्बिनेशन. इसमें 90% सरफेस माइनर से करना है और 10% सोवल डंपर कन्वेशन. हाँ ये सेलो का है सर. सेलो का उसमें प्रोविज़न है. प्रीवियस स्लाइड
The crushed coal of -1 will be conveyed to the silo through reclaim conveyors. Next, टोटल 1495 हेक्टेयर चाहिए, जिसमें 699 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है जिसका की एप्लीकेशन हो चुका है, एंड 9 फॉरेस्ट लैंड 795 हेक्टेयर्स. नेक्स्ट लैंडस्केप है वहाँ पे. दो रिवर वहाँ पर है, एक मेन रिवर जो कि अम्रपाली और चंद्रगुप्त को डिवाइड करता है, वो बरकी रिवर ऑल अलोंग प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है. नौ विलेज है उसमें, पूरा उसका वो लीजोल्ड एरिया में. And approximate numbers of project affected families 500 जिस समय उसका सर्वे हुआ था. टोटल कॉस्ट इन lakhs 2974.73. Next, repeat कर रहे हैं. माइनिंग चार्ज कितना है? माइनिंग चार्ज अच्छा. नेक्स्ट, ये विलेज का डिटेल्स है. नहीं कुछ रिवर डाइवर्शन भी MDO का है क्या? LNR डिपार्टमेंट से कुछ हेल्प चाहिए हम लोग का. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, लैंड रिकॉर्ड, केस रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विलेज फॉल्स अंडर प्रोजेक्ट एरिया ऑफ चंद्रगुप्त. प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड फॉर पोजेशन ऑफ लैंड. A senior officer from LNR department should be authorized as nodal officer for this project to provide all past record to MDO and Chandragupta project. LNR department of CCL should guide us in land possession and allied activities. Issues of MDO. Chandragupta project is prestigious project of CCL and it includes target of 1 million ton coal production of Coal India. A practice of monthly meeting with team of MDO has been started to discuss all issues with them and develop proper record right from beginning of this contract.
Separate experienced L&R teams would be required for dealing matter of land acquisition, compensation, house compensation and employment processing of villagers. T9. Next. Thank you. Thank you, Avnish Kumar Sahab and GM Amanpali Chandragupta. Before I call upon CMPDI team for sharing on revenue sharing basis contract, there is one announcement. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बहुत सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट था कि जो पार्टिसिपेंट्स है उनमें से रिक्वेस्ट था ये IRR NPV ये जो फाइनेंशियल टर्म्स है जो आता है अक्सर इसका बारे में कोई डिटेलिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल सवेरे 10 बजे जो है हम 10 से 10:30 बजे, एक्चुअल सेशन हमारा 10:30 बजे चालू है, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम हम वो पीरियड में कभी कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 10 बजे से हम अपना सेशन चालू कर रहे हैं। 10 से 10:30 बजे तक ये एक क्लास होगा जो IRR का रेलेवेंस कितना है और उसका और डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होगा। IRR में भी बहुत सारे मेथड्स हैं और NPV वगैरह इसका क्या रेलेवेंस है, कितना हम उसमें समझते हैं। एक इसका बारे में कल आधा घंटा का एक सेशन रखा हुआ है। मिस्टर संजय सिंह जो है अपना इसका सेशन लेंगे। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी हियर एट शार्प 10 o'clock। सभी से रिक्वेस्ट है। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो सजेशंस है हमने नोट किया है, मगर फिर भी नाम वगैरह आप उसमें मिस हो सकते हैं। इसीलिए दोबारा सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो भी सजेशन आया है या और आगे आपका मन में अभी तक जो और सजेशंस है या इश्यूज़ है उसको आप प्लीज़ राइटिंग में रिकॉर्ड करके कल सवेरे हमको हैंड ओवर करिएगा, ताकि इसको हम हाईएस्ट लेवल में पहुंचा सकें और ये सेशन का फुल यूटिलाइजेशन, फुल बेनिफिट हम ले सकते हैं। धन्यवाद। कोई एक ईमेल आईडी दे दीजिए जिसमें भी लोग भेज सकते हैं। That has already been announced that whosoever wants to send it by email, they can send it to gmcmc.ccl@coalindia.in. That is the official email ID of GMCC CMC CCL. So I will request a team from CMPDI to have a discussion on. Before that, we have heard experiences from 3 project officials of CCL. सुनने के बाद लगा कि कोई hindrances है नहीं। Is it like that? और कोई difficulties के बारे में भी कुछ बताएंगे? Actually, Piparwar and Chandragupta have been awarded recently only, so there are very less activities that have been done. They are already going as per plan, but there are some issues in KBP which have already been highlighted by their team. Okay. So I will request the team from CMPDI to have a session on revenue sharing contracts. Good afternoon, everybody. Just like previous presentation from CMPDI, मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड बता दूंगा कि किस बैकग्राउंड में ये रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे ये मॉडल डॉक्यूमेंट बना था, और उसके बाद माय कलीग राकेश प्रधान विल टेक इट ओवर। जब मिनिस्ट्री ऑफ कोल वाज ऑक्शनिंग कोल ब्लॉक्स फॉर private sector mines after promulgation of CMSP Act in 2015, उस समय only NDUs के लिए ही coal block का auction हो रहा था, but in the CMSP Act itself provision was made for commercial auctioning of coal blocks. That is, the block owners will be free to sell coal in the market at the market driven price.
तो वहाँ से क्लू लेकर के एक सजेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ कोल से इसी साल अराउंड फरवरी मार्च कि व्हाई नॉट द माइंस विच हैव बीन either closed or discontinued for a long time, and we don't have any proposal to reopen these mines by us. So why not offer these mines to anybody else, in particularly private sectors, to have extraction from those mines. तो उसमें ये आया कि उसका मोडालिटीज़ क्या होगा. पर टन बेसिस पे एक बार ट्राई किया गया है. वी ट्राइड वंस टू ऑफर दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूड कोल माइंस एंड पर टन बेसिस. नो रिस्पॉन्स वाज देयर, एंड फ्रॉम इंडस्ट्री इटसेल्फ some demand came that why not you try the revenue sharing model that has been adopted by Ministry of Coal from I think it was in June 2020, and Prime Minister himself inaugurated that first tranche of auction. Taking clue from there, we prepared a document for discontinued mines on revenue sharing basis. Basically, what is the difference between normal MDO like MDO for open cast, MDO for underground, and this MDO for discontinued mine? For normal MDO, the thing is that we could have taken up mining by departmental itself. However, to have enhanced efficiency of private sector, we are offering these mines to MDO for operation, but the statutory manpower is ours. The project report is being prepared by us, and the mining plan of course is ours, and MDO is to follow that mining plan itself. But here in the discontinued mines, we don't have any project report or mining plan for those mines, and whatever cost has been incurred in those mines are sunk cost. We are not getting to have any return out of that, whatever have been invested in those mines. So we framed a document which was based on net present value basis, and in that the project the MDOs are supposed to prepare a mining plan and a production schedule, and they are to follow their mining plan only. So they can even have for a particular block, for a particular discontinued mine, they can have open cast mine, they can have underground mine, they can have high wall mine, and a combination of more than one technologies. So based on that, based on their production schedule, they will be quoting a revenue sharing percentage, and we have devised one methodology for calculating the H1 bidder, and they will be awarded, and they are free to work as per their mining plan. The second difference is that in MDO, statutory manpower is ours. So the statutory liabilities with respect to Mines Act is ours. But here, after more than 1-2 discussions with DGMS, we could convince DGMS that yes, as no capital is to be invested further by the authority, that is subsidiary companies, and all the money that is to be invested there
will be of MDOs. So they will have the right to appoint all the statutory manpower, and they will be the owner of the mine for Mines Act purpose. So these are the two basic differences with respect to normal MDO contracts and these revenue sharing basis. With this word, I will hand over to my colleague Rakesh Pradhan to give the details of these models. Thank you, sir. My first request is that this session was earlier to be conducted in a span of some 45 minutes, but due to in short span of time, we have to reduce the timeline to some 15 to 20 minutes. So first I will complete the presentation, and then I will accept questions from you. So, next slide, please. So as my GM described, these are the discontinued mines are those mines which were earlier discontinued or closed because of some geological constraints, mine, fire, inundation, or technological constraints, whatever may be, and Coal India has a number of mines, as you all know. So initially we have taken up the model for mining charge per term basis to capitalize those mines, but we were unsuccessful, and then we changed the model to revenue sharing basis. Next slide, please. So the proposed modalities, here we are offering the mine is as is where is basis. That's we are not charging any cost to the MDOs for these mines, and the period is 25 years or until the proposed life of the mine, and it is the same as in the case of open cast and underground also. And here the flexibility has been given to the mine operators that they are free to adopt the mining method. They can adopt open cast, underground, high wall, or combination of mining methods. Maybe the number of mines that has been closed, those may be of underground in nature, but we have given a freedom to them again that right now they can adopt their technology and mining method as per them. Next slide. Here we are declaring the mine operator to be the owner as per the Mines Act 1952. Because we are not charging anything from them towards the infrastructure, and also we are not in a mood to give any manpower in this case except the engineer in charge. That's why we are giving the ownership as per a Mines Act to the mine operator itself, and the authority shall be owner for the coal produced from the mine, and the mine operator will have the marketing to freedom to sell the coal at the market driven price through auction process on behalf of the authority on a portal decided by the authority. मतलब यहाँ पे माइन ऑपरेटर ही कोयला प्रोड्यूस करेगा और वो सेल करेगा, लेकिन जो पोर्टल होगा वो अथॉरिटी का होगा, दैट मीन्स कोल इंडिया का होगा. एंड द सेल प्रोसीड्स, इसमें से जो भी सेल प्रोसीड्स आएगा दैट विल बी डिपॉजिटेड इन ए एस्क्रो अकाउंट. द कंसेप्ट आई विल डिस्क्राइब फर्दर. नेक्स्ट स्लाइड. Here the qualification criteria, as you all know, in all of our earlier documents we said there are two capacities, that is technical capacity and financial capacity. But for the recent amendment just some 1 month ago for the first tranche, we removed the technical capacity for these mines. Here there is no technical capacity as of now. It should be only a government company, corporation or a JV. That's next slide. And a financial capacity, the previous slide please. Next. And the financial capacity, here the financial capacity is linked with the production, and we have kept the parameters fixed. As in the earlier cases we saw that the financial capacity is linked to the estimated project cost and assessed project cost. Here the case is not the same. Here we have, as per the production, we have kept a range, and as per the range we have fixed the minimum net worth and average annual income. Accordingly we have fixed the financial capacity. So for an example, here we have given as here the main parameter depending upon which we are considering or the damages, all the penalties, that is the annual sale value, and the annual sale value is calculated upon the maximum coal production in a year and the sale value of coal as per national coal index.
and accordingly the third column you can see the annual sale value that is calculated upon the maximum coal production and the sale value. And here the net worth and the total income that is fixed upon the production. This is not linked to any parameters, only production based. Next slide. Here the bidding parameters, it is also here it is a two-stage process, and here we are not going for the mining charge per ton basis, and here we are going for revenue to be shared for the authority, and the floor percentage for the revenue to be shared is 4%, and application fee is again nil, and the bid security is only 1 crore. Next slide. So for the evaluation of the bids, we are calculating net present production. So the net present production is multiplied with the percentage of revenue shared with the authority, and it should be determined for each bidder, and accordingly we will determine the H1 bidder. So I will make you understand it through a table in the next slide. Please next slide. So here what we have done, we have taken the year, and to calculate the net present production, we have taken a discounted factor of 10% in the second column, and we have considered 3 bidders here. So for the 3 bidders, applying the discounted factor, we are calculating the net present production, that is the last 3 columns. Accordingly, we are determining the total net present production and the quoted percentage of revenue share that the mine operator agreed to share with us, and accordingly we take the last row, that is the product of the net present production and the percentage of revenue quoted, and depending upon this which one will be the H1 bidder, that is in this case you can see that 80.96 he has been considered as the H1 bidder. Next slide. So after determining the H1 bidder, or we call the preferred bidder, then also to determine the viability of the project, we have some parameters, and those parameters as expenses during the operation of the mines, that is essential manpower. As you all I have already described, we are giving very minimum manpower in this case, and the revenue to be shared with the authority. And one more thing, we faced several questions in this regard. Previous investment made by the authority prior to reopening of the mine shall not be considered while calculating the viability of the project. That means हम लोग जो भी उसको infrastructures दे रहे हैं उसको हम लोग viability calculation के लिए consider नहीं करेंगे H1 determination के बाद. Next slide. And performance security. Earlier the performance security, it has been linked to the estimated project cost, but here there is no estimated project cost because we don't have a PR in this case. We have only thing, that is annual sale value, and which has to be calculated from the mining scheme that has been given by the bidder. And from the mining scheme we have to determine the performance security, and that should be, performance security should be 5% of the annual sale value. And to reiterate the annual sale value once again, annual sale value shall mean the value estimated by multiplying the maximum coal production in a year as proposed by the bid with the coal price as per national coal index given in the mine profile. ये जो mine profile का में जो डाटा होता है इसको बिडर को ही देना पड़ता है, और उसी हिसाब से हम लोगों को एनुअल सेल वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे, और उस एनुअल सेल वैल्यू से हम ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5% करके निकालेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. So as you know, the purpose of SPV, and the SPV was there already in our open cast and underground models, and similar concept, and the purpose is specially to undertake the MDO operations. And here the paid up and subscribed capital of the SPP is 15% of the annual sale value. मैं और एक बार आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट और एसेस प्रोजेक्ट कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनुअल सेल वैल्यू के कंसेप्ट के ऊपर ही चल रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड. एंड नाउ कम्स टू द कंडीशंस प्रेसिडेंट. कंडीशन प्रेसिडेंट में अर्लियर हम लोग क्या कर रहे थे ना, कुछ पार्ट अथॉरिटी के पार्ट में रह रहा था और कुछ पार्ट हम लोग ऑपरेटर को दे रहे थे, लेकिन इस केस में हम लोग कोई भी मैक्सिमम ऑफ द पार्ट हम लोग माइन ऑपरेटर्स को ही इस केस में करना पड़ेगा. इस केस में हम लोग वी हैव टू ओनली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द माइनिंग प्लान, एंड अगेन द एप्लीकेशन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन and application for the TOR including EC and FC. Only the application part. We are not going to exactly involve in the process. Only application being the authority, we have to do this. Next slide. So for the mine operator, the condition precedent, mine operator has to procure the land acquisition
they have to prepare a geological report if required, and the geological report preparation, it is again in the square bracket. So it is optional that they can prepare or they cannot prepare. I will come to the cases. And they have to approve the mining plan, because we don't have a mining plan, so they have to approve their own mining plan, but this mining plan should be the mining scheme they have submitted. And they have to prepare the detailed project report. Next slide. They have to approve the R&R plan, conduct the socio-economic impact assessment, land use pattern study, and also they have to execute and procure substitution agreement and financial agreement. And after fulfilling of the condition precedent, contract period will start, and that is known as appointed date. Next slide. And here the commercial operation date, the concept is a bit different here. Here the commercial operation date definition is the first day of the succeeding account year of the year in which the excavation and extraction and delivery of the coal of at least 50% of the contracted capacity is achieved by the mine operator as certified by the engineer in charge shall be the commercial operation date. Earlier आपने दो केसेस देखा होगा, 85% और 50% का कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कमर्शियल ऑपरेशन डेट इसको सिर्फ हम 50% में ही रखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Again the responsibilities of the mine operator. Here some of my points will again repeated as per the conditions precedent. So for the mine operator, they have to preparation and approval of mining plan, DPR and R&R plan, procure all applicable permits, clearances including EC and FC, acquisition and physical possession of required land, undertaking R&R activities as per the approved R&R plan, financing, reopen, construction and development of the mine, operation and maintenance of the mine with proper safety provisions. Next slide. They have to appoint the agent, manager and other statutory manpower. Earlier cases you have seen that some of the manpowers we were providing, but in this case the mine operator has to appoint all the manpower starting from the agent. Employment of suitable qualified skilled persons, and they have to pay the wages as per the HPC wages. Any statutory payments, damages towards statutory obligation of the mine owner as per the Mines Act. Performance of the activities related to progressive mine closure and final mine closure if it occurs within the contract period. Next slide. And again we have fixed some of the responsibilities for safety aspect. Next slide. And responsibilities of the authority. We will again, as in condition precedent I have said you that we are submitting applications for the mining plan and application for the land acquisition, TOR for EC and FC, and existing mine infrastructure. The existing mining infrastructure that is available with us, and we have to provide to them, that shall be made available to the mine operator at free of cost. And appointment of engineer in charge. We are giving a single manpower here, that is the engineer in charge, and that is the essential manpower. Next slide. So the revenue sharing. Earlier the models were in mining charge per ton basis. Here the revenue sharing basis it is. So here there is a concept of net revenue sharing. The net revenue is shall be the upfront received from the buyers on selling of the coal after deducting the statutory charges related to production and selling of coal, including royalty, cess, GST and other tax, and after adjustment on account of debit and credit note, grade slippage or upgradation and quantity if any. The portion of net revenue to be shared with the authority, the revenue share of the authority, shall be equal to the net revenue multiplied by the contracted percentage of the revenue share of the authority. इसको मैं next slide में और एक बार आपको समझाऊंगा. Please the next slide. तो इसमें जो रेवेन्यू हमको शेयर करना है, इसको हमने 3 चार्जेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज. The first charge is the statutory charges related to the production and selling of coal. Second charge is the amount of money as revenue share of the authority. Second charge होता है यहाँ पर revenue share of the authority. And the third charge is the remaining amount of the money. इसमें माइन ऑपरेटर का भी रहता है और जो liability of all the applicable taxes और GST. मतलब मेनली हम मान सकते हैं कि सेकंड चार्ज जो है वो अथॉरिटी का है और थर्ड चार्ज ऑपरेटर प्लस GST उसी में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट स्लाइड. सो चेंज इन प्रोडक्शन शेड्यूल. तो जो बेसिक मोड में अभी आप लोगों को समझा है, इसमें क्या होगा ना, हमारे पास कोई माइनिंग प्लान नहीं है. माइन ऑपरेटर जो है वो हमारा माइन प्रोफाइल को देख के वो लोग एक माइनिंग स्कीम देंगे.
और उस माइनिंग स्कीम के बेसिस में मानिए किसी केस में हमारा जीआर भी हमारे पास बहुत पुराने माइंस है तो हमारे पास जीआर भी अवेलेबल नहीं है. तो फर्स्ट केस इज टू बिलोंग टू जीआर इज नॉट अवेलेबल and the bidder is required to prepare the GR. In this case, during the preparation of the mining plan and DPR, if it is required to change the coal production schedule, the mine operators are allowed to change the production schedule up to plus minus 20% in any accounting year. मतलब जो mining scheme वो लोग देंगे, अगर उस स्कीम को भी वो यहाँ पे एडहर नहीं कर सकते हैं. अगर उनको मानिए कि ज़्यादा जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूज ज़्यादा जियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स उनको मिल रहा है तो फिर वो लोग माइनिंग प्लान और डीपीआर में 20% तक हम उन लोगों को चेंजेस अलाउ कर रहे हैं. और अगर जीआर अवेलेबल है, इन दैट इज माय सेकंड केस, इफ जीआर अवेलेबल, if the mine operator feels that the available GR and geological information is not sufficient, if he feels, the mine operator may undertake additional exploration as per the requirement. Next slide. Okay, after preparation of the GR, after approval of the mining plan and DPR, if it is assessed by the mine operator that the project is not viable for the mine operator may exit from the contract without forfeiture of the performance security. मतलब वो अगर DPR और माइनिंग प्लान बनाया और उसको लगा कि नहीं उसको एग्जिट करना चाहिए, देन ही कैन एग्जिट एंड विद इसमें हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को फोरफिट कर देंगे. सिमिलरली ऑन रिसीविंग ऑफ द DPR, इफ इट इज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी that the project is not viable for the authority may also exit and without no obligation towards the mine operator and the performance security shall be returned. यहाँ पर भी हम लोग भी एग्जिट करने का स्कोप है और इस केस में हम भी उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को रिटर्न कर देंगे. नेक्स्ट स्लाइड. और डैमेजेस एंड पेनल्टीज. डैमेजेस और पेनल्टीज में जैसे हम कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पर भी कुछ पेनल्टीज था, यहाँ पर भी कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए जो भी पेनल्टीज है, अथॉरिटी के लिए यहाँ पर 0.1% of the performance security for each week or part of week delay subject to maximum 20% है. और परफॉर्मेंस कंडीशन प्रेसिडेंट अगर माइन ऑपरेटर के प्रॉब्लम होता है तो डैमेजेस शैल बी 0.5% ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉर ईच वीक और पार्ट ऑफ द वीक सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 30%. एंड फेल टू अचीव प्रोजेक्ट माइलस्टोन. यहाँ पर प्रोजेक्ट माइलस्टोन इज 0.2% ऑफ द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉर डिले फॉर ईच पार्ट ऑफ द वीक. एंड फेल टू अकर COD, damages shall be at the rate of 0.5% of the amount of the performance security for delay for each part of the week. So we have linked everything almost to the performance security. Next slide. And again damages and penalty, up to 90% there is no penalty almost, and less than 90% there are several ranges, and as per the ranges we will fix the penalty. But here we will consider the coal price from the national coal index. एंड द शॉर्टफॉल इन क्वांटिटी ऑफ कोल डिस्पैच्ड, तो अगर 2% तक है तो इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द अथॉरिटी, और अगर 2% से वो एक्सीड कर जाता है देन इक्विवेलेंट टू ट्वाइस द लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द अथॉरिटी. 2% तक हम वही सिमिलर रेट में चार्ज करेंगे, 2% से ज़्यादा अगर हो जाता है तो डबल रेट में उससे चार्ज करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर आर सम 2 to 3 slides. We have summarized all these things. So you can see the earlier presentation for open cast and underground, what is the differences with respect to discontinued also. Next slide. Here again some of the differences we have highlighted. Next slide. So for considering this model tender document, we have already completed our first tranche of bids and we have received some of the bids. Actually we have gone for some 20 number of mines and the response was quite encouraging. We received 11 bids in 11 number of mines out of 20 mines. So I will continue with those slides. Please forward the next slide. So here are the mines. For WCL we have gone for 5 number of mines and we received bid in 1 number of mine. BCCL 5 out of which we received in 2, and ECL 4 out of which we received in 3 number of mines. ACCL 4 and CCL 2 number of mines and we received bid in almost 2 number of mines. So out of 20 mines we received bids in 11 number of mines. Next slide. So these are the details. This is the details of the WCL, you can see. Next slide. Here the details of the BCCL where we received bid in Loyabad and Kharkhari. Next slide. Here in ECL we received bid in Chinakuri, Gopinathpur and Madhujor. Next slide.
And SECL in first tranche we received bid in the first three projects, that is Bartunga, Anjan Hill and Kalyani. Next slide. And in CCL we almost received in 2 number of mines, that is Khas Karanpura and Central Sonda. Next slide. And the tranche 2 we are, that is on the preparation, we are going to very soon launch it. So the status of the mines I will just give you a glance. Next slide please. So in WCL there are 3 mines, and in BCCL there are again 3 mines. In MCL we are this time going for 3 number of mines. In CCL 1 mine, and in ECL we are merging these 2 mines into 1 mine. Next. So thank you very much from this discontinued mines presentation. Myself Ranjit Kumar from WCL. Sir, as you shared that the adaptability of a method in discontinued mines is totally it's dependent on operator. Yes. So either he can go for in UG mode or OC mode or in mix object. Yes. But within the mine boundary, there is a limit of the land acquisitions. Only we have acquired the land for the certain necessary infrastructures. Not in total land has been acquired within the mine boundary. No surface right is there. In that case, who will bear the cost of acquiring the land? लैंड का इसमें जो भी प्रावधान अभी के लिए है, हम लोग कोई भी एडिशनल लैंड, हमारे पास जो भी लैंड है हम बस उतना ही लैंड माइन ऑपरेटर को देंगे. कोई भी एडिशनल लैंड हम लोग अपने से एक्वायर नहीं करेंगे. अगर वो कोई लैंड को एक्वायर कर रहा है, दैट इज वो जो कॉस्ट है उसको बियर करना पड़ेगा और उसको वो अथॉरिटी के नाम पे एक्वायर करना पड़ेगा. हम लोग सबको सेम लेवल ऑफ फील्ड देने के लिए यहाँ पे कोई लैंड का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं रखे हैं. हमारे पास जो लैंड है हम लोग माइन प्रोफाइल में उसका डाटा दे देंगे और उसके बाद अगर उसको एक्स्ट्रा लैंड चाहिए तो फिर वो लोग अपने से एक्वायर कर सकते हैं. उसको हमारे नाम पे उसको एक्वायर करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग उसको कोई भी चार्जेस नहीं देंगे. उस केस में सर अगर एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा तो नहीं, अगेन एम्प्लॉयमेंट का भी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हम सिर्फ एक मिनिमम 4% फ्लोर परसेंटेज को बस शेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं. तो इसीलिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखे हैं. इनफैक्ट हम लोग माइंस एक्ट 1952 के हिसाब से ओनर भी उसी को बना दे रहे हैं. इसीलिए जिसके वजह से हमको सिर्फ एक एसेंशियल मैन पावर देना पड़ रहा है, दैट इज इंजीनियर इंचार्ज. अगर हम लोग उसको एजेंट भी देंगे इन केस, तो फिर उसका जो कॉस्ट है उससे हम लोग इसको रीइंबर्स कर लेंगे. तो अथॉरिटी को उस केस में मतलब लैंड के एक्वायरिंग में जो है कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी ना, अथॉरिटी का कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगा इस केस में. लैंड कॉस्टिंग में. Myself Navneet Khare, WCL Senior Manager. As per contract agreement for selling of coal, mines operator would act as an agency to sell on behalf of authority. Yes. And in transparent manner. Yes, okay. because the portal that has been used, that is the authorities portal. So the we expect the things will be transparent in this manner. But nowhere the mine operator has been restricted to take part in that bidding process. How can it be transparent? I don't get your question. Question क्या नहीं समझा? Sir, for 5.21 में sir selling of coal में mine operator ही sell करेगा sir auction के. माइन ऑपरेटर ही सेल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी ऑक्शन के ऑक्शन. पर वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कौन? जो कॉन्ट्रैक्टर है, अपने लिए भी उसको अगर मान लीजिए उसको ज़रूरत है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. अगर कोई बार नहीं किए हैं हम लोग स्पेसिफिकली उसको, तो वो कर सकता है. जी. तो ट्रांसपेरेंट कैसे रह गया सर? सारे भी उसको ब्रेक इवन्स पता है एक्सट्रैक्शन के, तो वो ट्रांसपेरेंट कैसे रह गया? अगर वो एज ए बिडर दूसरी तरफ से घुस के वही कोयला खरीद ले रहा है तो फिर नहीं, तो उसका और बिडर भी रहेगा ना, जो मतलब बिडिंग प्रोसेस से ही उसको लेना होगा ना. हाँ, बिडिंग प्रोसेस से ही लेना है सर, पर उसको तो सारे ब्रेक इवन्स पता है ना सर प्रोडक्शन के. नहीं तो वो तो हायर पे, और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो और हायर आ सकता है. नहीं, अगर नहीं,
ये बोला जा रहा है कि चूंकि इंडिया में अभी डेफिसिट है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई, और जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका दाम बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मार्केट तो और भी तो पार्टी आएगा उस कोल को लेने के लिए जो कि ना रीजनेबल प्राइस कोट करेगा। तो मतलब इसके है कि मतलब बिडर भी पार्टिसिपेट एज ए बिडर दूसरी तरफ से कर सकता है। अगर स्पेसिफिकली हम लोग डिबार नहीं कर रहे हैं उसको, ही कैन आल्सो पार्टिसिपेट। हेलो सर, अगर कोई MDO अगर 5% शेयरिंग ऑप्शन दिया ऑक्शन में, MDO 5% ले लिया, लेकिन वो माइन प्लान ये सब बनेगा वही बोलता, आगे एग्रीमेंट भी हो गया। अगर इन रियल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन माइन ऑपरेशन, अगर अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस सब आके अगर वो लॉस में चले गए पर टन में, तब वो लॉस में गए तो तब रेवेन्यू शेयर कैसे होगा? लॉस भी शेयर करेंगे क्या अथॉरिटी? नहीं, इट्स नॉट ए प्रॉफिट शेयरिंग, इट्स ए रेवेन्यू शेयरिंग। अगर ये प्लानिंग करेंगे सर, हमको 10% प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो फेल होके नेगेटिव में चले गए सबको एग्जीक्यूशन में, तब वो तो इन एनी केस MDO कोई भी MDO केस में हो सकता है। सेल वैल्यू तो फिक्स है गवर्नमेंट नोट। नहीं, सेल वैल्यू फिक्स नहीं है, सेल वैल्यू मार्केट ड्रिवन है। 100% कोल विल हैव टू बी ऑक्शनड। जो ऑक्शन में उतना नहीं आ पाया सब कुछ, उतना जितना आया उतना रेवेन्यू शेयर करेंगे। Hello, sir. Just tell me, what will be the modality of calculating the amount of annual sale value? If say there are 2 or 3 number of seams in a particular mine, and we are just auctioning it for. नहीं, देखिए आपका जो बिड डॉक्यूमेंट है ना, उस बिड डॉक्यूमेंट में जब हम कस्टमाइज करेंगे तो उस पर्टिकुलर माइन के लिए एवरेज ग्रेड ऑफ कोल फॉर कैलकुलेशन ऑफ बिड वो एक देना पड़ेगा, और उस एवरेज ग्रेड ऑफ कोल का आज के दिन में, जिस दिन हम बिड इवेल्युएट कर रहे हैं, आज के दिन में NCI के हिसाब से क्या प्राइस है वही प्राइस को लेना पड़ेगा। सर तो डिफरेंट अगर एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व रहा 2 सीम्स है, में डिफरेंट है, बट बिड में NIT में यू विल हैव टू स्पेसिफाई वन एंड ओनली वन एवरेज ग्रेड। एक्चुअल में क्या होगा, डिफरेंट होगा, दैट इज डिफरेंट, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवेल्युएशन एक एवरेज ग्रेड आपको देना होगा बिड डॉक्यूमेंट में, जिसके हिसाब से हम इवेल्युएशन करेंगे। वो तो हमारे माइंस में दिया हुआ भी नहीं है, हमारे जो माइंस अभी ओपन है एवरेज ग्रेड कुछ दिया हुआ नहीं है सच। सो दैट्स अ मिस्टेक। यस, बट एवरेज ग्रेड देने का माइन प्रोफाइल में एक पैरामीटर है सर। 2 डिफरेंट ग्रेड्स दिए हुए हैं, 3 सीम्स हैं, तीनों सीम्स के डिफरेंट ग्रेड्स दिए हुए हैं। नहीं, बिडर को प्रोडक्शन प्रोफाइल देना है, बट एवरेज ग्रेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ बिड हमें देना है NIT में। वही मैं कह रहा हूँ सर, है नहीं NIT में, हमारी NIT में वो बस डिफरेंट ग्रेड्स दिए हुए। हाँ, हेलो हेलो, माइक ले लीजिए। हेलो, हाँ उसी को मान लेंगे। नहीं, फिर वही थेफ्ट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे। चेक क्या है? चेक जो नॉर्मल चेक एंड बैलेंसेस है। अब अगर थेफ्ट अगर होना ही है तो किसी भी मोड में हो सकता है। एक इंजीनियर इंचार्ज दे रहे हैं, हाँ, आपको 1 लाख टन प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग एनुअल प्लान है, वो 90,000 ही करता है, 10,000 बाहर बेच देता है, तो हमारे पास क्या चेक है? 90,000 की उसने ऑप्शन की। सर इट सीम्स दैट कोई कंट्रोल मेजर्स होना चाहिए। नहीं, pilferage is an issue which in the consideration of the house, that pilferage aspect has not been dealt with. नहीं, पर ये सर रेवेन्यू पे है, तो 10,000 ही मान लो हमारा कर गया, तो रेवेन्यू तो लॉस हमको होगा, तो हमारा क्या कंट्रोल है उस पर चेक है, ये जस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, वैसा कोई इसमें प्रोविजन नहीं है चेक्स एंड बैलेंसेस का, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई प्रोविजन रखना होगा सर। ओके, ठीक है, इस एस्पेक्ट को हाई ग्रेड वैल्यू में ही ज़्यादा है, खास करके यस BCCL। यस,
हेलो, इसमें दो इश्यू है। जैसे हम लोग जॉइंट वेंचर कंपनी करके किए हैं एलिजिबिलिटी में, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऊपर में पॉइंट एक नंबर सब क्लॉज में लिख रहे हैं कि कंसोर्टियम, और मतलब कंसोर्टियम को भी अलाउ किए हैं, उसी का नेक्स्ट इसी किया, और बाकी सब डॉक्यूमेंट में फिर कंसोर्टियम का जिक्र है। तो इसीलिए ये नंबर 1, तो इसीलिए जॉइंट वेंचर कंपनी मतलब रजिस्टर्ड कंपनी हो जाता है, ये एक इश्यू है। और दूसरा, इस जो ये अबैंडन माइन है, ये अनसर्टनिटी है। अनसर्टिनिटी में कोई भी जॉइंट वेंचर कंपनी एडवांस में बनाएगा नहीं, तो जब तक उसको क्योंकि हम 2 साल तो उसको ऑलरेडी अलाउ कर रहे हैं पीआर बनाने के लिए, डीपीआर बनाएगा, उसका बाद 60 डेज टाइम दे रहे हैं उसको सोचने के लिए, चाहे वो क्विट भी कर सकता। तब इतना देने के बावजूद अगर हम इसको इतना एडवांस में उसको जॉइंट वेंचर कंपनी बना के 2 पार्टनर्स करेगा, तो ये संभव नहीं है। ये एक्चुअली इसको हमें जेवी ही करना होगा, कंपनी हटाना होगा या कंसोर्टियम रखना होगा। इसको अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं। यस, इस अमेंडमेंट को करना होगा। एक्चुअली ओरिजिनल जो क्राइटेरिया था, सिलेक्शन क्राइटेरिया था, वो कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड था, जो कि ना नॉर्मल एमडीओ में है, और इसको फिर इन द मिड ऑफ फर्स्ट ट्रांच वी हैव चेंज दैट, इसलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। और नेक्स्ट ट्रांच में हम लोग को इस क्लॉज को चेंज करके जो आप बोल रहे हैं उसको कर देना होगा। अच्छा सर, दूसरा ये है, हमें ये जो एसपीवी का हम कंसेप्ट यहाँ रखे हुए हैं, एसपीवी इसमें 15% ऑफ सेल वैल्यू का मतलब एनुअल सेल वैल्यू का है। जैसे 1.2 मिलियन कोई अगर प्रपोज करता पीक रेटेड कैपेसिटी में 3,000 रुपीज़ पर टन का है, तो इट्स अमाउंट समवेयर अराउंड 36 करोड़ उसका एसपीवी में, सॉरी अराउंड 360 करोड़ उसका वैल्यू होता है, जिसका 15% में अराउंड 54 करोड़ 54 करोड़ होता है। तो 2 साल अनसर्टनिटी में, उसका बाद 60 डेज में क्विट करना या न करना, मतलब ये गारंटी नहीं है। उतना अनसर्टनिटी में 2 साल विदाउट एनी ये मतलब यूटिलिटी 50 करोड़ रुपीज़ फंड्स क्यों कोई फंसाएगा? ये एक इसीलिए इसको ये एसपीवी का स्ट्रक्चर को एक तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि ये जितना भी माइंस हम लोग ऑफर कर रहे हैं, those mines used to produce in either in thousands or lakhs, not in million tons. तो मिलियन टन में आने का इसका कैपेसिटी का चांसेस बहुत कम है। और दूसरा जो आपका सजेशन है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने तक क्यों एसपीवी में इतना पैसा फंसाएगा, तो उतना तो नहीं होगा, कैपेसिटी कम होगा तो उतना पैसा भी नहीं लगेगा। और ठीक है, आपका ये सजेशन जो है वो नेक्स्ट ट्रांच के लिए हम सोच सकते हैं कि एसपीवी बना लेगा शुरू में विथ सम टोकन मनी, एंड देन आफ्टर अप्रूवल ऑफ माइनिंग प्लान वी कैन इंक्रीज दैट अमाउंट टू द रिक्वायर्ड अमाउंट। ओके, थैंक यू। सर हेलो, वो बिड इवैल्यूएशन वाली शीट को आप फिर से दिखा सकते हैं क्या? वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में जाएंगे। हाँ, टेबुलर फॉर्म में जो था, आप देखेंगे कि उसमें एक डिस्काउंट फैक्टर आप लिए हैं, पॉइंट है, उसका क्या क्राइटेरिया है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट 90% दैट यू हैव टेकन? दैट इज उसका देखिए, कोई उसका 10% हम लोगों ने लिया है, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर मान लीजिए इसको 10 चेंज करके 9 कर देते, 8 कर देते, 5 कर देते, 15 कर देते, तो ये तो वन टाइम और जस्ट फॉर बिड इवैल्यूएशन, वो सब पार्टी के लिए सेम होगा वो डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसलिए ये एक टोकन डिस्काउंटिंग फैक्टर है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा नहीं होगा उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो वो सर वही नेक्स्ट क्वेरी है, तो अगर इसका कोई बियरिंग नहीं आ रहा है ओवरऑल बिड इवैल्यूएशन प्रोसेस में H1, H2, H3 के डिटरमिनेशन नहीं में, तो मेरा उसमें आ रहा है, बट इसलिए तब तो सब्जेक्टिविटी है सर। अगर हम उसमें आ रहा है तो फिर परसेंटेज जो हैज टू बी सम, सब उसमें मैंडेट होना चाहिए। नहीं, दिस इज ओनली फॉर बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इसका एग्जैक्ट रेवेन्यू शेयरिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका। नहीं, बिड इवैल्यूएशन में डज चेंज इन दिस डिस्काउंट फैक्टर परसेंटेज विल हैव एनी बियरिंग इन डिटरमिनेशन ऑफ H1, H2, H3? नो। तो फिर व्हाई आर वी टेकिंग दिस डिस्काउंट फैक्टर?
इसमें एक मिनट, इसमें क्या है कि जो आपने जो प्रोडक्शन शेड्यूल दिया है, एक चांस ये हो सकता है कि अगर आप उसको जोड़िएगा तो 3 पार्टी का सम सेम आ सकता है, पर एक पहले साल में प्रोडक्शन ज़्यादा बता रहा है, एक का प्रोडक्शन शेड्यूल इस तरह से है कि वो शुरू में ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है बाद में, तो इसको कवर करने के लिए एक डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, वट एवर इट इज़। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है नॉर्मली आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और इन चीज़ों से वो 10 होगा, 12 होगा, 8 होगा, 9 होगा, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स, ये प्री डिक्लेयर्ड होना चाहिए। वही चीज है सर, ये प्री डिक्लेयर्ड जब नहीं है तो फिर कौन सा परसेंट? नहीं, ये जब ये प्री डिक्लेयर्ड है तब कोई इशू नहीं है, चाहे वो 8 हो या 10 हो। नहीं ठीक है, 10% तो प्री डिक्लेयर्ड है कि नहीं? अगर हाँ, ये प्री डिक्लेयर्ड है, इसलिए सबको पता है कि हम जो प्रोडक्शन दे रहे हैं वो 10% पे डिस्काउंट होगा। ठीक, तो एवरीबडी, एंड इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया। बीके शुक्ला प्रोबेसिशियल, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस में जो ओनर है फॉर द पर्पस ऑफ माइंस एक्ट, ये माइन ऑपरेटर है। नॉर्मल एमडीओ में अथॉरिटी है। यस। तो इसके पीछे क्या पर्पस है? दोनों में अगर माइन ऑपरेटर रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? इसमें एक्चुअली हम लोग उस माइन ओनर बनाने का रीज़न ये है कि हम लोग एक मिनिमम 4% फ्लोर रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, और इसमें हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हम कोई ज़्यादा इसमें से कमा पाएंगे, तो इसमें हम लोग ज़्यादा मैन पावर भी इसमें लगाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ हम लोग एक इंजीनियर इंचार्ज का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बस मॉनिटरिंग के लिए, और जो भी मैन पावर है वो उसी को ही यूज़ करना है। हम लोग अपना मैन पावर इसमें कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इसी के लिए ही हम लोग उसको ओनर बना दिए हैं। कोई भी मैन पावर हमको नहीं देना है इसमें। इसमें और एक रीज़न है कि चूँकि ये डिसकंटिन्यूड माइंस है, इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट एक क्रिटिकल इशू है। तो जब हम लोग इसमें कोई मैन पावर लगा ही नहीं रहा है और एज पर स्टैट्यूट हम इसका ओनर रह जाएंगे एज पर माइंस एक्ट, तो अगर कल कोई सेफ्टी रिलेटेड कुछ इंसिडेंसेस होता है, फॉर नथिंग वी विल बी पेनलाइज्ड। सेफ्टी इशू तो सर नॉर्मल एमडीओ में भी तो होगा। नहीं, नॉर्मल एमडीओ में हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है, हमारा कुछ स्टैट्यूटरी मैन पावर भी है, लेकिन इसमें हम लोग सेफ्टी, मेनली सेफ्टी रिलेटेड इशू से हटने के लिए ही उसको माइंस एक्ट के हिसाब से हम उसको ओनर बना रहा है। बट कोल का जो प्रॉपर्टी है, कोल प्रॉपर्टी वो मेरा ही रहेगा। दोनों में तो कोल प्रॉपर्टी आपका ही है सर? नहीं, दोनों में मेरा ही है। एमडीओ में भी, एमडीओ में एक्चुअली बहुत जगह कोशिश किया गया था एमडीओ में भी उसको एमडीओ का एजेंट और मैनेजर रखने के लिए, बट डीजीएमएस हैज़ ऑब्जेक्टेड टू दैट। डीजीएमएस कभी मना नहीं है इस चीज़ को। और रेवेन्यू शेयरिंग में एग्री कर गया सर? यस, दैट इज़ व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग इन माय प्रेजेंटेशन, दैट आफ्टर 2-3 बार के नेगोशिएशन के बाद वी कुड कन्विंस डीजीएमएस दैट यस, फॉर रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस MDO कैन बी granted or taken as deemed owner of the mine. और नॉर्मल एमडीओ में एग्री नहीं कर रहे? नॉर्मल एमडीओ में एग्री नहीं किए। एक आध केस में ये उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कि नॉर्मल एमडीओ में भी एजेंट और ओनर एमडीओ का ही रहे, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया गया है बाय डीजीएमएस। लेकिन वो ज़्यादा अच्छा होता सर। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। Excuse me. Sir. This is S. Basu from JMS. I have one question in this regard. Since you said that in this particular model, MDO is the deemed owner, so should, in our opinion, the MDO operator should have the right to first refusal in the selling process. ये सजेशन एक था जब स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हुआ, नॉट ओनली योर्स अदर्स का भी था, बट इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको माना नहीं है। और बेसिक ये है कि फर्स्ट रिफ्यूज़ल जब देंगे तब मार्केट ड्रिवन प्राइस उसमें डिस्कवर नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, हमको मार्केट ड्रिवन प्राइस डिस्कवर करना ही है थ्रू ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। ये कहाँ से आया कि जब
इसके लिए एक जो कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया और गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इन अप्रैल 2022 कि 100% कोल प्रोड्यूस फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूड माइंस विल बी सोल्ड इन द मार्केट थ्रू ट्रांसपेरेंट वे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फर्स्ट रिफ्यूज़ल नहीं दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर ये 4% जो फिक्स किया फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेड्स के लिए एक ही फिक्स किया, कोकिंग, नॉन कोकिंग, ये वास्टी स्टील ग्रेड है, ये ग्रेड वाइज इसको फिक्स करना चाहिए। अगर कोकिंग कोल या स्टील ग्रेड है तो उसको 10%, जैसे ग्रेड कम हो तो 9.5, ऐसा ऐसा आना चाहिए ना। सभी ग्रेड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो जो भी मेथड ऑफ वर्किंग लेंगे ग्रेड से तो नहीं होगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही रहेगा। जो उसको अच्छा ग्रेड है उसको तो फिर ज़्यादा शेयर जा रहा है उसको। नहीं, ये तो परसेंटेज है ना, जो आपका प्राइस डिस्कवर हो रहा है उसका परसेंटेज है। आप एब्सोल्यूट टर्म में किसी परसेंटेज जा रहा ना सर उसको, अगर अच्छा ग्रेड का कोई लाया प्रॉफिट ज़्यादा चले जाएगा। नहीं जा रहा है, फिर आज के दिन में आप तो उसका ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं और अगले 15 साल में भी आपका ऑपरेशन करने का उसको कोई इरादा ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो सर अगर आफ्टर 5 इयर्स का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के ऊपर लगा दीजिए, फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के ऊपर 10%। नहीं, ये तो ऐसा कर दीजिए। नहीं, तो ये परसेंटेज जो है उस दिन आपको जो रेवेन्यू मिलेगा उसी का परसेंटेज है ना, तो इंक्रीमेंटल तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटल हो जाएगा। अगर आफ्टर कमिटमेंट ऑफ कमर्शियल रेट अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, इसमें न्यूज़ ऐसा आ जाए कि एमडीओ को इतना फ़ायदा कर दिया, पूरा ये कर दिया, ये सब एक स्कैम टाइप हो जाएगा। नहीं, कुछ तो इंसेंटिव आपको देना चाहिए। जो माइन आपसे ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आप उसको बंद करके रखे हैं, आप अगले 15 साल में भी उसको ऑपरेशन में लाने का कोई ये नहीं, इंटेंशन नहीं है, तो उससे ये इसके लिए ये एम था, 2 एम था। एक, कंट्री को कुछ कोयला मिले, दूसरा मेरा जो संक कॉस्ट है जिससे आज के दिन में जीरो या नेगेटिव, क्योंकि कुछ माइंस में हमको कुछ स्टैट्यूटरी मैन पावर दे करके पंपिंग का कंटिन्यूएशन करना पड़ रहा है, उसके लिए खर्चा हो रहा है, वो नेगेटिव खर्चा है। उस नेगेटिव एक्सपेंसेस को जस्ट चेंज करने के लिए ये जस्ट इंटेंशन है। इंपोर्ट ये सब कम करने लिए ठीक है, ये सब ठीक है। अगर सपोज इसमें कुछ एक कंडीशन भी डालना चाहिए कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, वो ईजी कोयला ले लेगा, 40% ही एक्सट्रैक्शन करेगा अंडरवर्ल्ड में, बाकी ऐसे डुबा देगा। ऐसे करे तो फिर सस्टेनेबिलिटी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। नहीं, कंडीशन डाल रहा है उसमें सस्टेनेबिलिटी परसेंटेज एक्सट्रैक्शन 80%, 90% कुछ रख रहा है उसमें? नहीं, कुछ नहीं रख रहा है, रखना पड़ेगा। नहीं, इसमें एक कैच ये है कि आपको एक माइनिंग प्लान बनाना होगा और वो माइनिंग प्लान को अप्रूव कराना होगा, तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और मिनिमम जो आप जो बोल रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन परसेंटेज, वहाँ पे टेक्निकली उसका ये हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। ये डालिए सर, अगर इसमें कुछ स्कोप है सजेशन। नहीं, मैं बोला ना कि आपको तो माइनिंग प्लान पास करवाना होगा ना। वो अगर माइनिंग प्लान में अपन ये एमसीए में नहीं दिया तो वो 40% दिखा के कर सकता है, वो भी अप्रूव भी कर सकता है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जियोलॉजी में कोई पर्टिकुलर कंडीशन में आपको दिख रहा है कि 50% एक्सट्रैक्शन हो सकता है और आप अपना माइनिंग प्लान में 40% ही प्रपोज किए हैं, तो टेक्निकल माइनिंग प्लान अप्रूवल टेक्निकल कमिटी में ये इशू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अगर मान लीजिए टेक्निकली आ सकता है तो वो अपना रेवेन्यू क्यों लॉस करेगा? वो उतना ही ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करेगा। नहीं, इसका माइनिंग प्लान जो नॉर्मल प्रोसीड्योर है माइनिंग प्लान अप्रूवल का, जो माइनिंग प्लान अप्रूविंग कमिटी है उसी से करना होगा। कोल इंडिया इज़ नॉट एम्पावर्ड। कोल इंडिया जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट CMPDI बनाता है ऑन बिहाफ ऑफ कोल इंडिया, वही ये एग्जाम्पशन है। नहीं, CMPDI बनाएगा तो ठीक है। हाँ, यस, डीम्ड ओनर इज समबडी एल्स, तो वो कमिटी के थ्रू ही जाना होगा फॉर इश्यूएंस ऑफ माइनिंग प्लान। So okay, thank you everyone from this slide.
Before we close the session, we would like to thank whole of the CMPDI team and the presenters from our area. So we will present a memento to all the speakers. So I will request Mukul to take the mementos to Sri R.S. Srivastava Sahab, GM-CMC will be presenting the mementos to the CMPDI team. Patra Sahab, Randeep sir, Dheeraj sir and Rakesh. Give them a big round of applause because they not only presented this paper here, but they were all involved during this organization also. Sri Dheeraj Kumar Chaudhary sir. Randeep Singh Sahab. The presenters from area, are they here or they have left? The presenters from Hazaribagh area, yes, Piperwar area is there, so please come forward. Rajiv Bhui Sahab, are you here? Okay, if they are not present, the mementos will be sent to them. It is not about the question, but whosoever's question is considered for amendments in Coal India, they should be rewarded. So with this, we come to the end of this session. There is a cultural program at Jawaharnagar Club for all the delegates and invitees. So be there by 6:30, though there is very little time left. But try to be fast so that we can enjoy the evening and have dinner also. Thank you very much. We will assemble tomorrow at 10, not at 10:30, because we will have a special session on financial issues like IIR and all that. Thank you very much, everyone.